हेलो हेलो देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे हुक गेमिंग शोडाउन। और आज चल रहा है डे 2। ये राउंड ऑफ 32 का ये मैच यहाँ पे चलता हुआ, जिसमें टीम जो है आपस में लड़ेगी वो टॉप 16 की पोजीशन के लिए। मैं हूँ आपका कास्टर चंद्र और मेरे साथ कास्टिंग करने के लिए जुड़ेंगे बालडोड। उनसे जानेंगे कि ये जो मैचेस यहाँ पे आज होने वाले हैं किस तरीके के रहेंगे, उनके क्या विचार रहेंगे इस मैचेस को लेके। चलिए जानते हैं उनसे। तो बालडोड, वेलकम। वेल थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन यार शिंद्रा भाई। और देखो आज तो है हमारे टॉप 16 की लड़ाई के लिए 8 मैच हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जोहंट, रिक्वेम, येलोस्टोन, एजीबी, कर्स, सारे बड़े जाने जाने पहचाने नाम हैं। बट अभी पहला गेम जो है जो हम देखने वाले हैं, पहला मैच टोन सेट करने के लिए है जोहंट और नोवा स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। ये दोनों टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तो टोटल टूर्नामेंट में। हुक गेमिंग शोडाउन में स्पेशली सारे नॉकआउट राउंड्स हुए अभी तक, तो यहाँ तक आना आसान तो नहीं था। तो टॉप 32 का जो सेकंड डे है आज, दे विल बी, ये इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्पॉट के लिए। तो अभी बस 5 मिनट के अंदर हम तो ड्राफ्ट में पहुंच जाने वाले हैं। पर आपको क्या लग रहा है, जो इंडियन पैच का जो भी चल रहा है ये सर्वर में, ये करंट जो मेटा चल रहा है, ये बदलने वाला है? कुछ नया दिखने को मिलेगा या वही बैन्स देखना है जो हर बार देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा बात की जाए ना मेटा पे, तो मेटा पे अभी थोड़े यूटिलिटी जंगलर जो है उनके ऊपर थोड़ा-सा सस्टेन मेटा की तरफ मतलब जाता हुआ दिख रहा है हमको। देखा जाए तो जो टीम्स रहती है उनके बीच में थोड़ी-सी ये पकड़ रहती है कि जंगल पे ना कहीं अकाई या तो फैटरिन, इन दोनों के ऊपर, दोनों टीम के ऊपर नज़रें रहती हैं। और ईएक्सपी की बात करें तो अभी पकीतो जो है, मैं कहूँगा मेटा पे सबसे बेस्ट ईएक्सपी चल रहे हैं सामने। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। स्प्लिट पुश की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल जाता है। उनका बर्स्ट, उनका रीजन वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आता है। सस्टेन भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ी-सी यहाँ पे नज़रें हमारी रहेगी कि वो पिक आती हुई दिखती है या फिर नहीं। बात करें कंपोज़िशन की तो बहुत सारी कंपोज़िशन हमें बनती हुई दिखती है। डाइव कॉम्प हो गई, आपकी फनल यहाँ पे हो गई, और जो है दूसरी बात करें यहाँ पे पिक्स की तो वो भी आते हुए दिखते हैं। लेकिन कुछ पिक्स रहते हैं जिनके ऊपर जो टीम्स है ना वो ट्रेनिंग करना चाहती है एक-दूसरे के साथ उस पिक्स को लेके, या उस पिक्स के लिए यहाँ पे फोर्स पिक करवाया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी नज़रें हमारी रहेगी। जैसे कि बात करते हैं सोरा, वैलेंटिना, इन सब के ऊपर थोड़ी नज़रें रहती है, जिसके कारण जो ड्राफ्ट है ना वहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने एनिमीज़ को फोर्स किया जाता है।
कि आप सामने अगर सोरा पिक कर रहे हो तो फिर अपोनेंट पे जो है वैलेंटीना को आपको बैन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं तो अगर वैलेंटीना आ जाती है तो वो अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, आईएमयू का इस्तेमाल करते हुए तो बहुत सारे क्लचेज़ वगैरह वो आते हुए जाते हैं। लेकिन अभी इस मेटा की बात करें तो मेरे ख़्याल से जो सबसे एस टियर जंगलर अभी चल रहा है, आई थिंक वो अकाई चल रहे हैं। क्योंकि उनकी यूटिलिटी इतनी अच्छी तरीके से उनका जो हेवी स्पिन आता है वो पूरी टीम का लाइनअप जो है डिस्टर्ब करके रख देता है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अभी अकाई तो जंगल में जैसे आप कहे कि अकाई नंबर 1 पिक हो गया है, नंबर 1 प्रायोरिटी पिक या बैन हो गया है, ये करंट पैच में। जैसे आप बोले वो हेवी स्पिन का जो वैल्यू आ रहा है अभी क्योंकि अभी वापस टैंक जंगल्स को देख रहे हैं बट टैंक जंगल मेन फोकस हो नहीं गया है। अभी बस टैंक जंगल का काम है कि वो सामने खड़े रहे, मेज को डैमेज डील करने का क्योंकि अभी मेज वापस गॉड जूजिन और ये सारे पिक्स आ रहे हैं। तो अगर टैंक की पिक लिए नहीं इमीडिएटली इन्वेड आ जाएगा आपके साइड पे क्योंकि इसलिए बहुत कम असैसिन पिक्स देख रहे हैं आजकल। देख भी रहे हैं तो पूरा इन्वेड कॉम्प बनाते हैं लोग। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात करी आपने और हालाँकि अभी देखा जाए ना तो जंगल पे थोड़ा जंगल मेटा भी थोड़ा चेंज हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी-सी यहाँ पे कहेंगे कि अपडेट वगैरह आया था, जिसके कारण अभी जो रोटेशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। पहले की रोटेशन कैलकुलेटेड रहती थी, आपको पता रहता था कि सामने वाला जंगलर अगर इस बफ से स्टार्ट किया है, तो अगली जगह वो उसकी पोज़ीशन क्या रहने वाली है। लेकिन अब हुँ, क्रीप जो है वो ज़्यादा ईएक्सपी देते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा गेस कर पाना वो थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा और चलिए, पहले यहाँ पे बात कर रहे थे सीधा, पहला ही बैन आएगा यहाँ पे अकाई के ऊपर। दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पे ज़ोहंट। वो यहाँ पे मार्शल को बैन करते हुए दिखे, नोवा ई स्पोर्ट्स। उनके लग रहा है कि वो थोड़ा-सा आएँगे वो किस कॉम के साथ जाएँगे तो पहला ही बैन यहाँ पे अकाई बहुत अच्छा तरीके से मैं कहूँगा कि फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए किया। उसी के साथ दूसरे बैन के ऊपर यहाँ पे थोड़ी-सी नज़रें जो है ना, वो हमारी रहेंगी कि चेंजेस ना अब यहाँ से स्टार्ट होने हो जाएँगे। क्योंकि अभी ज़ूशिन भी ओपन है, बहुत सारे हीरोज़ आपके ओपन रहेंगे, फेडरिन ओपन है, कैरी ओपन है। अगर आपको यहाँ पे अगर बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जंगलर के साथ अगर आपको जाना है, थोड़ा हेवी टैंकी हेवीनेस के साथ जाना है, तो आपको टैंक मेल्टर्स जो है वो बैन करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे नज़र रहेगा। चलिए फ्रीया यहाँ पे बैन आता हुआ दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा बैन। ज़ोइंट की तरफ से दूसरा बैन। पकीतो ईएक्सपी मैं बोल ही रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जंगल पे भी खेल लेते हैं, जंगल पे भी चल जाते हैं पकीतो लेकिन ईएक्सपी पे ज़्यादा यूज़ होता है इनका। बिल्कुल पकीटो तो अभी ईएक्सपी में एकदम प्रायो हो गया है। अगर आप फोविज़ उठा भी लेते हैं, उसके बावजूद फोविज़ यस। लेन में बहुत स्ट्रगल करता है फ पकीटो के अगेंस्ट। सिंपली बिकॉज़ उसका डैमेज का इतना जल्दी कॉम्बो आता है कि जब तक हुँ। फोविज़ अपना अल्टीमेट चालू कर देते हैं, उनका एचपी आधे से कम चले जाता है। सिर्फ अर्ली गेम में फोबियस को थोड़ा एडवांटेज रहता है बट एक बार पकीटो का पहला आइटम बन जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है और वो फ्लिकर लेके डायरेक्ट अपने बैकलाइन पे डाइव कर सकते हैं अपोनेंट के बैकलाइन पे। तो जब अपोनेंट में पकीटो रहता है तो आपके ड्राफ्ट के जो ऑप्शंस है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जी, बिल्कुल और उसी के साथ यहाँ पे देखिए ज़ुशिन है वो बैन आती हुई दिखेगी। हालाँकि नर्फ आया था इनके ऊपर लेकिन अभी भी बात करें तो एक अच्छे प्लेयर के हाथ में ना ज़ुशिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है क्योंकि वो फ्रंट लेनर्स को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, लगातार उनको सीसी देते हुए। हालाँकि अभी उनकी जो स्किल्स है वो स्पैमेबल कम कर दी है, माना कंजम्पशन उनका जो है थोड़ा-सा बढ़ा दिया है और यहाँ पे आते हुए देखेंगे पहला पिक गुनिवर के ऊपर उठाया जाएगा। गुनिवर की बात करें एक फ्लेक्स पिक है, ईएक्सपी, मिड लेन, रोम और यहाँ तक कि जंगलर वगैरह यहाँ हर लेन पे चल जाती है। यहाँ तक कि गोल पे भी कई बार हमने देखा है कंडीशनल पे कि गुनिवर चलती हुई चली जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से फ्लेक्स पिक यहाँ पे रहने वाला है। तो एक सेफ पिक आप बोल सकते हैं कि गुनिवर की तरफ गए हैं। दूसरी साइड बात करेंगे ज़ोअंट, उनकी तरफ से 2 पिक आने वाले हैं और ये 2 पिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये गेम का जो टेम्पो है ना वो डिसाइड करते हैं। चलिए गॉड यहाँ पे उठाया जाएगा बहुत अच्छा। आपकी तरफ से वो बर्स्ट आता हुआ दिखेगा, वो पोक उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा। मिस्टिक गज का जो डैमेज आता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है और बोल सकते हैं जो कुछ टारगेट है ना उनको मेल्ट डाउन कर देती है बहुत ईज़िली और उसी के साथ-साथ यहाँ पे डीपीएस के थ्रू जाना चाहेंगे। क्लॉड का आगमन हो चुका है। क्लॉड यहाँ पे आ चुका है। क्या नोवा यहाँ पे हैरिथ के साथ जाना चाहेंगी और क्लॉड को जो है थोड़ा-सा उनको आउट फार्म कर सकते हैं हैरिथ उनकी लेन लेन विलिंग हीरो यहाँ पे जो है वो साबित हो सकते हैं और ईज़िली यहाँ पे अपनी जो लेन है वो जीत सकते हैं क्लॉड के अगेंस्ट में। तो लेट्स सी यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स इसको क्या किस तरीके से काउंटर करना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि नोवा स्पोर्ट्स ने अभी पहले पिक में उन्होंने गुनिवर दिखा दिया और एक दिक्कत क्या होता है कि गुनिवर जब आप उठाते हो, सबको पता है कि वो जंगल में जाने वाला है और अगर आप गुनिवर उठा रहे हो तो आपके साथ आपको एक और क्राउड कंट्रोल वाला एक्सपी लेन चाहिए, लापू या फिर एलिस सबसे अच्छा तो एलिस चलता है।
या देखिए वही हुआ है ना, लापू या एलिस, ये दोनों ही ऑप्शन बचे हैं क्योंकि बैंस देखते हो, क्योंकि फोवियस को लेने का इनको ऑप्शन भी नहीं है अभी, क्योंकि आपको गुनिवर के साथ ऐसा हीरो चाहिए जो इमीडिएटली जंप कर पाए, स्टन लॉक करके डैमेज दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि जब आप गुनिवर ले लिए तो अपोनेंट ने दो बहुत मेटा पिक ले उठा लिए। देखो फ्रेड है, क्लॉड है और गॉड है, कोई भी ये तीनों में हीरो ना, तीनों हीरो एकदम फर्स्ट पिक लेवल, फर्स्ट फर्स्ट पिक वाले हीरोज हैं। अब जोहन को हुँ। तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग पिक्स मिल गए हैं, और नोवा के साइड से मॉस्कोव और लापू दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने लेन्स पे, पर वो उस लेवल के मेटा नहीं है जैसे ये तीनों हैं जोहंट के साइड से। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ ईव यहाँ पे बैन आती हुई दिखेगी ताकि वो हाई ग्राउंड उनको ना मिले, वो स्लो डाउन वहाँ पे ना कर पाए और वो बॉक्स के अंदर खेलने के लिए मजबूर करती है ईव, तो वहाँ पे उनको भी वो भी मौका नहीं मिलेगा चलिए। उसी के साथ-साथ अभी जो आखिरी के 2-2 बैन्स हैं ना, दोनों टीम की तरफ से वो आती हुई दिखेंगी और ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा इन्हें टारगेट किया जाएगा क्योंकि मेज अभी पिक करना बाकी था यहाँ पे नोवा ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। तो ज़ोएंट ने बोला कि हम ईव को बैन करेंगे। अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं, लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या आता हुआ दिखेगा। कहीं न कहीं अभी देखा जाए तो फ्रंट लेन यहाँ पे आ चुका है और बैकलेन की बात करें तो वहाँ पे मौजूदा रहेंगे बर्स्ट के तौर पे अपने जो है यहाँ पे मेटा पिक पे गॉड, उसके साथ-साथ डीपीएस के क्लॉड मौजूद आए, तो इनको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। शायद एक सप्रेशन की ज़रूरत पड़े, सप्रेशन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा डिसएंगेज भी चाहिए होगा क्योंकि चार्जिंग हीरोज़ हैं यहाँ पे सामने। यहाँ पे जो चार्ज करते हुए फेडरिन आगे की तरफ आएँगे, पीछे से आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और गॉड को कहीं न कहीं आपको ये फोर्स करना पड़ेगा ना, गॉड को फ्री हैंड उनको ना मिले या फ्री पोज़ीशन यहाँ पे ना मिले क्योंकि गॉड की पोज़ीशन अगर अच्छी रह गई ना इस मैच में तो उनकी तरफ से जो पोक और जो डैमेज आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। मॉस्को यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि गेम को पलट सकते हैं लेकिन उसके लिए उनको वो गेम को थोड़ा लेट गेम की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तब उनका जो है वो डैमेज आएगा, तब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो गेम के अंदर इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेकिन अर्ली गेम आप कैसे उसको जो है कंट्रोल करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो है थोड़ी-सी कशमकश होती हुई हमें दिखेगी और उसी के साथ यहाँ पे जो है घटोत्कचा को बैन किया जाएगा, जिसके कारण एओजी हमें इस मैच में नहीं देखने को मिलेगा। अभी भी आखिरी के बैन्स यहाँ पे रहने वाले हैं दोनों टीम की तरफ से। लेट्स सी यहाँ पे क्या होते हैं। ऑप्शंस तो हैं इनके पास काफ़ी, बट देखना पड़ेगा ये लोग एग्ज़ीक्यूट कैसे कर पाए, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी अपोनेंट के साइड के पास फ्रेड और क्लॉड और गॉड दोनों हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ोहंट। तो ये तीनों का जो कॉम्बो है, उनके पास लेट गेम, अर्ली गेम का इंश्योरेंस है, एट द सेम टाइम उनको टर्टल के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। तो उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं कि ये यीव और ये जो फारसा जैसे हीरोज हैं वो को हटाने का उनका मेन टारगेट ये होना चाहिए ताकि गॉड को पूरा खाली स्पेस मिले अभी खेलने के लिए, हुँ। क्योंकि अपोनेंट के साइड में अभी उनके जंगल तो उठा लिए हैं, सिर्फ रोमर ऑप्शंस बचे हैं दोनों साइड से। तो नोवा ई स्पोर्ट्स ने सीधा बात कर दिया कि एटलस, गटो और ये सारे पिक्स हटा रहे हैं। अभी रीजनेबली नोवा ई स्पोर्ट्स उठा सकती है तो है हमारे पास बेलेरिक है, मे बी आप कलिया उठा सकते हो बट वो बहुत रिस्की पिक हो सकता है, या आपको ग्रॉक उठाना है, बट ग्रॉक हार्ड काउंटर हो जाता है बिल्कुल जोहंट के ड्राफ्ट से। वो जोहंट ग्लू लेता है, ग्लू बहुत बहुत अच्छी ज्यादा पिक। देख रहे हैं हम आजकल रोम में ग्लू, क्योंकि जी। वो गॉड को बहुत तेज फार्म करवाता है, क्योंकि अर्ली गेम सब गॉड का सबसे वीक फेज होता है, और ग्लू का लेन क्लियर इज वन ऑफ द बेस्ट इन कोई कोई भी लेन में, बहुत फास्ट लेन क्लियर होता है उसका। तो उसको जब गॉड को उसका सपोर्ट मिल जाता है तो गॉड का स्केलिंग और रोटेशन एकदम बढ़ जाता है, स्पीड। जी, बिल्कुल। और बात की जाए ग्लू के पास ना उनकी किट भी जो है वो वैसी रहती है स्पेशल। बात करें यहाँ पे स्प्लिट स्प्लिट की तो वो वहाँ से टावर डैमेज भी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके साथ-साथ बहुत सारे प्रोजेक्टाइल है ना वो ब्लॉक कर सकते हैं अपने स्प्लिट स्प्लिट के थ्रू। तो वो भी एक एडवांटेज रह जाता है। उसके साथ-साथ ग्रैब ग्रैब यहाँ पे उनकी तरफ रहता है जो ईज़िली यहाँ पे स्लो डाउन देता हुआ दिखेगा और उसी को गलाने के लिए यहाँ पे लिलिया का आगमन होता हुआ दिखेगा। और चलिए यहाँ पे हार्ले का आगमन हो चुका है अर्ली गेम पे लेकिन अ, यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी हार्ली को क्योंकि वो फ्रंट लेन की तरफ से तो नहीं जा पाएँगे, उनको थोड़ा-सा फ्लैंक करके जाना पड़ेगा और बैक लेन को टारगेट करना पड़ेगा। और हार्ले के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनको स्नोबॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अर्ली गेम पे। अगर वो अच्छे से स्नोबॉल कर लेते हैं तो इस मैच को वो अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए जाएँगे, नहीं तो दूसरी साइड पे जो है वहाँ पे ग्लू वो हमेशा मौजूदा रहेंगे अपने स्प्लिट के थ्रू कि किसी भी तरीके से ना वो प्रोजेक्टाइल जो है उनका रोकने का प्रयास किया जाए। ओहो! और इसी के साथ यहाँ पे सूरा का आगमन हो जाएगा। ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि
दिक्कत की बात रहेगी क्योंकि सोरा कभी भी ना यहाँ पे चार्जिंग करते हुए आएँगे, आपकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ वेस्ट करवाते हुए जाएँगे, जिसके कारण ना यहाँ पे ग्लू, फेडरे इन सबको अच्छा खासा मौका मिलेगा कि फाइट को एंगेज करके जितना हो सके उतना ज़्यादा लीड किया जाए और पीछे से फिर फ्री हैंड मिलेगा ग्लू को, जो अपनी मिस्टिक गन से यहाँ पे डैमेज देंगे और ब्लेजिंग डुओ का वो अल्टीमेट कॉम्बो हमें देखने को मिलेगा, जो पूरी तरीके से मेल्ट डाउन कर देगा। अब यहाँ पे जो है कंपोज़िशन तो ऑन पेपर बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन जो मेन चीज़ आती है वो आती है एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर। वो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टीम इस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट करती है क्योंकि यहाँ पे आपके मौका जो है ना वो एक ही मिलेगा, BO1 का मैच है यहाँ पे। एक गलती अगर आपने करी तो वहाँ से जो है पूरा मैच आपका पलट जाएगा और आप वहाँ से जो है हारने की नौबत पे आ जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है दोनों ही टीम्स के बीच में होने वाला है। बिल्कुल, और ड्राफ्ट तो अभी फिगर आउट हो गया है, दोनों साइड का कंफर्म हो गए हैं ड्राफ्ट्स। बट एक साइड से मेरे को लग रहा है कि ज़ोहंट का ड्राफ्ट थोड़ा और स्टेबल है क्योंकि उनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट जो इट फैक्टर है नोवा ई-स्पोर्ट्स के साइड पे, उनके पास वो हार्ली का जो पिक है, Smash अगर them! सनशाइन ने हार्ली को एकदम All बढ़िया troops खेला है और उनको deployed! वो टाइम दे पाए, अपने मॉस्कोव जो फिएरो और ओजस है अपने मॉस्कोव और लिलिया पे, अगर उनको वो टाइम दिला पाए अर्ली गेम में अच्छे से खेलते हुए, तो फिर लेट गेम पूरा नोवा ई-स्पोर्ट्स के हाथ में, क्योंकि मॉस्कोव और लिलिया दोनों बहुत हार्ड काउंटर करते हैं ज़ोहंट के पूरे फ्रंट लाइन को। उनको एकदम स्लो चेन करके लॉकडाउन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात करी आपने कि लेट गेम स्केलिंग हीरोज यहाँ पे रहने वाले हैं और गॉड के ऊपर यहाँ पे देखिए पोक आता हुआ दिखेगा, लगातार स्किल डॉज करने का प्रयास करेंगे लेकिन कितनी देर तक फ्लिकर यहाँ पे फोर्स करवाया जाएगा और अर्ली पे इतना जल्दी फ्लिकर यहाँ पे फोर्स करवा दिया जिसके कारण गॉड को अब और पीछे रख के खेलने का जरूरत पड़ेगा। दूसरी साइड पे देखेंगे डैमेज देते हुए स्पेयर ऑफ मिजरी मॉसू की तरफ से ग्लू की बहुत कम एचपी है, बस में निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं, फर्स्ट ब्लड यहाँ पे सनशाइन मिलेगा उनको और उसी के साथ बढ़िया शुरुआत, खाता यहाँ पे खुलेगा दोनों ही टीम का, एक एक स्कोर यहाँ पे होता हुआ जाएगा। तो वही स्पोर्ट्स और इसी के साथ अब जो है वापसी करेंगे यहाँ पे फटाफट से जो है वो यहाँ पे क्लियर आउट करते हुए दिख रहे हैं। टॉप लेन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे कशमकश होता हुआ दिखेगा, पोक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वहाँ पे अग्रेसिवनेस हुई ग्लू की तरफ से, थोड़ा पीछे हटना चाहिए था उनको, लेकिन ज्यादा अंदर की तरफ आपने जो है कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आपने जो सोचा था कि जो हील उनको मिलेगा वो इतना ज्यादा हील उनको नहीं मिल पाया। वो मॉस्को का जो स्पेयर ऑफ मिजरी था ना वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पे उसको यूज किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉम्बो देते हुए इनके साइड से, और इस वजह से वो फिर भी डिस्पाइट नोवा ने एक किल उठाया है, उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू आया नहीं क्योंकि ज़ोहंट ने अपने साइड से भी रिप्लाई दे चुका है। बट वाइल सनशाइन को किल मिला है, वो किल लेते लेते हमको उनका जंगलर का फार्म स्पीड स्लो हो गया है, और इस करंट पैच में यू डू नॉट वांट योर जंगलर टू डाई अर्ली क्योंकि जित एक अर्ली गेम में एक्सपी का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, और इसलिए आप देख पा रहे हैं डिस्पाइट हार्ली का फार्म स्पीड और तेज होते हुए। बट अभी क्या हो रहा है बॉट साइड पे, डस्टी मीजो को पूरा जोन करते हुए ब्रेवेस्ट फाइटर मिस्टिक गश परफेक्ट टाइम पे आते हुए मेलियोडस को वापस फ्लिकर आउट होते हुए, बट स्प्लिट से फेम ने किल उठा लिया है लापू लापू पे, उनका अल्ट अभी तक वापस आया नहीं है। लिलिया अपना ब्लैक शूज यूज करते हुए, सनशाइन ने टर्टल उठाया है, फेम डॉट एचपी और वो मरेंगे, और ब्लेजिंग हुए जाते हुए बैकलाइन पे क्या डैमेज है, पर क्या एवरेज सामा बच पाएंगे, बच गए डॉट एचपी पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम्स यहाँ पे फाइट लेती हुई दिख रही है, एक के बाद एक मैं कहूंगा यहाँ पे कि बड़ा हासिल कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। लग रहा था कि जिस तरीके से गेम एक साइड यहाँ पे पलटता हो जाता है लेकिन दूसरी साइड वहाँ पे जो है ट्रेड हो जाता है। और टीम्स की बात करें ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रोटेशन आ रहा है उनका, हर समय जो है मौजूदा है। वो ब्लेजिंग डुओ का डैमेज आया पीछे से, एक एचपी बचते हुए निकले, वहां पे लगा नहीं था कि वो बच पाएंगे लेकिन ईजिली जो है वहां पे बचते हुए निकले, नॉट ईजिली बट हाँ कि उनकी साथ थोड़ी सी किस्मत भी थी जिसके कारण वो वहां पे बचते हुए निकले। दूसरी साइड की बात करें ना, अब धीरे धीरे जो है वो गेम और ज्यादा प्रेशर की तरफ जाता हुआ जाएगा। सनशाइन के ऊपर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे प्रेशर रहने वाला है क्योंकि उनको पता है कि गेम जो है ना फटाफट से आपको जो है एक टेम्पो आपको सेट करना है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी मौका दिया फेडरिन को या फिर कॉर्ड को थोड़ा सा खुल के खेलने का, तो वहां से फिर आपकी जो है दिक्कत साबित हो जाएगी। वो डैमेज आपने नोटिस किया होगा, वहां पे गॉड ने बहुत बढ़िया तरीके से मिस्टिक गस का इस्तेमाल किया था और ऑलमोस्ट मेल्ट डाउन कर दिया था लापू लापू को, लेकिन लापू लापू बचते हुए वहां से निकले थे। फिर दोबारा एसओडी लगेगा, जरूर कनेक्ट होगा, स्पेयर ऑफ मिस्ट्री यहाँ पे पकड़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से फेम, और यहाँ पे बचते हुए निकले स्प्लिट स्प्लिट का इस्तेमाल करते हुए। बाल बाल बचे, मेरे को लगा था शायद वहां पे दाराशाही होंगे, जी नहीं, स्प्लिट मौजूद था जिसके कारण बचते हुए निकले, लेकिन यहाँ पे डेडली मैच लेकर जरूर की तरफ डैश करते हुए गए हैं।
सोरा बचेंगे और उसी के साथ एक बढ़िया यहाँ पे जो गेम है वो यहाँ पे दर्शाती हुई दोनों ही टीम यहाँ पे मैं कहूँगा कि वन साइडेड गेम नहीं जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ना रिटेलिएट कर रही है टीम। उनको पता है कि किस तरीके से कवर अप करना है, अगर कहीं पे भी मिस्टेक होती है दूसरी तरफ जाएंगे। स्पेयर ऑफ मिजरी एमएम के ऊपर प्रहार होगा जरूर, अंदर की टावर डाइव यहाँ पे लिया है स्पेशल माइग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। लीन को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जाएगा, लीन कट करते हुए दिखेंगे और इसी के साथ जैसे ये लीन कट होगी ना तो रोटेशन जो है दूसरी साइड आता हुआ दिखेगा। टर्टल का आगमन भी हो चुका है, लापू लापू के ऊपर प्रहार करते हुए देखेंगे। ग्लू ऑलरेडी मौजूद आया वहाँ पे और थोड़ा सा हील जो है वो होते हुए देखेंगे। लापू लापू टर्टल के लिए टीम यहाँ पे पोजीशन लेती हुई दिखेगी। अटैक हो सकता है, अंदर की तरफ जाएंगे डैमेज देते हुए। पोग आएगा यहाँ पे गॉड की तरफ से और ग्रैब का इस्तेमाल कर लिया, अंदर की तरफ जाएंगे, पकड़ चुके हैं यहाँ पे। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये देखिए मिस्टिक का एक और किल मिलेगा। सनशाइन इंडस्ट्री मीजो को खत्म करेंगे, उनकी तरफ से बढ़िया डैमेज, बढ़िया पोक और डबल किल उनके हाथ में आता हुआ। और ये देखिए मिड लेन की तरफ सीधा गए हैं और इस किल्स को बटो और इसी के साथ स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा हासिल मिड लेन आपको मिल चुका है, जिसके कारण अब जो जंगल एक्सपेंशन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा और यहाँ से जो है क्रॉस जंगलिंग वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी। और क्या फाइट, नोवा स्पोर्ट्स अर्ली गेम में बहुत प्रेशर के अगेंस्ट खेले थे और पूरा टीम फाइट ने बदल दिया। मेरे को लगा था कि ये लेट गेम तक जाएगा, जब तक सनशाइन मतलब जब तक ओजस और ये फियर को चांस मिलेगा टीम फाइट में आने पे। बट मॉस्को जब भी टीम फाइट चालू होता है वो हमेशा अपना एसओडी टाइम पे ज्वाइन करके फाइट ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका गोल्ड लेन डैमेज पहले से ही स्पाइक अप हो रहा है। उनका ऑलरेडी करोजन बन गया है और क्लॉड तो अभी डीएचएस पे हैं, तो जो अर्ली गेम का डैमेज है मॉस्को का अभी एक्टिव हो चुका है। और लिलिया की तो बात करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो अकेले अभी एक तरीके से कैरी कर रहे हैं नोवा स्पोर्ट्स को। जी बिल्कुल, और यहाँ पे ना आप थोड़ा सा इनको संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल माइग्रेशन आता हुआ दिखेगा। स्पेरो बिजली पीते से जाएंगे, फिनिश ऑफ किया जाएगा, प्राइम को खत्म किया और उसी के साथ वो लेन को डिफेंड करने के लिए ग्लू मौजूद रहेंगे। 4 बंदों का रोटेशन है उस लेन के ऊपर। ग्लू आपको संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर मुसीबतें बढ़ती हुई दिखेगी और यहाँ पे ग्रैब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हुए बचेंगे जरूर। सोरा की तरफ से कोशिश उनको बचाने के लिए, लिलिया का वो डैमेज आता हुआ मेल डाउन करना चाहते हैं। फेडरिन यहाँ पे आ चुके हैं, मिस्टिकस का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, फ्लिकर फोर्स आउट कर दिया जाएगा मॉस्को के द्वारा और यहाँ पे पीछे हटेंगे। अब टीम जो है डिफेंड करके खेलना जरूर चाहती है, लेकिन आप हर जगह नोटिस करेंगे मैप के ऊपर एक्टिविटी हो रही है। एक साइड अगर पुश हो रहा है तो दूसरी साइड पे फाइट चल रही है और ये बहुत अच्छा एक मैं कहूंगा कोशिश रहता है टीम का कि ना दूसरी साइड पे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसके कारण टीम को फोर्स रोटेशन करना पड़ता है और उसी साइड पे जो है स्प्लिट पुश जो है दूसरी साइड से यहाँ पे होता हुआ दिखता है, जो यहाँ पे हाल ही कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस मैच को जो है वो कंट्रोल करते हुए जा रहे हैं। इस मैच का टेम्पो जो है यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करती हुई जा रही है। पूरा कंट्रोल है अभी नोवा स्पोर्ट्स के साइड पे। उनको लग रहा था, हमको भी लगा था कि गुनेवर जंगल में जा रही है, बट जो लास्ट मिनट जो उन्होंने पिक स्विच किया है बहुत फायदा दे रहे हैं उनको क्योंकि जोहन कंप्लीटली हैज बीन कॉट ऑफ गार्ड और अभी उनका जंगल कॉन्स्टेंटली इन्वेड आ रहा है। उनके सारे मेंबर्स एक जगह क्लम्प हो चुके हैं। ग्लू इज सर्चिंग फॉर एन ऑप्शन टू एंगेज, क्या वो पकड़ पाएंगे? नहीं, प्यूरिफाई यूज कर लिया ओजस भाई ने और मेलियोडस बॉट लेन पे सोलो किल लेते हुए सोरा पे। क्या दिन आ गए हैं, सोरा लापू से हार रहा है 1v1 में कि कैसे हो सकता है? ये होता है जब आपके पास गोल्ड लीड इतना ज्यादा हो एग्जैक्टली जब गोल्ड लीड आपके पास ज्यादा हो तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अंडा वो एक मौके का इंतजार कर रही है, वो ज्यादा फाइट नहीं ले रही। उनको भी पता है अभी गोल्ड गैप बहुत ज्यादा है, उनको सिर्फ इंतजार करना है कि नोवा स्पोर्ट्स की तरफ से ना एक गलती हो और उस गलती का फायदा यहाँ पे टीम जोहन उठाती हुई दिखी। वो शटडाउन गोल जब मिलता है ना टीम्स को, जो ये जितना भी गोल गैप दिख रहा है ना आपको, ये सीधा कवर अप हो जाता है और बहुत इजीली कवर अप हो जाता है, जिसके कारण कमबैक करना बहुत इजी हो जाता है टीम को। तो यहाँ पे उसी मौके का फायदा यहाँ पे करना चाहती है टीम जोहन। वो वेट कर रही है कि एक गलती यहाँ पे हो टीम नोवा स्पोर्ट्स की साइड से, लेकिन नोवा स्पोर्ट्स वो डिसिप्लिन गेम प्ले दिखा रही है और लगता नहीं है कि वो आज गलती करने के मूड में है। जिस तरीके से आप बात करें फार्म के ऊपर, बात करें इंगेजेस के ऊपर, कितने क्लीन यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए फिर दोबारा से स्पेशल माइग्रेशन, उसके साथ यहाँ पे जो है पीछे स्पेयर ऑफ मिजरी भी मारा गया, डैमेज दिया गया और यहाँ पे सीधा मेल्टडाउन कर दिया जाएगा। मॉस्को लगातार डैमेज देते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास
माना जो है ना वो थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। लाफो लाफो मौजूदा रहेंगे ब्रेजेस फाइटर फोर्स, और फिर ये यहाँ पे आएंगे एक और किल लेते हुए अपनी टीम के लिए। इस समय नोवा स्पोर्ट्स वो डोमिनेट करती हुई जा रही है। जोहंट कोशिश कर रही है सरवाइव माय करने का, अंदर गॉड। की तरफ से आएंगे आले, डेडली मैजिक का इस्तेमाल, लेकिन स्प्लिट के थ्रू वो बचते हुए निकल जाएंगे यहाँ पे ग्लू। और देखिए यहाँ पे ले लिया वो पोक उनका बहुत अच्छी तरीके से, वो रेंज जो है ना उनके पास आ रही है, तो उसका भी एक अलग फायदा यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स को हो रहा है। आप हर एक तरीके से देखेंगे, हर एक जगह पे नोवा स्पोर्ट्स के पास आंसर है। आप बात करें रेंज की, आप बात करें डैमेज की, आप बात करें यूटिलिटी की, और आप बात करें अगर जोन करने की, तो उनके पास हर एक चीज अवेलेबल है। और ये देखिए यहाँ पे आइटमेशन बनते हुए दिखेंगे। मॉस्को की बात करें, उनका टीनिटी अब कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब वो अटैक स्पीड, वो डैमेज उनकी तरफ से चुभने वाला है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो है डीएचएस भी आ चुका है, जिसके कारण अब टाइम की हीरोज जो है वो भी बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएंगे, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। होली शील्ड अभी रहने वाला है मिडिल यहाँ पे जो है टावर जो है वहां पे, तो थोड़ा सा आपको जो है राहत की सांस मिलेगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नोवा ई स्पोर्ट्स वो चाहे तो इस गेम को भी एंड जरूर यहाँ पे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना यहाँ पे, वो यही रहेगा कि इन्वेडेड टर्रेट किसी तरीके से ले लिया जाए। बिल्कुल, और अभी देखते हुए कि कर क्या पाएंगे इज द क्वेश्चन, क्योंकि लॉर्ड तो आ रहा है उनके साइड से। आई थिंक लॉर्ड को टॉप साइड आएगा, नहीं बॉट बॉट है, ओके मैं ध्यान नहीं दिया था। बॉट लेट मार्च होते हुए लॉर्ड, और अभी पूरा प्रेशर हो रहा है। आई थिंक अगर इस अर्ली लॉर्ड पे अगर उनको टैरेट मिल गया, लापू बैकलाइन में पूरा डाइव, दो बंदों को पकड़ते हुए ब्रेवेस्ट फाइटर एसओडी आ रहा है, पूरा बर्स्ट। सोरा ने बहुत अच्छा पकड़ा किया है फाइनली, एवरेज सम अप मरते हुए, बट उसके लिए एक टैंक को हट मारने के लिए उन्होंने 4 बंदों को गवा दिया है। सिर्फ प्राइम और फेम जिंदा बचे हैं, फीरो भी नहीं मर पाए, फीरो को भी उठा नहीं पाए, और ये टरेट को तो पूरा जोन कर दिए हैं। एजिस डॉट एचपी पे, मिनियंस अभी भी जिंदा। ये गेम खत्म हो चुका है 11 मिनट के अंदर, एक लॉर्ड के अंदर। शिनरा भाई इन्होंने गेम खत्म कर दिया नोवा ई स्पोर्ट्स। बहुत ही कमाल का गेम प्ले आया नोवा ई स्पोर्ट्स की तरफ से। लाइक यहाँ पे जो है जोहन को ना वो ब्रीदिंग करने का मौका नहीं दिया, वो अडेप्ट करने का मैं कहूंगा वो मौका नहीं दिया। जोहन कोशिश करना चाह रही थी कि किसी भी तरीके से इस गेम को ना थोड़ा सा और लीड की तरफ लेके आए। अगर थोड़ा सा लेट होता या फिर गलती अगर होती यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स की तरफ से, वो शटडाउन गोल्ड उनको मिल जाता। लेकिन नोवा स्पोर्ट्स आज थोड़ा सा ना सोच के आई थी, वो मतलब हर एक फॉर्मूला, हर एक जगह का जो है वो प्रॉब्लम जो है ना उसका सोल्यूशन लेके अपने साथ चल रही थी। मैच हाइलाइट्स की बात करें, ये देखिए जिस तरीके से फाइट यहाँ पे एंगेज होती हुई जा रही थी, ग्लू मौजूदा थे, उसी के साथ ये पोक पड़ रहा था। मैजिक की बात करें यहाँ पे मीज का, उनका भी डैमेज आ रहा था। सनशाइन यहाँ पे टर्टल इन्होंने सिक्योर किया, पीछे से सोरा मौजूदा था, ग्लू के ऊपर प्रहार होता हुआ, उसी के साथ यहाँ पे वो धाराशायी हुए। ब्लेजिंग जो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आया था प्राइम का, और डैमेज दिए थे यहाँ पे। और बाल बाल बचते हुए गुनीवर यहाँ पे बचती हुई निकल गई थी, फिर दोबारा रोटेट किया अपनी जो है लेन की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे पकड़ा था एक बार ग्लू को, लेकिन बचते हुए निकले वहां पे फिर दोबारा से। फाइट्स की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ली उन्होंने। टर्टल के समय ये देखिए फिर दोबारा से इंगेज आता हुआ, टर्टल भी लिया, ग्लू यहाँ पे चढ़े जरूर, अंदर की तरफ जाना चाहते थे, उनके ऊपर प्रहार हुआ, फिर पीछे से यहाँ पे आए अपने मेलोडियस उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा खासा डैमेज, और यहाँ पे देखिए गॉड को पूरा ही धाराशायी किया सनशाइन ने। तो बात करें ना जिस तरीके से वो ऑफ गार्ड पकड़ने की, कि आपने गुनिवर दिखाया, सोचा था कि जंगलर यहाँ पे हमें आता हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने बोला था कि आपको गुनिवर एक फ्लैश पिक है, वो कहीं पे भी पिक हो सकती है भाई, वो एक्सपी भी चली जाएगी, जंगल पे भी चली जाएगी, और रोम पे भी जा सकती है। और यहाँ पे वो रोम पिक करते हुए दिखाया, उसका यूटिलिटी का पूरी तरीके से मैं कहूंगा फायदा यहाँ पे उठाते हुए गए वो। बिल्कुल, और पूरा डिसमेंटल कर दे। मेरे को लगा था कि जोहंट का ड्राफ्ट बहुत अच्छा था, और मेरे को लगा उनको बहुत लेट गेम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जंगल में गुनी थी, बट गुनी तो जंगल में नहीं रोम में निकली है। और उसके वजह से ये स्कोरबोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा पलट दिया इन्होंने। तो उस तरीके से बहुत कंफर्टेबल एमवीपी मिलते हुए, आई थिंक ये पहले मार्क्समैन है जिनको असिस्ट के लिए compete कर रहे हैं किल्स छोड़ के। बेचारों को बहुत डैमेज दिए होंगे, बट उनको लास्ट में लास्ट हिट करने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि सारे किल उनको उन्होंने उनके क्या बोलते हैं ये गुनी और हाइलोस ने, सॉरी हार्ली ने उठा के चले गए। जी बिल्कुल। अरे बहुत अच्छा खासा मैं कहूंगा ये गेम आया। लाइक सोचा नहीं था कि इस तरीके से डोमिनेट करते हुए जाएंगे, लग रहा था कि लीड गेम की तरफ खींचते हुए दिखेंगे, उनका लीड गेम पे जो स्केलिंग आता हुआ दिखेगा, लेकिन मिड गेम से ही, अर्ली गेम से मैं कहूंगा, मिड भी नहीं अर्ली गेम से ही डोमिनेट किया। और इसी के साथ जो ये मैच है अपना,
वो अपने नाम बनाते हुए गए हैं। तो पहला मैच यहाँ पे जो है टीम नोवा ई-स्पोर्ट्स वो अपने नाम जीत चुकी है और वो आगे बढ़ चुकी है टॉप 16 के सफ़र के लिए वो आगे बढ़ चुकी है। उसी के साथ जो है यहाँ पे देवियो सज्जनों लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में, कई मैच चाहिएगा और अपने जो स्नैक्स वगैरह है वो तैयार कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मैच भी जो है बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूँगा तड़कता-भड़कता होने वाला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Cracky. Cracky. Cracky.
Cracking. 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 Cracking.
cracky. 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 हेलो हेलो देखियो सज्जनों, स्वागत है आपका वापसी होती हुई यहाँ पे हमारी भी। और हुक गेमिंग शोडाउन आप देख रहे हैं यहाँ पे। डे 2 चल रहा है टॉप 32 का। यहाँ पे जो ये मैच जो है टीम आपस में, वो आपस में यहाँ पे लड़ती हुई जा रही है आगे बढ़ने के लिए। वो टॉप 16 की जो पोजीशन है वो हासिल करने के लिए यहाँ पे लड़ती हुई जा रही है टीम। मैं हूँ आपका कास्टर शेन राव, मेरे साथ कास्टिंग कर रहे हैं आज बालडूडू। उनसे जानेंगे कि अगला मैच तो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुका है, लेकिन अगला मैच जो आ रहा है उसके लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिल सकती है। क्या सेम पिक्स जो जैसे हैं वैसे ही वाले हमें देखने को मिलेंगे, या कुछ अलग हमें आता हुआ दिख सकता है? एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन शिनरा भाई। बट देखो, ये मैच 2 है मास्टरमाइंड्स और ब्लैक मिथ्स के अगेंस्ट। और लास्ट गेम मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि जोहंट और नोवा के में जो मैच है, ड्राफ्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। वो छोड़ के हम्म। उन्होंने सब कुछ पिक किया जो हमने सोचा नहीं था। गुनी ने रोम चली गई, हार्ली बहुत दिन के बाद देखने को मिला। तो मैं तो हम्म। इस बार तो गारंटी नहीं लूंगा या फिर मैं तो नहीं गारंटी हम्म। ले सकता इन टीम्स का क्या ड्राफ्ट करेंगे, सही ड्राफ्ट करेंगे या गलत। बट एक हम्म। चीज तो पक्का है कि एक ही टीम आगे बढ़ने वाला है। तो आपको ड्राफ्ट जैसे भी करना है करो, बट जीतना है तो सही करना पड़ेगा ड्राफ्ट। तो मास्टरमाइंड्स और ब्लैक मिथ्स का जो है मैच, तो देखना पड़ेगा अभी कौन है। ब्लैक मिथ्स का रहेगा फर्स्ट पिक। तो अभी गए हम ड्राफ्ट में और ब्लैक मिथ का है फर्स्ट पिक। बैन भी उन्हीं के साइड से आएगा।
मोस्ट लाइकली हमको वही देखने को मिलेगा, फ्रेया, मार्सेल और ये पकीटो जैसे हीरोज। देखो फ्रेया बैन हो गई, सबसे ज्यादा बैन होता हीरो अभी इस करंट मेटा में तो फ्रेया होगी। जी, बिल्कुल, नर्फ भी आया था देखिए इनके ऊपर और नर्फ आने के बावजूद इस मेटा को आराम से अभी भी बनी हुई है इस मेटा पे। और बात की जाए ना उनका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है ना, वो है उनका फर्स्ट स्किल का जो शील्ड आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है अर्ली गेम की फेजेज़ में। वो चेज़ डाउन करने के लिए या फाइट से निकलने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। उसके साथ-साथ उनके अल्टीमेट के थ्रू जो रीजन आता है, डैमेज आता है, वो भी काफ़ी कमाल का रहता है। तो वो कहीं न कहीं एक एडवांटेज क्रिएट करता है आपको और बहुत आराम से खेल सकते हैं वो पीछे रह के, तो इसलिए कहीं न कहीं वो कम्फर्ट पिक की तरफ बोल सकते हैं कि अगर ये हीरो आ जाता है आपके पास, तो आप बहुत कम्फर्ट होके खेलते हैं, बहुत आराम से खेलते हैं। साइड बैक भी अगर लगता है, तो उसको बाउंस बैक करना वहाँ से आपके लिए बहुत ईज़ी बन जाता है इस हीरो के साथ। तो वो बैन यहाँ पे करते हुए दिखेंगे, जूशिन की बात करें, फिर दोबारा से बैन आती हुई दिखेगी। टूर्नामेंट्स की बात करें, तो जूशिन एक ऐसी हीरो है, जो आई थिंक जो पूरे टूर्नामेंट में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बैन हुई है। प्रिया से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि इनको ओपन छोड़ना ना लाइक बहुत बड़ी गलती साबित होती हुई दिखती है हमको। कई बार हमने देखा है कि जो टीम्स है इस हीरो को भूल जाती हैं और या तो ओपन छोड़ देती है और जब भी ये फर्स्ट पिक आता है उस टीम की तरफ से ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीम आराम से जीत जाती है। हालाँकि अभी नर्फ भी आया था इनके ऊपर और लेकिन स्किलफुल जो प्लेयर्स वगैरह रहते हैं ना उनके हाथ में अभी भी कमाल की चलती है ये हीरो। और चलिए उसी के साथ मार्शल बात कर रहे थे आपके बैन आता हुआ दिखेगा। यस, बिल्कुल यहाँ पे बैन आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉड के ऊपर मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा-सा निशाना बनाया गया है, उनको यहाँ पे बैन किया जाएगा, जिसके कारण वो डीपीएस नहीं आता हुआ दिखेगा। ब्लेज़िंग डुओ यानी कि अल्टीमेट हमें आता हुआ नहीं दिखेगा। और अभी तीसरा बैन यहाँ पे मास्टर बाइंड उनकी तरफ से आता हुआ आप सभी की स्क्रीन के ऊपर थोड़ा-सा इंतज़ार करें, थोड़ा-सा ना विचार करें टीम के साथ कि क्या बैन किया जाए? ऐसा क्या बैन किया जाए कि सामने वाला अगर पिक भी उठाए हमारे पास 2 मेटा पिक्स जो है वो रहे कहीं न कहीं। तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा आपको दोस्त क्योंकि अकाई, फेड्रिन ये ऐसी यूटिलिटी जो हैं बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहे हैं। और कहीं न कहीं आप चाहेंगे कि अगर कैरी बैन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे साबित होता हुआ दिखेगा और चलिए यहाँ पे यूटिलिटी की मैं बात ही कर रहा था, तो यूटिलिटी जंगलर यानी कि यहाँ पे फेड्रिन इनको बैन किया जाएगा। अब बात करें ब्लैक मिथ की तो उनके पास ऑप्शन खुले रहेंगे, अकाई उठा सकते हैं, बहुत अच्छा मौका रह सकता है। चलिए अकाई नहीं उठाएँगे, सीधा एटलस की तरफ गए हैं, लेकिन थोड़ी-सी दिक्कत आपको हो सकती है दोस्त क्योंकि आपने फर्स्ट पिक एटलस किया है, डिग्गी आने का खतरा रह सकता है। अगर डिग्गी आ जाएगा तो आपकी पूरी जो यूटिलिटी है, मैं कहूँगा पूरी तरीके से यहाँ पे जा सकती है और देखना पड़ेगा कि डिग्गी के साथ जाना चाहेंगे या नहीं। एटलस के थ्रू वो स्लो डाउन आता है। अभी बात करें जिस तरीके की मेटा पे चल रहे तो वो जो स्लो डाउन है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है आपको एटलस के अगेंस्ट में खेलने के लिए। क्योंकि एटलस जब भी जाते हैं बैकलेन को टारगेट करते हुए वहाँ पे चेन टुगेदर अगर लगाते हैं तो सामने से 2 से 3 एनिमी अपनी तरफ लेके आ सकते हैं और पीछे से ना अगर गॉड आ जाता है उनकी तरह तो उन दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। गॉड, वेक्साना ऐसे हीरोज़ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं। चलिए मास्टरमाइंड ने बोला है कि वो अकाई उठाएँगे। अगर आप सामने की तरफ चार्ज करने के लिए आएँगे तो डिसएंगेज के लिए यहाँ पे उठाना चाहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वलेर अगर आ जाते हैं मिड लेन पे तो उनके पास एक और अच्छा खासा डिसएंगेज आ जाएगा। इसके कारण वो ईज़िली यहाँ पे जो है एटलस को पीछे धकेल सकते हैं अपनी सेकंड स्किल के थ्रू और बहुत अच्छा जो गेम है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, गॉड के साथ जाना चाहते हैं, वो फर्स्ट उनकी तरफ से लेना हुँ। ज़रूर चाहेंगे। चलिए गॉड भी अच्छा पिक है। मैं कहूँगा 2 पिक यहाँ पे हो चुके हैं, दोनों ही अच्छे खासे पिक यहाँ पे रहेंगे। अब देखना पड़ेगा कि आपको एटलस के साथ कौन से हीरो आप ऐसे उठाना चाहेंगे जो बैलेंस आउट कर जाएँ, उनके साथ जो कॉम्बोज़ बनाएँ, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और अभी देखें तो इन्होंने, मेरे को अभी समझ नहीं आया, फर्स्ट पिक में एटलस उठा लिए बहुत कॉन्फिडेंटली, बट उन्होंने एटलस का सबसे बड़ा काउंटर जो है, वो छोड़ दिया है। ज़ूजिन छोड़ देते, अगर अकाई को हटा देते तो फिर थोड़ा अच्छा रहता इनके साइड के लिए। और एक और चीज़ है, अगर ब्लैक मिथ्स को ये मैच में जारी रहना है, उन्होंने अकाई को कॉपी तो कर लिया अपने हेवी स्पिन के लिए, बट अकाई को मेल्ट करने के लिए उनके पास अभी कुछ एंटी टैंक तो है नहीं, और अगर मास्टरमाइंड्स ने उनके साइड से कैरी उठा लिया, तो फिर ब्लैक मिथ्स क्या करेगा टैंक्स को मारने के लिए? क्योंकि उनके हुँ। साइड भी 2 टैंकी हीरो हैं, एटलस है और वैलेंटीना भी है, बट अगर उनको मार्क्समैन में अभी ऑप्शंस तो सिर्फ़ क्लॉड क्लॉड तो बैन हो चुके हैं, सिर्फ़ मॉस्कोव और कैरी है, और मॉस्कोव, अकाई और गॉड के सामने अच्छा पिक तो नहीं है भाई। क्योंकि आपको एसओडी, अगर आपका एसओडी परफेक्ट नहीं रहा, तो आप गारंटीड, मतलब आप फ़ीड करते चालू हो जाओगे अगर मॉस्कोव खेले इस कॉम्प के सामने तो। जी, बिल्कुल और देखिए यहाँ पे फ़ोबियस का आगमन होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है।
फोबियस यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। मेरे को लगा था शायद ड्रैगन की तरफ भी जा सकते हैं, अगर ड्रैगन यहाँ पे लेते तो उनके पास मैं कहूंगा थोड़ा वो रहता। फोबियस के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि यस फ्रंट लेनर पे अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब फोबियस चार्ज इन करते हैं ना तो वो फिर वापसी नहीं आ सकते, या तो उनको पूरा ऑल इन जाना पड़ता है और वापसी के आसार आपके बहुत कम हो जाते हैं बच के निकलने के लिए, या तो आपको फ्लिकर रखना पड़ेगा क्योंकि मोबिलिटी उनके पास नहीं है। यस उनके पास अल्टीमेट है, यस उनके पास बहुत सारी आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव स्किल्स वगैरह हैं जिसके कारण वो एनिमी का जो लेन्स है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं उसको, लेकिन उधर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रैगन रहता ना यहाँ पे तो वो आप इजीली मैचअप कर सकते थे सूरा के साथ, और लेवल 4 होने पे ना आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है टर्टल लेते हुए, क्योंकि जब भी ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में यहाँ पे हमें देखते हैं कि वो आते तो उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहता है कि अपने एनिमीज को जोन आउट कर सके टर्टल की रेंज से, ताकि आपका जंगलर जो है वो इजीली यहाँ पे टर्टल ले ले। अगर बात की जाए अकाई तो उनको भी ज्यादा दिक्कत अभी आएगी नहीं, हैवी स्पिन उनके पास लगातार यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब टर्टल की बात हो रही है तो वहां पे लेते हुए तो हैवी स्पिन लगा के वो इजिली यहाँ पे टर्टल सिक्योर कर सकते हैं। तो थोड़ा देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कंट्रोल वो थोड़ा सा मास्टरमाइंड की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे बादशाह को बैन किया गया, उसके साथ साथ कैरी को यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, जिसके कारण टैंक मेल्टर की कमी यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाली है। आपने मिड लेन पे वैलेंटीना उठाया है, आईएमयू का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अकाई का अल्टीमेट लेके जाओगे, उसके अलावा आपके पास लेन क्लियरिंग हीरो बिल्कुल भी नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आप हमने देखा है कि हीरोज यहाँ पे मिड यहाँ पे इस तरीके से आता है वैलेंटीना, जब भी आता है तो आप बहुत ज्यादा सफर करते हो जब गेम लेट गेम की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आपको मिनियंस जो है वो फटाफट क्लियर आउट करने पड़ते हैं, और अगर आपके पास लेन क्लियरिंग वाले हीरोज नहीं है ना तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। आप लॉर्ड फाइट के लिए नहीं जा सकते हो, जिसके कारण आपका हमेशा एक ना एक हीरो वो बेस की तरफ रहेगा जो लेन क्लियर करता ही रहेगा, और आप जो है आउट नंबर होगे वो लॉर्ड फाइट पे, जहां पे आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिलेगा। फॉर रियल। और अभी देखिए तो फोवियस इनके जो बैंस जो आ रहे हैं ना दोनों साइड से, शिनरा भाई आपने एनालिसिस तो एकदम ऑन पॉइंट किया है। और मॉस्को तो ब्लैक मिट्स विल कांट अफोर्ड टू टेक मॉस्को, तो उनको देना ही पड़ना है। दे हैव टू गिव अवे दिस मॉस्को टू मास्टरमाइंड्स के साइड पे। और अभी उनके ऑप्शंस में देखें तो अभी कैरी भी बैन हो चुका है क्योंकि उन्होंने टाइम पे पिक नहीं किया था। आपको लगता नहीं है क्या कि ये सोरा पिक ये लोग रिस्क कर सकते थे कैरी उठाने के लिए? क्योंकि अभी देखो ओपोनेंट के साइड में 2 टैंक आ चुके हैं, एक सेमी मेटा मार्क्समैन भी है, और इनके साइड में गोल्ड लेन में सारे ऑप्शंस बैन हो चुके हैं। सिर्फ आपको खेलना भी है तो बीट्रिक्स खुला है, और बीट्रिक्स एटलस के साथ अच्छा सिंक हो सकता है, सोरा के साथ भी अच्छा सिंक हो सकता है। ओ भाई, क्लिंट, मेरे को ये पिक थोड़ा ऑफ लग रहा है भाई, ये क्लिंट चलो पिक। लेन के साथ यहाँ पे हार्ली, ओके 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 हार्डली ओके फिर ठीक भी है। डैशेस हैं, डाइव्स है, वो बच सकता है, टैंक्स को मेल्ट कर सकती हैं अगर वो ग्लोइंग और अपना मैजिक पेन बनाए। बट ये क्लिंट बचेगा कैसे? मेरा बस वही एक डाउट है, वो बच कैसे पाएंगे ये क्लिंट? और अगर प्यूरिफाई भी उठा लिए तो कितने स्टन से बचेंगे ये? एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी पॉइंट होगी बात करिए, और ये चलिए इसके साथ ओहो लग रहा है ना मास्टरमाइंड बहुत ही खतरनाक ड्राफ्ट के साथ आई है। फुल इन्वेड यहाँ पे हमें आता हुआ दिखेगा, उसके साथ साथ खलीद यहाँ पे उठाया गया, जिसके कारण उनके पास वो मोबिलिटी रहने वाली है जो लगातार यहाँ पे हरास करते हुए दिखेंगे। वो लगातार ना एनिमी के जंगल की तरफ रहेंगे, जिसके कारण उनके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से रहने वाली है। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि बचेंगे किस तरीके से, आप प्यूरीफाई भी उठा लेते हैं अगर आप किसी भी तरीके से फाइट पे आप बच के निकल जाते हैं, लेकिन आपको फाइट ज्वाइन करने के लिए आना पड़ेगा आगे, और आगे जब आओगे तो आपके पास रिस्क कितने ज्यादा है। वहां पे मेज है अपने, वो आपको स्टन देंगे, उसके साथ साथ अकाई का हैवी स्पिन है, उसके साथ स्पेयर ऑफ मिजरी है, उसके साथ साथ यहाँ पे सैंडस्टॉर्म है, उसके साथ साथ फोबियस वहां पे मौजूदा रहेंगे आपको टारगेट करने के लिए। आप कितनों से बचते हुए निकलोगे? और यहाँ पे ना कहीं जो गेम है ना वो काफी ज्यादा मैं कहूंगा थोड़ा सा थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज की तरफ चला जाएगा, अनलेस यहाँ पे ब्लैक मिथ कुछ ऐसा करके दिखा दे जो किसी ने नहीं सोचा। जो हमें लग रहा था कि जिस तरीके से ड्राफ्ट यहाँ पे जा रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो जाए, या तो ये चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए ना बहुत समय आपके पास रहने वाला है। तो वो किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हुए दिखोगे, क्योंकि हार्ले आपने पिक कर लिया है, चलिए आप हार्ले से जाएंगे डैमेज देते हुए दिखेंगे, लेकिन वो आप जो डेडली मैजिक लगाएंगे
वो किस पे लगाएंगे, क्योंकि आपको बैकलेन को यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, या तो मीच को लगाना पड़ेगा या तमिम को लगाना पड़ेगा, सामने ऑलरेडी टैंक रहेंगे। बात करें दूसरी साइड पे तो मिड लेन पे गॉड के ऊपर थोड़ा सा प्रहार होता हुआ दिखेगा, पोक उनकी तरफ से यहाँ पे आता हुआ उनको पीछे मजबूर किया जाएगा। इन गॉड के पास रेंज है, ये वो इजिली यहाँ पे फार्म करते हुए दिखेंगे। चलिए इसके साथ यहाँ पे खलीद भी आ चुके हैं, थोड़ा सा फार्म करवाने का कोशिश करेंगे, गॉड को फटाफट से फ्री करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैलेंटीना वो लगेंगी जरूर। पोक आएगा उनकी तरफ से भी, चलिए पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे मौजूद आए खलीद, पोक आएगा उनकी तरफ से और एटलेस फ्लिकर का इस्तेमाल अभी करवा दिया है, काफी अर्ली में फ्लिकर का इस्तेमाल करवाया यहाँ पे खलीद का। ओ वैलेंटीना, ओ चलिए यहाँ पे इंसेन के साथ बढ़िया 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 किल निकाल दिया है आपने अर्ली गेम पे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ब्लड यहाँ पे जरूर आपकी तरफ से आया, एक टेम्पो आपकी तरफ से सेटअप होता हुआ दिख रहा है, पर आपको मेंटेन कितनी देर तक आप लेते हुए जाओगे, लेकिन लग तो रहा है कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खलीद यहाँ पे अकेले फंसते हुए जाएंगे। डेडली मैजिक आएगा उसी के साथ एक और किल, और ब्लैक मेथ उन्होंने अपना खाता यहाँ पे खोल लिया है, और खाता खोलने के साथ ना इस गेम को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। जो यहाँ पे दिक्कत होती हुई दिख सकती थी ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल वे में आ चुकी है। और डैमेज पोक बहुत ज्यादा यहाँ पे आता हुआ, गेमर एक और किल लेके जाएंगे, और 0-3 का ये स्कोर यहाँ पे चल रहा है। आई थिंक आज यहाँ पे ये ना उल्टा दिवस चल रहा है। आज हम जो सोच रहे हैं ना कि जिस टीम का हम सोचते ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, वो टीम थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो रहा है इन लोग का। मतलब वो एक ऐसा भी नहीं है कि मतलब टीम फाइट भी नहीं ले रहे हैं, वो एक जाके ट्रेड ले रहे हैं 4 बंदों के बीच में। मेरे को वो समझ अभी गॉड का समझ में आता है, वो फ्लिकर करके वो पोक आउट हो गए तो फर्स्ट ब्लड दे दिया, बट खलीद और अकाई का मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों अंदर गए थे। और खलीद ने उसी के पहले 10 सेकंड पहले गॉड के डेथ के पहले अपना फ्लिकर यूज किया, और अभी टर्टल चालू होते वो अकाई का हेवी स्पिन यूज किए हैं, वो टर्टल के पास जा रहे हैं, और अल्ट उन रेट्रिब्यूशन भी था उनका, बट वो क्यों गए वो डॉट एचपी पे, वो मरे हैं अभी। और उसके साथ उनके फोविस जो आए थे उनको बचाने, उनका बिल्कुल आई थिंक, और दूसरा मेज लेवल 5 पहुंच गया है। जी बालूडो आपकी आवाज थोड़ी सी चली गई थी, माफी चाहूंगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अब फार्म डिफरेंस आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे 2 का आ चुका है। अब फार्म डिफरेंस के साथ अब धीरे धीरे जैसे टीम फाइट और जाएगी, आपके पास अच्छा खासा एडवांटेज आएगा। ओपनिंग यहाँ पे ब्लैक मेथ ने वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर ली है, मास्टरमाइंड को यहाँ पे जो है ना वो कैचअप करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा पीछे रह के आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। और बात करें पिक्स की तो यहाँ पे पूरा कंफर्ट पिक की तरफ जाती हुई दिखी है टीम ब्लैक मेथ, और वो दिखा रही है कि क्यों गई है इस पिक के साथ। अगर आप इस पिक के साथ इजीली डोमिनेट करते हुए जाते हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, बजाय इसके कि आप मेटा पिक के साथ जाए। क्योंकि देखो ओवरऑल अब बात करें मैक्रो या माइक्रो की, अगर एक हीरो के ऊपर आपका माइक्रो अच्छा है ना, तो मैक्रो पे इतना इम्पैक्ट आपकी तरफ नहीं आता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी साइड पे देखिए मिस्टिकस आता हुआ दिखेगा, शट डाउन मिलेगा फाइनली आले का, फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे रिवर्स मिस्टिक यहाँ पे जो है मिस्टिक गश वो आता हुआ दिखेगा। जुबा यहाँ पे मौजूदा, और उसी के साथ जुबा जो है एक और किल दर्शाई करेंगे। एसओडी लगेगा जरूर कनेक्ट होता हुआ, डैमेज देते हुए जाएंगे, लेकिन वहां पे टैंक मौजूदा थे जो आएंगे बैकअप देते हुए। खाता खुलेगा मास्टरमाइंड का, फाइनली 1-8 का यहाँ पे जो है वो स्कोर होता हुआ। मास्टरमाइंड 1 के स्कोर पे, ब्लैक मेथ वो 8 के स्कोर पे है। 3 का फार्म डिफरेंस अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, उसको फार्म अप करने के लिए यहाँ पे मास्टरमाइंड को एक फाइट अच्छी खासी जीतनी पड़ेगी। लेकिन उस फाइट के लिए ना आपको अच्छी तरीके से मैं कहूंगा एक फाइट को आपको रचना पड़ेगा। उसके लिए आपको ना बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, बहुत संभल के आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ डिसीजन अर्ली गेम में आपकी तरफ से आए थे जो इतने काबिले तारीफ नहीं थे, और उसी के कारण यहाँ पे पोक क्लिन का बहुत ही ज्यादा आता हुआ, जिसके कारण उनको पीछे हटना पड़ेगा। और उसी के साथ खलीद की तरफ से पोक जरूर आएगा, जोबा जो है वो पीछे हट चुके हैं, और यहाँ पे देखिए हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया जाएगा, 2 हैवी स्पिन पड़ते हुए दिखेंगे, पीछे हट चुके हैं, और अकाई को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया जाएगा। जोन आउट पूरी तरीके से कर चुकी है उनकी टीम, ब्लू की तरफ प्रहार होता हुआ दिखेगा, और ब्लू को हथियाने का प्रयास करती हुई टीम ब्लैक मेथ वो मौजूदा है। अंदर की तरफ जाएंगे, सिस्टिंग क्लाउड आएगा, बहुत ही बढ़िया कॉम्बो, 4 बंदों को बीच में लपेटते हुए, और उसी के साथ मिस्टिकस जरूर लगातार, डेडली मैजिक, और ये फिनिश ऑफ हो जाएंगे। 12-1 का स्कोर यहाँ पे। टीम मास्टरमाइंड वो थोड़ा पीछे जरूर चलती हुई यहाँ पे जा रही है, ब्लैक मेथ वो बेहतरीन तरीके से खेलती हुई वो अपने कंफर्ट पिक के साथ गई हैं, और बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। सोडी कनेक्ट जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे आने की गलती नहीं करेंगे, उसी के साथ पीछे हटेंगे। मिड का जो टरेट है वो टूट जाएगा, और 5 मिनट के अंदर मिड का टरेट आपका टूट चुका है, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पे।
बिल्कुल, और अभी बहुत प्रेशर है मास्टरमाइंड्स पे, उनके पास एक ही किल मिला है और वो भी एक किल वो ट्रेड किए हैं, बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड ऑफ हो गया उनके लिए। और अभी वापस एटलस जाते हुए क्या वो फेटल लिंक्स यूज करेंगे? उनको फेटल लिंक्स की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जोबा बहुत डैमेज देते हुए वो क्लिंट क्विक ड्रॉ के साथ और एक और किल उठाते हैं। 13-1 हो गया है स्कोर। पूरा डोमिनेशन ब्लैक मिथ के साइड पे, गोल्ड लीड हो चुका है 6000 का। सोरा बहुत बढ़िया सेट देते हुए क्या फाइनली इनको कमबैक मिल पाएगा? बट सोरा का डैमेज तो देखिए, सोलो डाइव करते हुए बैकलाइन पे फाइनली हेवी स्पिन उनको टरेट से पुश करते करते फाइनली रिस्पॉन्स आया, उनको सेकंड किल मिला। बट सेकंड किल के लिए उन्होंने 4 किल दे दिया। ये बहुत वाइप आउट। ज्यादा मैं कहूंगा एक्सपीरियंस, ब्लैक स्मिथ जो है ना उनको एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हैंडल करना है गेम को, और ये दर्शाता है यहाँ पे सामने। मास्टरमाइंड की बात करें ना, वो थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी नई टीम है, क्योंकि अभी जो उभरती हुई टीम मेरे को लग रही है, और उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है मैप प्रेशर को। बात की जाए उसकी तो वो थोड़ा सा यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। ब्लैकमिथ यहाँ पे वो डोमिनेट करती हुई जा रही है, उनके पास फार्म गैप है यहाँ पे। लेवल गैप की बात करें वो भी ऑलमोस्ट आ चुका है। आइटमाइजेशन की अब बात करें तो पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे दूसरे आइटम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और 2 आइटम भी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे हाइपर के। उसके साथ साथ टैंक का पहला आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिस कारण वो डैमेज ज्यादा लगेगा नहीं, पीछे की तरफ आएंगे। और ये देखिए एक और मॉन्स्टर किल यहाँ पे इंसेन गेमर के हाथ में। और उसी के साथ इस मैच को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल वे में चल रहे हैं। अभी तक 6 मिनट हुए, 7 मिनट होने वाले हैं, और मिड का जो टरेट है वो टूट चुका है, बॉटम लेन का टरेट है वो टूट चुका है, टॉप लेन का टरेट की बात करें वो भी जा चुका है। और इसी के साथ ना पूरा खदेड़ के यहाँ पे ले आए मिड लेन की तरफ पूरी। यहाँ पे देखिए लेन अप लाइनअप को अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाएगा, चेन टुगेदर, और इसी के साथ अंदर की तरफ अनस्टॉपेबल लेते हुए जाएंगे। जोन वहां पे मौजूद है, मिड का टरेट टूटेगा, और आई थिंक इसी के साथ ये होली शील्ड जो है वो भी टूटने वाली है। जी बिल्कुल, मिड लेन से वो होली शील्ड मिल चुकी है, वो कामयाबी उनको मिल चुकी है। और इसी के साथ टीम ब्लैक मिथ वो जो है वो तैयार है अगले पड़ाव के लिए, यानी कि लॉर्ड। अब लॉर्ड का इंतजार किया जाएगा, ये लॉर्ड लेके मेरे ख्याल से पहला ही लॉर्ड के साथ इस गेम को एंड की तरफ ले जाते हुए दिखेंगे। भाई क्या प्रेशर है मास्टरमाइंड्स पे, मेरे को बहुत टफ है। अगर ब्लैक मिथ ने एकदम हैवी वाला थ्रो किया है, उनके पांचों मेंबर एक एक लेके टर्न किए, थ्रो किए शटडाउन होने के लिए, तब मे बी कुछ चांस है। बट अभी तो मेरे को तो नहीं लग रहा 11,000 गोल्ड लीड रख के ये चेंज हो पाएगा। अभी देखो वापस ज़ाटो बहुत लो है, फ्लिकर करते हुए दे आ गया फेटल लिंक्स, और अभी उनका टैंक भी डॉट ऑफ एचपी, डेक्स विल फॉल। सोरा बहुत हैवी सेट देते हुए बट हैवी स्पिन यूज करके बच जाते हैं उनकी टीम। कानी ने अपना ब्लड रेट्रीब्यूशन यूज किया बट इनसेन गेमर ने रिस्पॉन्स दिया गॉड लाइक उनके लिए। वैलेंटीना का केडी है, अब कभी सोचिए वैलेंटीना 7 और 12 के केडी पे बैठी है, ऐसा लग रहा है वो स्काई पियर्स के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अर्ली गेम से ही वो अच्छे तरीके से उनको पता था उनका पोक किस तरीके से आना है, उनका स्पाइक किस तरीके से आता है, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है मेंटेन करती हुई चल रही है टीम ब्लैक में। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे मैचा लेके आए, आउट ऑफ द पिक्स यहाँ पे लेके आए। जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया वो पूरा कंफर्ट पिक के साथ गए। उनको पता था कि हमको जो है ज्यादा मेटा पिक्स नहीं चाहिए, हमको पूरे कंफर्ट पिक्स चाहिए जिसके जिसके साथ ना हमारा जो स्पाइक है ना वो ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे वो उसी चीज को यहाँ पे मेंटेन करते हुए गए हैं, और वो साबित कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा पिक उठाया, और ये वर्क करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये वर्क करता है, इसलिए उठाया था हमने। एंड राइट नाउ आइटम्स देखते हुए एटलस डायरेक्ट फ्लीटिंग टाइम बनाते हुए अपने सेकंड आइटम रेडिएंट बन गया उनके साइड से, तो उनको ज्यादा डर नहीं लग रहा है गॉड से, क्योंकि अभी अपोनेंट के साइड में कुछ डैमेज आया ही नहीं है। ट्रिनिटी बना नहीं है इनके साइड से, मॉस्को के साइड से। क्लिंट ने स्काई पियर्सर बना चुके हैं, उनको भी थोड़ा किल्स में शामिल लेने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको चांस चाहिए स्काई पियर्सर के लिए। सिर्फ 10 टैग बने उनके साइड से, बट अभी एटलस विल बी सर्चिंग फॉर द सेट। क्या फ्लिकर मिलेगा, क्या फ्लिकर फेटल लिंक्स का चांस मिलेगा? आकाई को तो मत पकड़ो। ओह माय गॉड, सोरा ऑलमोस्ट पिक ऑफ लेते हुए बट टॉप ऑफ ऑपोजिट साइड से खलीद रिवर्स किल विल गेट पिक्ड ऑफ ओवर देयर। अब ज़ैटो जंप कर रहे हैं, क्या ये शटडाउन मिल पाएगा इनको? हाउ माय गॉड, पाती ने किल ले लिया डेथ पे। यस देयर इट इज, डबल किल। ट्रिपल किल तो नहीं मिल पाया बट जोबा शटडाउन लेते हुए डबल किल। और भाई क्या हो रहा है इधर, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
मास्टरमाइंड 12,000 का गोल डेफिसिट के बावजूद अपना बेस डिफेंड कर लिए हैं। जी बिल्कुल, बेस ज़रूर डिफेंड कर लिया, इनविटेड टरेट उनके टूट चुके हैं, परंतु दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, शटडाउन फाइनली मिलेगा उनको। वो शटडाउन गोल की आवश्यकता उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्लिंच यहाँ पे पोक करते हुए दिखेंगे और ये देखिए लेजेंडरी सीधा मेल्टडाउन किया। लगा नहीं था कि खलीद वो टैंक यहाँ पे आए, चले गए जिस तरीके से। वो पोक आता हुआ दिखा ज़ोबा की तरफ से और वो डैमेज काबिल-ए-तारीफ़, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए यहाँ पे बिल्ड इस तरीके से बनता हुआ एंडलेस के साथ ऑलरेडी यहाँ पे मेलेफिक गन डाल चुके हैं। फिर उसके साथ फुल असैसिन बिल्ड के साथ जाते हुए दिख रहे हैं हमको, फुल पेनिट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। ब्लेड ऑफ हिपिटिस वो भी बन चुका है और यहाँ पे आखिरी जो बिल्ड आई थिंक वो बीओडी की तरफ जाते हुए दिखेंगे या तो फिर अपना जो एससी हेलबर्ट वो डालते हुए दिखेंगे, थोड़ा-सा एंटी हील की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पे ड्राफ्ट बना था, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको लाइक एग्जीक्यूशन की ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब देखिए यहाँ पे गोल लीड जिस तरीके से बनता हुआ जा रहा है, 11 के का यहाँ पे गोल लीड आ चुका है ऑलमोस्ट और उसी के साथ जो टीम है वो वेट कर रही है अच्छा खासा एक मौके का, क्योंकि यहाँ से ना गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं टीम्स को और वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, वो टावर एंड करने के लिए ना रिस्क लेती हैं और कई बार वो रिस्क अच्छा नहीं रहता है। तो टीम को भी यहाँ पे वो चीज़ ना समझ आ गई है, तो टीम थोड़ा-सा पीछे हटेगी, लेन के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रूर डाला था। अब लॉर्ड के लिए जो टीम वापसी यहाँ पे जाएँगे और लॉर्ड को कवर करके ना इस गेम को एंड की तरफ ले जाते हुए दिखेंगे। और अभी मेरे को आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लॉर्ड फाइट में इतना इतना ज्यादा गोल्ड लीड के साथ मेरे को लगा था ब्लैक में तो गेम खत्म कर सकते थे, बट एटलस और सोरा दोनों थोड़ा ज्यादा ही ओवर ईगर बन गए थे लास्ट में वहां। अब उनको एक और लॉर्ड के लिए रुकना पड़ रहा है। लॉर्ड मार्च जी, कर रहा है बिल्कुल। मिड लेन से। वेव सिंक करने का ज्यादा टाइम उनके पास है नहीं, जल्दी से जल्दी करना होगा। वेव्स एक परफेक्टली तो सिंक हो नहीं पाएंगे, बट फिर भी अच्छा एफर्ट हुआ है ब्लैक मिथ के साइड से। waves will be crashing in just a few more seconds right now, and Lord mid lane Shinra bhai। कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे देखिए प्रयास करना चाहते हैं लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। देखिए अंदर की तरफ गए हैं, चेन टुगेदर का इस्तेमाल मिस्टिकल्स मारा जाएगा और ये मेल्टडाउन करने का प्रयास अंदर की तरफ पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं, लेकिन लॉर्ड को कैसे रोकेंगे? वो ऑलरेडी बेस की तरफ है, हमला करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए पूरे तितर बितर कर दिए यहाँ पे टीममेट्स को और उसी के साथ वो लॉर्ड यहाँ पे बेस को लॉकडाउन करेंगे। उसी के साथ क्रिस्टल जो है वो टूटेगा और इस मैच को अपने नाम करती हुई जाएंगी टीम। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेली है मास्टरमाइंड, उनकी तरफ से जो है कोशिश एक रही ब्लैक मिथ जो है वो यहाँ पे खेलते हुए दिखे, लेकिन विजेता सिर्फ एक ही बनता है और आज विजेता ये टीम जो है वो बन चुकी है। बेहतरीन तरीके से गेम प्ले, बेहतरीन तरीके से वो डोमिनेशन, स्टार्ट से लेके एंड तक वो डोमिनेशन करार मेंटेन ही रहा। एंड में थोड़ी सी यहाँ पे सोरा अंदर की तरफ चले गए थे एटलस के साथ, लेकिन वापसी जो है वो दूसरे लॉर्ड के साथ करी, पेस को यहाँ पे एंड किया और उसी के साथ यहाँ पे विजेता बनते हुए। बिल्कुल, व्हाट अ गेम ओवरऑल। ब्लैक मिथ शुरू में थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव चले गए थे वो लास्ट में, वो पहले लॉर्ड पे, बट आराम से उन्होंने कवर अप कर लिया। मास्टरमाइंड्स को चांस ही नहीं मिला लास्ट में कमबैक करने का। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गेम कमिंग इन बाय टीम ब्लैक मिथ्स। उनका ड्राफ्ट एकदम हर गेम हो रहा है भाई शिंद्रा भाई, जो हम ड्राफ्ट हमको अच्छा लग रहा है वो टीम का एग्जीक्यूशन बहुत खराब जा रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए, और लाइक ये चीज़ ना दर्शाता भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेटा पिक्स रहे ना तो तभी आप विन करोगे। ये दर्शाता है कि टीम की सिनर्जी की वो जितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इस गेम में। क्योंकि आपके पास मेटा पिक रहेगा, चलिए ठीक है, आपके पास वो एडवांटेज रहेगा। लेकिन वो मेटा पिक के साथ ना आप जो है कम्फर्ट पिक के साथ आपके पास जो एडवांटेज आता है ना, वो मेटा पिक के साथ भी नहीं आ सकता। तो वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाती है टीम, वो गैप दिखाती है कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप रहता है और वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दर्शाती है। वो सोरा की आप बात करेंगे जिसकी देखिए फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से गए थे, उनको पता था कि यहाँ पे उनको मार सकते हैं और वो बढ़िया तरीके से गए, वो डैमेज उनकी तरफ से आया। आखिर में यहाँ पे देखिए हेवी स्पिन आया जिसके कारण उनको टावर के अंदर धकेला गया, फिर वहां से रिवर्स हेवी स्पिन आता हुआ दिखा, मैं उनको टावर के अंदर ही लॉक इन कर दिया। तो ये चीजें दिखाता है। इनसेन गेमर की बात करें, इस गेम में बहुत बेहतरीन तरीके से खेले, वो लीड उन्होंने जो ली है किल्स की, वो पोक उनकी तरफ से जो आ रहा था काबिल तारीफ, और क्लिंट उनकी तरफ से भाई वो डैमेज जो क्लिंट का आ रहा था, ओ भाई कमाल का डैमेज था। बिल्कुल, और लास्ट में पूरा कोलैप्स करते हुए बैकलाइन को
यहाँ थोड़ा-सा 2 बार हम देखे हैं कि मे बी अगर अकाई थोड़ा अपना हेवी स्पिन टाइमिंग सही किए, तो 2 बार सोरा हुँ। को पिक ऑफ कर पाए थे और उनके दोनों जो कमबैक का एक चांस मिल रहा था, वो सिर्फ़ वो सोरा का मिसप्ले हो रहा था, जो ज़ोन कर रहे थे, ज़ोन नाम के प्लेयर सोरा पे, वो थोड़े ज़्यादा ही अग्रेसिव जा रहे थे। अगर कैनिक टीज़ी थोड़ा शांति से अपना हेवी स्पिन होल्ड ऑन करते, तो मे बी कमबैक आ सकता था इनको। जी, बिल्कुल, लेकिन कमबैक का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्त क्योंकि ये नॉकआउट राउंड है, यहाँ पे आपको एक ही मौका मिलेगा, BO1 की सीरीज़ चल रही है। एक मौके में आपको अपना जो है 200% देना पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही आप अपना जो है 200% दोगे, अगर आप हारे तो आप सीधा बाहर होते हुए जाओगे और जो टीम जीती है यहाँ पे, यानी कि वो ब्लैक मिथ जो है वो आते आगे जो है बढ़ती हुई दिखेगी और उसी के साथ जो है बेहतरीन तरीके से इस मैच को उन्होंने विन किया। लेकिन दोस्तों आप लोग भी विन करेंगे कुछ ही देर में क्योंकि जो है लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट मैच में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। मिलते हैं आपको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। Cracking. Cracking. Cracking.
Crack it. Crack it. Crack it. Crack it. हेलो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद, पानी वानी पी के यार रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट मैच कास्ट करने के लिए। और आज के मैचेस की बात करें भाई, आज बायोलूडू लग रहा है हमारा दिन नहीं है भाई, आज उल्टा जा रहा है सब कुछ। अब मैं ना थोड़ा सा उल्टा बिल्कुल। कोशिश करूंगा इस मैच में। जिस टीम का ड्राफ्ट थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना, मैं बोलूंगा ये वाली टीम अच्छा खेलने वाली है, क्योंकि ये पिछले 2 मैच से ऐसा जा रहा है। जो टीम जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर रही है ना, उनका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं वो उतना ही ज्यादा, मैं कहूंगा थोड़ा सा खराब होता होता हुआ गया है। उनको थोड़ी-सी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की। और ये अच्छी बात रहती है कि आपको जब भी यहाँ पे जो आपके पास जो रूम रहता है ना इम्प्रूवमेंट करने का, ये बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि एक आपके पास ऑप्शन रहता है आगे ग्रो करने का। जो नई टीम्स रहती है वो हार के ना मैं कहूँगा कि निराश ना हो, उनके पास और भी ज़्यादा जो है आगे मौके उनको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप कभी भी एक टूर्नामेंट जब भी खेल के जाते हैं तो आप हारते नहीं हैं, मेरा ये मानना है। आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, और ये सीखना भी ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अब ये मैचेस जिस तरीके से यहाँ पे होते हुए जा रहे हैं, अब बात करें इसी मैच की तो येलोस्टोन यहाँ पे खेलती हुई दिखेंगी हमें, उसके साथ-साथ यहाँ पे सीनरी रिक्विएम जो है वो आती हुई दिखेंगी। बात करें येलोस्टोन की तो टूर्नामेंट्स में काफ़ी जाने-माने नेम्स हैं, टीम्स ये जो है आती हुई खेलती हुई दिखती है, काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते हुए दिखते हैं ये टीम्स। येलोस्टोन, रेडस्टोन ऐसी जो नाम थे, ये काफ़ी जानी-मानी टीम्स हैं। तो जिस तरीके का गेम प्ले दोनों टीम की तरफ से आता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले बालूडी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि इस गेम में क्या होने वाला है? ये गेम में तो अभी मैं तो कुछ आंसर तो आपको फिक्स आंसर तो देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ और होने क्या वाला है। अगर मैं कुछ बोलूँ तो ये लफड़ा भी नहीं है, सीधा बेइज्जती हो जा रही है मेरी। मैं जब भी मुंह खोल रहा हूँ अभी तक ड्राफ्ट के बारे में, तो ड्राफ्ट का छोड़ देते हैं अभी, बस बैंस का देखते हैं हम शांति से। जिसका अच्छा है बुरा है वो तो हम रिजल्ट के बाद बताएंगे, ठीक है। जिसका अच्छा था, जो जीता है, उसका ड्राफ्ट अच्छा है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का भी नहीं। तो अभी तो येलो स्टोन है स्टार्टेड ऑफ विद पकीटो और कैरी बैन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन्स है। मैं आजकल कैरी थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि हम पिछले 3 गेम में हम देख रहे हैं कैरी को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं टीम। जी, बिल्कुल। अभी हालाँकि जिस तरीके का मेटा है ना, वहाँ पे कैरी लाइक एक सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। वो सस्टेन फाइटर्स के बारे में बात करें या सस्टेन मेटा के लिए। क्योंकि हमने देखा कि सामने टैंकी हीरोज़ आते हुए दिख रहे हैं। कैरी के पास वो पोटेंशियल रहता है, उनका जो ट्रू डैमेज है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वो मायने रखता है। उसके साथ-साथ जब वो टिनिटी बिल्ड पे जाती है भाई, वो डीएचएस का डैमेज वो भी काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़। और कैरी एक ऐसा सिंगल हैंडली हीरो है जो आपकी पूरी की पूरी चाहे वो स्क्विशी हीरोज हो, चाहे वो फ्रंटलाइनर्स हो, चाहे वो जैसे भी हीरोज हो, उन सबको इजीली मेल्ट डाउन कर सकता है। और हमने देखा भी था जिस तरीके से लाइक मैचेस गए थे,
वो कैरी का वो डैमेज जब लगा था फैनी के ऊपर, एमएलएमएस की बात है ये, तब वहां पे जिस तरीके से वो आतंक उनका दिख रहा था कैरी का, तो वो तो है भाई, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इस मेटा पे। और चलिए यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो वो भी बैन आते हुए दिखेंगे, काई है, मार्शल है, उसके साथ साथ गुनिवर आती हुई दिखेगी। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा कि फटाफट से बादशाह के अपने आपने जो है लॉक इन कर लिया है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा जो रिसेंटली देख रहे हैं कि बादशाह जब भी पिक होता है ना, तो उसके साथ हम देख रहे हैं कि अपोनेंट में बालमेड अभी जो है वो मेटा पे आ गए हैं। मैं बात करें तो बालमनी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं मेटा पे, और बादशाह को काफी अच्छी खासी मैं कहूंगा टक्कर देते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इजिली वो जो है ऑब्जेक्टिव दोनों ही यूटिलिटी वगैरह रहते हैं, तो इसमें बहुत इजिली हो जाते हैं। और बालमेड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि काफी सारे लोग ना उनका जो हील आता है बेसिकली वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। उनका जब वो लो एचपी एनिमीज को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनका जो एग्जीक्यूट करने पे जो हील आता है ना, वो कई बार बहुत ज्यादा जंप आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेट्स सी कि अगर बालमेर की तरफ जाते देखते हैं या नहीं। लेकिन इस समय डीपीएस के लिए यहाँ पे क्लॉड वो आते हुए दिखेंगे, और उसके साथ साथ अपने जो है गॉड वो भी आ चुके हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लग रहा है ये बादशाह पिक, इतना फर्स्ट पिक बादशाह पिक की कोई जरूरत थी? मतलब उतना स्ट्रांग है क्या ये बादशाह पिक, जो आपको लग रहा है कि इतना जल्दी पिक हो रहा है अर्ली गेम में? और अभी उनके साइड में क्राउड कंट्रोल की, मतलब उनके साइड में क्राउड कंट्रोल की कुछ नहीं है। हम्म। देखिए यहाँ पे बादशाह की बात करें ना, तो बादशाह के साथ ना एक ये चीज हो जाता है कि बादशाह का लाइक जो पैसिव है बेसिकली, वो इनबिल्ट बोल सकते हो कि आप एंटी हील का काम करता है, वो आपका हीलिंग रिडक्शन का काम करता है, जिसके कारण ना बहुत सारे हीरोज आपके जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो वो एक सेफ पिक रहता है कि बादशाह आपने उठा लिया, तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है आपके ऊपर थोड़ी सी बढ़त वहां पे आपके बढ़ जाती है। उसी के साथ जो पीछे आपके बैकलेन रहती है उनको बहुत ज्यादा ओपनिंग में इजी मिल जाता है, फार्म करने मतलब फार्म करने का मौका मिल जाता है। उसके साथ साथ आपके जो है एक मोबिलिटी जो रहती है बादशाह के पास वो काफी अच्छी तरीके से रहती है, वो रोल का जो है इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो वहां पे जो है आप टीम फाइट ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो डैमेज है वो डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ पे देखना पड़ेगा, मिड लेन पे यहाँ पे देखिए सलीना का आगमन हो चुका है, जो एबिसल एरो यहाँ पे लगते हुए दिखेंगे हमको, वो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पोक जो उनकी तरफ से आएगा ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूंगा वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जरूर डालेगा इस गेम पे। हैरिथ का भी आगमन हो चुका है, और वो क्लॉड के अगेंस्ट में यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे हैरिथ। अपनी जो वेल लेनी हीरो है वो उसकी बात करें तो उसमें काफी अच्छी तरीके से चलते हैं। बात करें यहाँ पे सी की उनकी तरफ से वाईजी यानी कि यूजोंग जो है वो हमें आते हुए दिखेंगे, उनको बैन किया गया है। और ऊपर की बात करें तो दूसरी साइड येलो स्टोर वो काजा को बैन किया है, और वो तो कहीं ना कहीं रोमर के जो ऊपर है अभी जो है थोड़े से मैं कहूंगा कि निशाना बनाया जा रहा है उनको। दो रोमर यहाँ पे ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, तीसरे रोमर की तरफ भी जा सकते हैं, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या फेडरिन हमें आते हुए देख सकते हैं, फेडरिन बैन हमें आते हुआ दिखेगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बादशाह के अगेंस्ट में फेडरिन जाएंगे, क्या लगता है आपको? अक्षय के अगेंस्ट फ्रेडरिन, आई मीन अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको फ्रंट लाइनर एक टैंक जंगल की जरूरत है। अगर ये टैंक जंगल नहीं गए तो उनको जो रोम पे है उनको हार्ड टैंक चाहिए। और हम्म। अभी जो सिचुएशन है, बेलेरिक काफी डिसेंट पिक हो सकता है, क्योंकि वो हैरिथ का जब अल्ट लगाता है, हैरिथ के अल्ट के रेंज में, तो हैरिथ का कॉम्बो कितना भी डैमेज दो, अगर तुम टॉन्ट हो चुके हो, तुम ना अपना कोई स्किल कास्ट कर सकते हो और आराम से अपना फ्लिकर भी बेट, सॉरी प्यूरिफाई भी बेट कर सकते हैं। यस। तो बेलेरिक एक अच्छा ऑप्शन है। साइमल्टेनियसली आप अगर टैंक जंगल ले रहे हो, तो अब मथिल्डा बहुत अच्छा पिक हो सकता है दोनों टीम के लिए। मथिल्डा बहुत अच्छा पिक होगा, मे बी येलोस्टोन के लिए थोड़ा कम, क्योंकि उनका बहुत फिर चार चार मैजिक हीरोज हो जाएंगे, तो अर्ली गेम में उनको एक टफ बूट्स और साइलेंस रोप से पूरा उनका गेम हट मतलब इंटरप्ट हो सकता है। जी बिल्कुल। अरे यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे कुफरा उनका आगमन होगा, वो डैशेस रोकने का प्रयास जरूर करना चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना यहाँ पे हैरिथ को रोकने का प्रयास करें। और हैरिथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रहता है कि उनको अगर डैश मारने से डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उनका जो कॉम्बो है बेसिकली जो रोनो डैश लगाते हैं जमान फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और हैरिथ जिस तरीके से स्केलिंग करते हैं हमने देखा है कई बार कि लेट गेम में 10 एचपी होते हैं वो सिर्फ, और जब अपना जमान फोर्स लगाते हुए जाते हैं उनकी वो शील्ड पूरी कवर अप हो जाती है, 80% तक उनकी पूरी शील्ड आ जाती है कॉम्बो पे। और ये देखिए यहाँ पे ग्लू का आगमन होगा, उसके साथ साथ आल आउट, ये अच्छा लगा मेरे को, आल आउट का यहाँ पे जो है आगमन हो चुका है।
आर्लॉट अब यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, उसका रीज़न यहाँ पे ये रहने वाला है। एक तो सलीना का जो स्टन आएगा, उसके थ्रू उनकी जो एबिलिटी है उनका जो पैसिव है बेसिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा और जिसके कारण वो डैश यहाँ पे लगा पाएँगे लगातार। ग्लू भी मौजूदा रहेंगे उसके साथ-साथ, तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा लेकिन ओके, यहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो गया, फैनी का वाओ! आगमन हो गया है जिसके कारण ये पूरा जो है लाइनअप चेंज हो चुका है और यहाँ पे ना अब जो स्थिति यहाँ पे थोड़ी-सी लग रही थी कि येलोस्टोन की तरफ जाते हुए, वहाँ पे अब थोड़ा-सा पलड़ा जो है भारी वो फैनी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन फैनी के लिए भी थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर उनका सेकंड बफ यहाँ पे जो है ब्लू बफ जब उनका स्पॉन होगा, वहाँ पे अगर फाइट हुई और वो बफ डिनाई किया गया, तो फैनी को दिक्कत होने वाली है। फैनी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि फैनी एक ऐसा हीरो है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेके आता है। बिल्कुल। मेरे को भी वही बोलना था कि फैनी मतलब मेरे को भी पिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड पिक आया था। इसलिए मैं कुछ प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहता था। बट जैसे आप बोले थे कि अगर इन्वेड आ गया और वो इन्वेड हुँ। सक्सेसफुल हो गया, तो फैनी का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा ये गेम में रियलिस्टिकली क्योंकि वो हीरो इतना बना ही है। जैसे लिंग अभी है। लिंग अभी हाँ। जैसे पहले जैसा था लिंग और अभी हम देख रहे हैं लिंग मार्क्समैन की तरह मार्क्समैन से भी थोड़ा वीक हो गया लिंग। क्योंकि हम शुरू के पैच में 2-3 दिन देख रहे थे लिंक पिक होते हुए। अब लिंक भी वापस गायब हो गए क्योंकि उन्होंने जंगल को रिवैम्प कर दिया क्योंकि तो जितना फास्ट आपका जंगल क्लियरिंग स्पीड हो, उतना आपका वैल्यू रहेगा ये मेटा में। और फैनी का जंगल क्लियरिंग स्पीड उतना भी तेज नहीं है। इट्स थोड़ा स्लो है कंपेयर टू अदर असैसिन्स। तो यही क्वेश्चन हुँ। है क्या फैनी टिक पाएगी ये मैच? सीन देयर एक्वेम, लेट्स सी विल दे सर्वाइव अगेंस्ट येलोस्टोन। जी, बिल्कुल और उसी के साथ देखिए ये नए रोटेशन की तरफ जाते हुए वो लिज़ार्ड यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद ब्लू बफ वहाँ से आते हुए दिखेंगे रेड बफ की तरफ। तो दोनों जो है यहाँ पे अलग-अलग पोज़ीशन की तरफ दिखेंगे और यहाँ पे एक चीज़ जो रहती है कि आप जाके ना सामने वाले का जंगल का वो छोटा क्रीप है ना वो चुरा लो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है क्या चेंज हुआ है बालडूडी कि आप सामने वाले का बफ चुराने के बजाय ना आप चीज़ें छोटे-छोटे जो क्रीप है ना वो चुरा लो, जिसके कारण आप ईज़िली सामने वाले उनके जंगलर जो है ना उनको गैप दे सकते हो। और ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी दुविधा रहती है, क्योंकि वो छोटे-छोटे मिनियंस जो है ना थोड़े से मैं कहूँगा ज़्यादा ईएक्सपी देते हैं जिसके कारण थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। लीथो यहाँ पे लेने के लिए आएँगी, फैनी उनको रोका जाएगा, स्टन पड़ेगा और ये देखिए ओ डैमेज भाई आता हुआ सीधा फर्स्ट ब्लड खत्म। और इसी के साथ जो खाता है वो खुलेगा येलो स्टोन का और उनका इस समय जो माइंड स्टोन है वो चमक चुका है मेरे दोस्त और यहाँ से जो है शुरुआत वो हो चुकी है। भाई फैनी को एक ये बोल रहे थे हमको ये डर लग रहा था कि इन्वेड होके फैनी मर पाएगी, मर सकती है। बट फैनी ने बफ तो ले लिया, सिक्योर कर लिया और फिर खुद ओवर एक्सटेंड कर लिए एक लिथो वॉन्डर के लिए। अब हम नॉर्मली कौन सा फैनी भाई लिथो वॉन्डर के लिए जाता है? मेरे को नहीं लग रहा कि ये सही प्ले था क्योंकि रियलिस्टिकली फैनी डायरेक्टली हैरिथ पे अटैक कर सकती थी अपना रेगुलर क्लिप्स लेके। वो डायरेक्ट हैरिथ पे फोर्स प्रेशर डाल सकती है क्योंकि हैरिथ पे फ्लिकर भी नहीं है, वो सिर्फ प्यूरिफाई पे है। तो हैरिथ को बचना बहुत डिफिकल्ट है फॉर द साइड ऑफ येलोस्टोन। ओ भाई क्या स्टन पे स्टन, स्टन पे स्टन, चांस ही नहीं दे पा रहे उनको। फाइनली ग्लू को फ्लिकर होते हुए यस फैनी विल यूज द कट थ्रोट। नाउ हु इज गोना गेट द टर्टल? इज इट गोना बी द लेवल 5 Bakshi or the level 4 Fanny, but Fanny gets stun locked once again. Mystic Gush defensively use हो चुके, ब्लू को स्प्लिट यूज करते भागते हुए। उनका अल्टीमेट अभी तक वापस आया नहीं। गॉड अभी फ्लिकर आउट होते हुए बट वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि सेलिना और आर्लॉट का जो कॉम्बो आया है हटा दिया। वापस फाइनल स्लैश आते हुए फोवियस तो डैश करते रह रहे हैं बट फिर भी अभी तक किसी ने लॉर्ड टर्टल तो उठाया नहीं है। बट यतोशी ने उठा लिया है टर्टल एकदम बढ़िया रेट्रीब्यूशन के साथ। उकियो ने रिस्पॉन्स दिया है, टर्टल ही नहीं लेंगे हम तो किल भी उठाएंगे और फैनी को हटा दिए, ये रिस्पॉन तक भेज दिए। अब ये फोवियस कितने सेकंड तक बच पाएंगे? आंसर इज बहुत कम क्योंकि वो भी गए रिस्पॉन पे और स्कोर है 4 और 0। और इसी का डर लग रहा था भैया कि आपका जो अर्ली गेम था, आपका जो स्नोबॉल पोटेंशियल था वो पूरा खत्म कर दिया यहाँ पे येलोस्टोन ने। और ये सलीना जो पिक है ना इनका ये बहुत डेंजरस पिक है और लाइक भाई आई थिंक आई लास्ट टाइम मेरे को रिमेम्बर है ये सलीना पिक ना बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि वो बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ था। बाकियों के जो है वो रेशियो रहता है यहाँ पे कि 10 में से जो है 5 या 6 पड़ गए
ये सलीना का भाई ऐसा था कि 10 में से 9 जो है वो हिट पड़ते ही पड़ते हैं। सिंगल हिट होगा, मिस होगा, अगर होगा तो 10 में से बाकी सारे हिट यहाँ पे लगते हैं। और आप नोटिस करेंगे जितने भी अभी तक हिट लगे हैं वो पूरा इस गेम में जो है ना इम्पैक्ट लेके आए हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आए हैं। पूरी तरीके से गेम का जो स्थिति है वो चेंज कर दिया है, टेम्पो पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। फैनी अभी भी फार्म करती हुई दिखी, लेवल 6 यहाँ पे हो चुकी है। और अब आइटमाइजेशन भी है वो धीरे धीरे यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा टैंकीनेस की तरफ जाते दिखेंगे। ग्लू कर्स हेलमेट वो पहला आइटम उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा, बादशाह की तरफ से भी, जिसके कारण थोड़ा सा उनको लेन क्लियरिंग में हेल्प मिलेगी। दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा फैनी, वो आएंगे जरूर फ्री फॉल यहाँ पे लगाएंगे और उसी के साथ केबल का इस्तेमाल करते हुए वापस रिकॉल की तरफ। अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रहा, आपके पास एक स्नोबॉल जो पोटेंशियल था वो आपके हाथ से जा चुका है। आप एक फार्म गैप दे सकते थे, वो आपके हाथ से जा चुका है। लीड आपके हाथ से जा चुकी है, लेकिन ओ 2 के कारण भाई, देखिए फिर दोबारा से आप स्टन आएगा। और ये देखिए पूरी तरीके से कोशिश करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन ट्राई एंड रेंज एक आखिरी कोशिश कुफरा की कि जाते जाते वो कुछ टीम के लिए जोड़ते हुए जाए। लेकिन दूसरी साइड में फैनी केबल का इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ यहाँ पे स्टन करने का प्रयास किया जाएगा। सलीना मौजूदा है लेकिन उनको फिनिश ऑफ करते हुए मौजूदा, माय लेकिन गॉड। ये देखिए वापसी हमला। अब बोला था यहाँ पे वो क्रीप उनका लगेगा, उसी के साथ साथ वो बेसलेरो लगा था वहां पे उनको, और वो सीधा खाते हुए जाएगा एक के बदले एक। ये सीधा क्या भाई है जवाब ये हमला था फैनी भाई, बिल्कुल कि क्या आप फैनी, मतलब क्या सलीना है भाई, रियलिस्टिक वो बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर कोई हाँ, फैनी उठाया है ना टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32 के स्टेज, मतलब उनको पता है कैसे खेलना है, उन पे बहुत एक्सपीरियंस होगा। उसके बावजूद, और सीन द रिक्विम कोई छोटा टीम नहीं है, ये जाना पहचाना टीम है। फ्योडोर और ये सारे प्लेयर्स बहुत फेमस प्लेयर्स हो चुके हैं, बट उसके बावजूद जो जोरो जोरो अपना सलीना खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो रैंक में चला रहे हैं, समझ रहे हैं। एमएमआर पुश कर रहे हैं, जिस तरीके से इतना काम खेल रहे हैं, इतनी शांति से खेल रहे हैं। अभी तक में जितने वो स्टन लगाए ना, उससे कम उनके स्टन मिस हुए हैं। एग्जैक्टली। अब यही सबसे बड़ी खूबी रहती है कि आपके पास ऐसा यूटिलिटी हीरो है कि उस हीरो के ऊपर आपका माइक्रो इतना बढ़े, देखिए फिर दोबारा से स्टन लगेगा, फिर दोबारा से वो पोक आएगा, और अर्ली गेम से ही ये लगातार स्टन बने हुए हैं। और ये ना चीजें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है आपको धीरे धीरे। और जब ये ज्यादा चीजें होने लगती है तो आप गलतियां ज्यादा करते हो इस चीज के बीच में, और इसी बात का फायदा आपकी टीम जो है वो उठाती हुई दिखेगी। सामने वाली टीम देखिए फिर दोबारा कोशिश करी थी, अंदर की तरफ जाएंगे, केबल लगाने का प्रयास, उनको रोकने का किया जाएगा। मिस्टिकस आएगा मैच डाउन करते हुए, मिनियंस यहाँ पे मौजूदा नहीं रहेंगे। अलॉट उनका फाइनल स्लैश आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापसी जाएंगे अंदर की तरफ। ये गलती साबित हो सकती है, आप बच सकते थे, चलिए बच जाएंगे। और उसी के साथ पीछे जो वो आ चुके हैं, लेकिन फैनी उनकी नजरों में कोशिश करना चाहते हैं, अंदर की तरफ जाएंगे, डैमेज देते हुए फिर दोबारा स्प्लिट का इस्तेमाल किया है। जवान फोर्स लगाएंगे जरूर, यहाँ पे दिक्कत है तो उनको डैमेज पड़ेगा। प्लेजेंट का इस्तेमाल, टीम जो है बैक होती हुई दिखेगी, रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा इस समय। और बोल रहे हैं यहाँ पे सीन एकदम कि इतनी इजीली तो नहीं मेरे दोस्त, इतना इजी तो मत समझो, वापसी आपको जो है पनिश जरूर किया जाएगा। और वो पोजीशन एक खराब हुई वहां पे हर एक की, जिसके कारण उनको अच्छा खासा पनिशमेंट मिला। और एक जो फार्म गैप जो निकल रहा था धीरे धीरे, उसको उसके ऊपर थोड़ी सी बढ़त जो है वो हासिल होती हुई दिखेंगी, और वापस आ चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखा जाए तो फीडोर जो है उनकी तरफ से जो है बेस्ट प्लेट जो है ब्रूट फोर्स वो आता हुआ दिखेगा। अब उनके पास जो है ना थोड़ी मोबिलिटी भी रहेगी, सीसी रिडक्शन उनको मिलेगा, जिसके कारण ये जो इतने सारे ओ दिक्कत होती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले ट्राइन रेंज का इस्तेमाल, लेकिन पीछे से यहाँ पे बचते हुए निकलेंगे, अच्छा खासा उनकी तरफ से स्टन आता हुआ दिखेगा। फूवियस यहाँ पे सेकंड इस्तेमाल करेंगे, पीछे हटे हैं। टर्टल के लिए टीम जो है वो रेडी होती हुई दिखेगी, अंदर की तरफ आ चुकी है। टर्टल स्टार्ट हो चुका है, टर्टल ऑन स्टार्ट, और उसी के साथ टीम यहाँ पे मौजूदा, वो एरो उनका लगेगा जरूर सलीना का, कोशिश रहेगी अंदर की तरफ जाएंगे, डैमेज देते हुए फिर दोबारा से वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे फैनी आएंगी, केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बार चर्चर यहाँ पे गॉड को मिलेगा। दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, ग्रैपलर का इस्तेमाल किया गया है, शट डाउन किया जाएगा। लॉर्ड को पीछे हटेगी टीम, उनको कम बैक करना पड़ेगा। और उसी के साथ ग्लू बढ़िया काइटिंग करते हुए, लेकिन कितनी देर तक करेंगे, पीछे से फैनी बच आएंगी, गए। निकल चुके हैं, अभी भी जिंदा है वो। और ये देखिए कितना अच्छा काइटिंग उनकी तरफ से आता हुआ, काबिले तारीफ फैनी आएंगी यहाँ पे अपने साथी को बचवाने के लिए, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उनका स्टन लगा। काबिले बट तारीफ यहाँ पे ग्लू की करनी पड़ेगी, इस तरीके से वहां पे मौत को छू के गए हैं बिल्कुल टक से। बिल्कुल बहुत कंपोजर के साथ खेलते हुए वहाँ, क्योंकि बहुत सारे टैंक प्लेयर्स उनको लगता है कि देखो मैं ऑलरेडी डॉट एचपी हूँ, अच्छा बस एक और थोड़ा डैमेज पोक करके मर जाऊंगा। बट ग्लू एकदम शांति से टरेट के अंदर खेले, उनको पता है कि अगर एनीवे अगर मैं मरने वाला हूँ, बहुत टाइम वेस्ट करवाऊंगा इन लोग का,
पैनी भी छोड़ दी, उनको लगा कि किल मिल जाएगा और वो भी निकल गए, और इस तरीके से उनका गोल्ड बच गया और उनका जान भी। और अभी तो देखते हुए स्कोर है तो 7-3 है, गोल्ड लीड बहुत कम हो चुका है। येलोस्टोन ने जो अपना एडवांटेज बनाया था अर्ली गेम में, उन्होंने बहुत सारे शटडाउन दे के गवा चुका है पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी के साथ देखिए ना, अब स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़त देखिए यहाँ पे सीन भी रिक्रूटमेंट की है, भले ही उनका जो स्कोर है ना वो थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा खास है। लेकिन मिड का अगर ये टरेट मिल जाता है ना, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी खासी हो जाएगी। और मिड का टरेट मिलना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टरेट रहता है मिड। और देखिए कोशिश रहेगी, कोशिश टीम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है उस मिड के टरेट को बचाने की, लेकिन दूसरी साइड और आपने नजर हटाई, क्लॉड ने अपना जो है यहाँ पे अटैक कर दिया, भाई काम कर दिया, पुश करके चीज निकल गए, लेकिन रोकने का प्रयास किया जाएगा जी, बिल्कुल ग्रैबर का इस्तेमाल करते हुए रोकने का प्रयास, पूरा डैमेज सोकअप करेंगे। रिकॉल का प्रदर्शन किया, बोला था कि बच के कैसे निकलेंगे मेरे मित्र, लेकिन वो गैप यहाँ पे रहा, जिसके कारण वो डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि वो वापस नहीं आ पाए ग्लू। लेकिन दूसरी साइड पे देखिए फैनी का आतंक अब चालू हो चुका है भाई, उनकी तरफ से भी डैमेज आ रहा है। और अब बहुत ही वो ज्यादा दिखा रहे डैमेज आ हैं कि रहा है आखिर भाई। उन्होंने वो फैनी क्यों पिक किया था। फाइनल स्लैश का इस्तेमाल किया जाएगा, रोकने का प्रयास, फोबियस अभी भी मौजूदा है, लेकिन टैंकीनेस बादशाह की तरफ से इतनी ज्यादा कि वो यहाँ पे सस्टेन करते हुए जाएंगे। और ये देखिए लेन जिस तरीके से जो कंट्रोल कर रही है टीम यहाँ पे सीन रिक्वियम, वो काबिल तारीफ है। उनको पता है कि किस लेन पे ज्यादा प्रेशर देना, और लगातार वो टॉप लेन पे जो है प्रेशर मेंटेन करती हुई जा रही है। और फैनी का सिर्फ एक ये फायदा भी रहता है कि आप स्प्लिट पुश बहुत इजीली कर सकते हो, डिस्पाइट इसके कि यहाँ पे सलीना इतने अच्छे खासे एबल्सा एरो लगा रही है और उनकी तरफ से एक बढ़िया अप्रोच आ रहा है। लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं रहने वाला कि आपके पास कुछ हीरोज नहीं है जो स्प्लिट पुश कर सके और उसको ना मेंटेन कर सके। आपके पास हीरो जरूर है, लेकिन वो लेट गेम की तरफ है। लेकिन इस समय देखिए यहाँ पे लॉर्ड वो मिल जाएगा दोबारा से गॉड को, और ये बढ़िया एंगेज यहाँ पे कुफरा करने की तरफ जाएंगे, समान पोस्ट लगाते हुए टीम ऑलरेडी मौजूदा है। ये देखिए लगातार डैशेस डैमेज देंगे कैट यहाँ पे पेड़ो, और उसी के साथ दरशाई एक और बंदे दरशाई करेंगे बिल्कुल, और दो टाइम यहाँ पे दरशाई हो चुके हैं, मैं मौजूदा है, पीछे आएंगे बीएमआई का इस्तेमाल करेंगे, टीम की तरफ से लॉर्ड आएगा और आपको जो है लेन क्लियर करने के लिए जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और यही मैं बात कर रहा था वो लेन क्लियर की, कि आपको जरूरत पड़ती है लेन क्लियरिंग हीरोज की। आपके पास हीरोज आपके टैंक की ऐसे हीरो अच्छे खासे हैं, परंतु कितनी देर तक मेरे दोस्त दूसरी साइड भी तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे बसते हुए अरे समान फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कोरोना टैश लगाई है, पीछे हटे हैं, बचेंगे, लेकिन मिड का टरेट फिर दोबारा से खड़ा हुआ, अभी भी सीधा खड़ा है एक एचपी पे ही, और वो टरेट को लेने के लिए ना टीम जद्दोजहद करती हुई। लुकिंग एट दैट, बॉट साइड से लॉर्ड तो डिफेंड हो चुका है, यतोशी फाइनली थोड़ा फार्म लेते हुए, बट मेरे को लग रहा है येलोस्टोन ना वो अभी भी वो अर्ली गेम वाले मेंटालिटी में अटक गए हैं, क्योंकि वो खेल ऐसे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सेलिना अकेले पूरा कर लेगी काम, बट वो हो गया है वो टाइम, क्योंकि फैनी पे फार्म आ गया। और अब देखिए वो क्यों गए थे किल लेने के लिए, फैनी जो अभी तक सेलिना से तंग हो चुकी है, अब पूरा उसको एकदम वन शॉट कर चुकी है अपने कॉम्बो के साथ, और अभी 3 डाउन है, सिर्फ कैल्विन और यतोशी। हाउ विल दे डिफेंड द बेस? तीनों लेन से मिनियंस आ रहे हैं, अभी तो गारंटीड तो आपके बॉट टरेट से सारे गवा चुके हो, यू विल लूज ऑल द बॉट टरेट्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्या आप इनहिबिटर बचा पाओगे, क्योंकि 5 सेकंड बचे आपके टीममेट्स आने तक, और वो 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब तक आपका मिड इनहिबिटर, सबसे इम्पोर्टेंट इनहिबिटर, कुछ सीज हो चुका है। जी एग्जैक्टली। और मैं इसी बात की यहाँ पे जो है ना मैप कंट्रोल की बात कर रहा था, वो लेन कंट्रोल की बात कर रहा था, जिस तरीके से टीम ने यहाँ पे सीन रिक्यूम ने ना वो दिखाया है, वो टीम फाइट उन्होंने ली, वो किल्स उन्होंने दिए अर्ली गेम पे, लेकिन वो लेन उनकी तरफ से वो लेन प्रेशर लगातार मेंटेन रहा, जिसके कारण वो धीरे धीरे करके ना एक के बाद एक जो टरेट्स है वो गिरे। स्ट्रक्चर के ऊपर आपने बहुत बढ़िया बढ़त हासिल कर ली है, किल्स आपके पास कम है लेकिन टरेट के ऊपर बढ़त हासिल है। और ये गेम जो है ये हमेशा मैं समझाता हुआ चलता हूँ, ये गेम जो है किल्स का नहीं है, ये गेम जो है ये ऑब्जेक्टिव्स का है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इस समय सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे टीम सिंधी क्रेम का इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास हीरोज ऐसा है ना जो बोल सकते हैं कि जितने भी आपकी जो मिनियंस है उनको इजीली मेल्ट डाउन कर सकते हैं। उनके पास गॉड है जो पीछे रह के मिनियन क्लियर कर सकता है, उसके साथ मिस्टिक गज है, वहां पे उनका अल्टीमेट पड़ेगा। फैनी मौजूद है जो स्प्लिट पुश कर सकती है। फिर उनके पास यहाँ पे डीपीएस के तौर पे और एओई के तौर पे यहाँ पे क्लॉड मौजूदा रहेंगे जो काफी अच्छा खासा एरिया कवर करते हैं, एक साथ मिनियंस को इजीली यहाँ पे जो है खत्म कर सकते हैं। और येलोस्टोन की बात करें ना, वो इसी चीज में थोड़ा सा पीछे है, उनकी तरफ यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल के लिए सिर्फ यहाँ पे मौजूदा यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले
फाइट यहाँ पे इनिशिएट होती हुई देखिए, फिर दोबारा डैश का इस्तेमाल करते हुए निकल जाएंगे, ग्लू का कोई फायदा होने वाला है नहीं। अब उनको यहाँ पे बचते हुए निकलना पड़ेगा, अल्टीमेट ऑलरेडी आपने वेस्ट करवा दिया है, लेकिन दूसरी साइड पे फैनी वो मौजूदा रहेंगी टर्रेट लेने के लिए, टर्रेट के ऊपर प्रहार होता हुआ, और आई थिंक बॉटम लेन का टर्रेट जो है वो ले लिया जाएगा। कोशिश यही रहने वाली है, केबल का इस्तेमाल करते हुए निकल जाएंगी, और यही सी की मैं बात कर रहा था। ये देखिए स्प्लिट पुश आ चुका है ऑलरेडी, बॉटम का टरेट जा चुका है, अब टीम जो है यहाँ पे बॉटम का टरेट बचा निकल जाएगी, इसी समय जो है टीम जो है यहाँ पे वो लॉर्ड ले लेंगी। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है इस समय, और येलो स्टोन इस चीज को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उनके पास इस चीज का आंसर नहीं है, क्योंकि रोटेशन इतना फास्ट उनकी तरफ है नहीं, उनके पास ऐसे हीरो है नहीं जो अकेले सस्टेन कर सकते हैं, या अकेले जो है लीन क्लियरिंग इजिली करके कर सकते हैं, जो बैलेंस आउट कर सके। और वो देखिए फिर दोबारा से टॉप लेन की तरफ वो प्रेशर बनाया जाएगा एमएम की तरफ से, फार्म ऑलरेडी उनकी तरफ से आ चुका है। स्कोर की बात करें तो 104 है, अभी तक एक बार भी धाराशायी नहीं हुए। बिल्कुल यार, आई मीन बहुत बहुत परफेक्ट गेम प्ले आ रहा है हमारे साइड से, एक्सपेशली एक्सनॉक जैसा पता है, नॉट अ सिंगल डेथ सो फार। अभी फाइनल स्लैश आते हुए ब्लेजिंग डुएट यूज किया गया है, डॉट ऑफ डैमेज कमिंग इन, मेंबर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उकियो वापस बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव खेलते हुए वो कंसील प्ले यूज करते हुए, क्या ये बेस एंड कर पाएंगे? लास्ट मिनियंस समाज हो चुके हैं, क्या ये डिफेंड कर पाएंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 मेंबर जिंदा है और दोनों टैंक है, और उसके साथ येलो स्टोन का जर्नी हुक गेमिंग शोडाउन से उनको अलविदा कहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे अलविदा जरूर कहना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके का गेम प्ले आया यहाँ पे, अर्ली गेम डोमिनेट किया था, अर्ली गेम बहुत अच्छी तरीके से निकाल रही थी येलो स्टोन, वो फाइट के ऊपर उनका एरो यहाँ पे सलीना का बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था, लेकिन वो लेन्स वो ऑब्जेक्टिव आपकी तरफ से जा रहे थे धीरे धीरे करके, आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव है, आपके सारे जो स्ट्रक्चर्स है, वो आपके हाथ से जाते हुए गए। फिर बात करें वो टर्टल की, वो बात करें वो लॉर्ड की, वो आपके हाथ से आता हुआ गया। ये देखिए मैच हाईलाइट के समय यहाँ पे लॉर्ड बेहतरीन तरीके से खेले, फाइनेंशियल का इस्तेमाल किया, अंदर की तरफ गए, डैमेज दिया, फोबियस वहां मौजूदा थे, उनको रोकने का प्रयास अभी भी टर्टल लेने का प्रयास करते हुए दिखे, यहाँ पे जरूर मिला था टर्टल, और यहाँ पे फैनी को पकड़ा, डैमेज दिया, उनको फिनिश ऑफ किया। तो ये अर्ली गेम पे जो बढ़त थी वो उनकी अच्छी खासी चल रही थी, और अच्छी खासी मेंटेन करते हुए चल रही थी, टीम बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही थी यहाँ पे। लेकिन उसी के बाद धीरे धीरे जो है ना गेम वहां से चेंज होता हुआ गया, धीरे धीरे जो टीम है उन्होंने अपनी पकड़ बनी, और यहाँ पे येलो स्टोन को पीछे छोड़ा, जिस तरीके से ये फाइट्स यहाँ पे होती हुई जा रही है। बहुत कन्विंसिंग विन, और जैसे शिंद्रा आपने बताया था कि सेलिना का माइक्रो एकदम परफेक्ट था, जैसे हमको दिख रहा है हर हाईलाइट में सेलिना एमवीपी थी। बट प्रॉब्लम क्या है ना, 5v5 में सिर्फ माइक्रो नहीं, आपको मैक्रो की भी जरूरत होगी। और मैं बोल रहा था शुरू में कि सेलिना इतना कैजुअली और रिलैक्स खेल रही है जैसे वो रैंक गेम खेल रही है, मैं बताया था। और यस, प्रॉब्लम क्या हो गया, येलोस्टोन वो शुरू के किल्स देख के थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल हो गए थे वहां। आई थिंक वो एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, उनको लगा था कि हमने फैनी को तो बहुत बार मार दिया है, अब फैनी कुछ थ्रेट रहेगी नहीं। बट वो फैनी पे ध्यान देते वो भूल गए थे कि क्लॉड बहुत आराम से फार्म करते हो रहे थे, उनको फुल फ्री फार्म मिला था, वो अपने एक साइड से लेन पुश कर रहे थे, और फैनी रिस्पॉन होने के बाद दूसरे साइड से टरेट्स पुश कर रही थी, और ये सारे मेंबर्स येलोस्टोन के 5 क्लम्प करके किल्स के लिए ढूंढ रहे थे, और तब तक उन्होंने देखा कि उनका पूरा टरेट्स ही पुश हो गए सारे आउटलेन के। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है आपने एक्सप्लेन किया। और लेकिन आज हैवी हार्ट के साथ टीम यहाँ पे जो है येलो स्टोन को जाना पड़ेगा, और दूसरी जो टीम है यहाँ पे आज वो बहुत खुश होने वाली जिस तरीके से उनका गेम प्ले आया। और भाई यहाँ पे ना मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ, टैंक का जिस तरीके से इंगेज था इस गेम में, यानी कि कुफरा उनकी तरफ से जितनी भी अल्टीमेट आई है भाई वो काबिले तारीफ। परफेक्ट, सारे लाइक परफेक्ट थे। ऑल सारे के सारे ट्राइंड रेंज हर समय वो उनकी तरफ से लाइक जो इनिशिएट हो रहे थे, और उसी चीज पे यहाँ पे एमएम ने जो है वो बाजी मारी पीछे से डैमेज देते हुए। और बीच की भी बात करूं उनकी तरफ से बेहतरीन डैमेज आया, लेकिन टैंक ओवरऑल मेरे लिए जो है यहाँ पे एमवीपी बनते हुए जाएंगे। आपको यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा तरीके से आपने गेम प्ले किया। लेकिन उसी के साथ विजेता जो है सिर्फ एक ही बनता है दोस्तों, और यहाँ पे जो इस समय टीम जो है यहाँ पे वो विजेता बन चुकी है इस मैच की, वो सीन दी रिक्लेम जो है वो रहने वाली है। लेकिन उसी के साथ जो है दूसरा मैच जो है वो यहाँ पे आने वाला है बहुत ही जल्द, आपको मिलेंगे दूसरे मैच की तरफ।
मैं था कास्टर आपका छिनराव, मेरे साथ कास्टिंग कर रहे थे बालडूडू। अभी लेंगे आप सभी से इजाजत एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में। Cracky. 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 Cracky.
Cracky. Cracky. Cracky. Cracky.
Cracking. 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 Cracking.
Cracky. 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 Cracky.
Cracky. Cracky. Cracky. Cracky.
Cracky. Cracky. Cracky. Cracky.
Cracky. Cracky. Cracky. Cracky.
cracking. 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 Cracking.
Cracky. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back once more to the Hook Gaming Showdown. And we're going to be heading to, of course, another great game on our hands tonight. Of course, before we obviously begin, we're going to be introducing myself. Myself, of course, I'm Ray, and I'm going to be joined by Debbie right here. My twin, look at that. She literally has the same pose as me, even got the black Yeah. blazer almost done, but Twinny wore the white one too. I guess because she's white skinned, but jokes aside. We're of course looking forward to the match between Eyes Wide Shut, very well-known team in the community right now. And if even if you don't know their team name, you will definitely know the players. And on the other side, we have 75% attendance, something that I never achieved in my college life and never will, since I've graduated now. So let's see if they get. I would love to see if one of them gets 75% team-wide participation just for the jokes. But yeah, anyways, Debbie, how are you feeling tonight? I know I should not ask that, but hey, just for the professionalism, eh? Hey, let's go. Yeah, I would say 75% attendance is something I have never achieved because I'm Hey, gonna be flexing goaded, here. Hey, dap me up, I'm gonna homie. be flexing here. When I was in 10th grade, I had 100%, man. Come on, applause. Hey, man. I'm kidding. I Let's I go feel like when it though. was not necessary, I actually went. I actually went 100%. But the moment they started Yeah, requiring, yeah, you gotta go 70. Yeah, screw you. that's what it's all about the semantics. Let's go though. Ice White Set versus 75% attendance. They hate glue. Ice White Set, I swear, they hate glue. But for a 75% attendance, I love the The fact that they squad went logo for looks the like a glue. wait. The first time I saw this squad logo, Yeah. what in the brain rot is this? Ray's gonna love this, and I think you might. Do you know the It's way? so rude. It's that meme. Do you know Yeah, the that's way? what. Its eyes are big. Yeah, about that. Yeah, we have to forget. I don't really like the logo. If it was up to me, it would have been a completely different logo. But Who chose it? yeah, it's I would think it's Fam because he's a kid. It's no. justified. Who? It's been here before Fam was here, so it's So older than grown Fam. as adult that did that. Okay. Yeah. That's yeah. Let's just say Insane Place was involved here. So yeah, you gotta know about that. Okay, we're having fun, man. What the? Yeah, the point of a game and a competition is, of course, about having fun, but at the same time, it's about the spirit of winning. And obviously, this is right now day two of the round of 32. Tonight is going to be the last day, I believe, because, of course, 16 teams yesterday, 16 teams today. So we're going to be heading towards the round of 16 pretty soon as well into tomorrow. And today it's the BO1 series, elimination rounds all, and they got to go all in if they wanted. The Zushin, the Zatian, and along with the Akai, sorry, not the Akai, the Baksha, Fred, and all of them are going to be left out open. And what does EY, Eyes Wide Shut, EWS, EYZ, what do you call it, Debbie? EYZ because it sounds posh. It's not posh, Oh, but yeah, okay, Eyes, Z. IKCA. Eyes. All right, Eyes. that's the pronunciation. But I don't know why is 75% attendance banning up the Paquito? Because let's be honest, man, to Lisan Al Gaib, you don't want to see him on the Paquito. It's a nightmare for the team. Um, before we came into this game, I was actually trying to see if the Guinevere will appear. There we go. Dreams Purple Haze is never gonna be disappointing me, man. Good kid, good kid. Listening to your elders. Yeah. Makes sense, eh? I Mhm. mean, it's the tournament lobby, right? Right? Yep. So You know he why he's got the picking it access. up?
Yeah, we know it. Can we get a Chow and a right? Dairo? Yep. Oh, Chow can come through from Lemonade, so they can go that. But other than that, honestly, onto the professional side, I think the Guinevere first pick is still very valid. But now 75% attendance, they can pick up the Jushin maybe, and even the Claude, right? Because those two have been really, really good into the current patch. The Claude, even though it's nerfed, because of the way that he can hold on to the lane, it's not never been ignored. Yep. That's the thing about the Claude. Metas passed by. I think the only season actually Claude was not in a meta actually was the season Leslie got her first ever mega buffed, where she Meg, got her true damage. uh, And that was the uh, only season picking up Claude was a mistake because everybody was spamming the Leslie. uh, That was the only season Claude was not active. Just like how Chow had one yeah, season where I believe Phobius was released and nobody mm. could play the Chow anymore. So yeah. Oh Only when like yeah. the biggest counters came by, I believe these two heroes were like kind of Mm. completely away from the meta. But Claude and Chow, and I believe even my wife Izushin, she has been the meta ever since she released. But to Yep. be fair, she is, I guess, what you would consider a little bit of a new. Many people still consider her Mhm. new. Well, for myself, she's very new. For me, she's always gonna be new. But yeah, it does feel like we've been together for a long while now, isn't it, Debbie? Jokes aside, actually, Yep. she released in 2024. Damn, actually a Oh, long while. what? It's been a while then. Time flies, man. But who else is gonna be flying? That's gonna be the Matilda. I don't like the combination of a Matilda and a Jushin because with the Matilda you don't have the follow-up damages, right? And the setup from the tank, there's nothing. But now the Baxia is completely left open. But do you want to play the Baxia here against the Gore, against the Guinevere? The answer is 75% attendance. They are very brilliant, I would say. They still pick up the Baxia Debbie, here. It's still completely fine. I believe they thought the Baksha is gonna work 75% in this game. All right, against the Guinevere or even against the Gwort. But Loki, it's gonna be good against the Harris, right? That's a fam's favorite hero, by the way. Cannot stop playing that hero, and he looks like it as well because they are both small, Small, small small. dudes. Leonin, He's a little kid. that's what. And fam, I guess at your age I was also playing MLB. We had the dream of becoming an esports player. Sadly, we did not Mm-hmm. have any opportunities. But hey, you got it, No, man. So you're doing pretty got good. it. Hey, Mm-hmm. enjoy it, man. Enjoy this youthful life of Enjoy. being an esports player. Don't give up, mate. And of course, you might hit the big leagues soon. I mean, you are kind of in the big leagues, but hey, we don't talk about that for now. uh, We gotta focus on the Hook Gaming Showdown round of 32. And right now, with the draft coming in, they're going to be banning out the Kaja. Pretty much makes sense. The Kaja will pose a massive threat to Zuzushin and even the Matilda because you can catch the Matilda yeah. pretty easily. So makes sense. So then we continue. Yep, exactly. I was also watching some screams, and then I thought maybe the Kaza would work really well against the Matilda, right? With the rising popularity of the Matilda, the Kaza with the suppression can always work, right? Why the Kalea doesn't work is that she can bring the Purify, so the Kaza is the next best option other than the Franco, and the Franco doesn't really have that much of a 75% hooks, right? It's more of a 25% accuracy onto the hooks for most of the teams here. But I like that they went away the Moskov here from the side of Ice White Set. They really do know that for 25% attendance, they kind of need something into the other lane that can play with alone, and they ban away the cloud as well. So they are kind of denying every possible hero that can come through onto the long lanes. Okay. Double marksman being and then coming in from the side of EYZ. Damn, they really want Fem to shine. Yeah, They're not even making it even like vague or anything. Like they're not being they subtle. just go away. They're like, Mm-hmm. yeah, Fam is the carry. What are we gonna do about it? There we It's go. gonna carry. Yeah. What if he doesn't? So 75% attendance. They need damage, right? I don't mind I don't mind the Benedetta, if they can play the Bene. But then again, the setup's definitely gonna be rare. They don't have that much amount of marksmen. Oh, hello. I kind of Can you jinxed. hear me? Can they hear me? Hello. 75% you, attendance. you get that reference, right? Mm-hmm. Hello. Is it me? Oh wait, the other one.
Okay, let's move on. I'm Okay. sorry, I'm laughing. I'm gonna continue, but yeah. Anyway, Are we done? maybe. Okay, Sora. May- How do you feel, Sora? Sora Guinevere. Sora is good. Sora is actually one of the only lonely EX players that counters out the Zushin Lonely. completely. Why? In the lightning form, Oh, dude dishes out so yeah. much damage, he can actually take out the Mhm, Zushin. And guess what? That form, when he's going aura, aura, aura punches on it, mhm, he's mhm, completely immune. Zushin, once in a 1 versus 1 scenario, mhm. literally cannot do anything. And Sora doesn't even have to commit to any damage build. The damage is just insane. Yep, and like I always say, Sora is a very versatile hero. You can play together with a tank jungle or with an assassin jungle as well. Last pick on to 75% attendance is definitely going to be the Bruno, who is starting to rise to popularity, right? Because we have seen it into the MS3 as well. Very well played by IZN. I'm going to mention IZN wherever I go because, yep, you gotta know why I do that. But yeah, uh, one thing I would like to say about EYZ is that they have a Benedetta Kryptonite. Their Kryptonite is a Benedetta. They find it tough to play against this hero in particular. I don't understand why though. Benedetta is also the only. I'm gonna just repeat myself again, yeah, but the only lonely. What is this thing? Trainer? Yeah, the EXP laner that Trainer? actually counters the Pakido completely. She's the only Yeah, one that actually makes him look like completely, really yeah. bad in comparison. It's I think it's more like it's not into the laning phase, right? It's more like the rotation speed, that the Benedetta does so much better when in comparison to the Paquito. So it's been rising, right? Even though the Bene will be so much squishier, you're more mobile if you talk about it. So that can come in handy for the side of 75% attendance. But then again, they only have a sole frontliner that's gonna be the oh my goodness, this is what I was talking about, Ray. Look at that. Absolutely, we go in, and okay, she also has 2 outfits, right? Oh, makes sense now. That's why. So That's I why. saw in MS3, I saw she was wearing the blue pants, which is not the iconic one. The iconic one is where Yeah. she's wearing the brown ones. But yeah, we got the There iconic one, we go. man. But anyways, we're in the land of dawn, and it's gonna be a nice little game we're gonna be having between Eyes Wide Shut and 75% attendance. Let's see if they make it to 75% of the game, or is it gonna be over before we even hit 50. So with this, we are really starting pretty strong. And let's Okay, go. engage. Oh no, Purple Haze, that's not really a good sign for you to be there, bro. Moon, not really having the best time of his life, getting better and getting taken down. Lemonier as well has to flicker away. So a very good start from the side of 75% attendance. One of the reasons is why Kyoyai is there onto the top lane side. We'll never know, but they got a kill out of there, so it's still worth it. Oh, you can read Korean, right? Oh no, that's not Korean. That's Chinese. Chinese, but a complicated one at that too. I don't know. Yeah, it's Chinese. It's Chinese. Okay, Anyways, Chinese. QI. I'm gonna be honest with you. I won't be Why? surprised. I won't be surprised if that word. Oh, Benny, what is that? Why so deep? But Matilda is gonna Ah, be the clutch and save her away. And they actually got a kill. Of course, the one that we saw towards the other side. But that could have been a close one to be equalizing it. But anyways, right now, Purple Haze, aka Saramunda, is right now Saramunda. traversing towards, I believe, the turtle. I don't think he has a good chance considering he's just now getting to level 4. Bakshi is pretty much ahead in the EXP department. There's already an ultimate for Muriel, right? So that will definitely be a combination that they would want to go for here. This is the weakness of EYZ. So let's see what they do here into the turtle fight. Yeah, and I'm waiting for it right now. Oh, big turtle fight. Purple Haze still gets him with retribution. Invocator right now gonna be getting a kill as well. Purple Haze captures another one. Sora with the 1 HP, gonna be going back. Zushin with the Crimson Beacon does not get a kill. Just did not have the enough damage. Fam joins in last minute, but not able to really provide anything. But regardless of that, EYZ, they get 2 kills for none, and they even get the turtle.
With the turtle being taken by the side of EYZ here, this definitely will be helping them quite a lot because Fam, as we can see, has been frozen into the lane. But he has been able to get onto the mid lane side as well, right? This will not be good for Invoker, but it's still going to be good for Fam because they are already trying to play for Fam. With the combination that can come through with the Guinevere and the Sora, this is what they are waiting for actually. But a bit onto the bottom lane side, the rotation is coming through as well. Free onto the top side, onto the other hand, first bill, we might eventually be seeing the concentrated energy for what is this hero's name? I mean the skin in Chun-Li. Purple haze is Yeah, on yeah. the Chun-Li. skin. Chun-Li. Chun-Li. Yeah, that's right. It is Chun-Li. Muscly women. I'll tell you why she's very famous. But anyways, 2 Okay. for 1. Looking at the randomization, of course. Oh, bottom lane though. Guinevere right now trying to chase that, trying to stack up the Violet Requiem as much as possible. Gets it. The knockup misses it just a bit. And she's going to be able to retreat with the ultimate. At the same time, gets a little bit of a taunt right there. Sora going in very aggressive. Doesn't get it, but on the other side. Fam gets a kill. Hey! Listen, Gab. What was that? But regardless of that, they got a kill onto the bandit. Why did it dive in with the low HP again? He thought that he could farm an aura there. Stop it, Emilio. Stop it, son. Yep, I'm kidding. But other than that, that was a very slick move coming through from Kuai. I would say he baited out 2 of the flickers, the ultimates from the side of EYZ there. It's not really recommended to go for the contested onto the banana. What, mid lane? Wait. Okay, that's gonna be a massive engage coming in from the side of 75%, and hence they want the 75% battle. Can they make it? Vendetta comes in with the ultimate, misses it out a little bit. Has to use a wrong dash. You're gonna get punished, getting taken away at the same time. The Zushin gonna be able to pick up the target. Turtle is still gonna be going in. And here comes the Mystic Gush. Damage is there. Purple Haze once more with a good steal. And right now, he has to retreat. Terrible. T. Bunch of eyes. Okay, alright. Onto the other side, I would say that Vam has been actively joining onto the team Vice, right, which is making it so much easier for the side of Ice White side to go for the engages because they know that the Harris is made for the fights here, and they know that the rotation will be so much earlier for him with the solo kill that he was able to get up to the top lane side as well. That kind of helped them to go and maneuver around the turtle fights. Even though they have been losing out on bodies, they can eventually win it out because there's a damage onto their hands. 1v1 though? Nah. It just did not happen. Top? Top lane though, might be a kill right there. Bruno's cornered. But the shield is gonna be there to save, as well as the Flask of Voice is gonna be on point as well. Rapid to Dryad use up a little bit weirdly, but still is good. Oh, okay, Purple Haze gets a kill into the mid side. Takes out a Baxia. With the gourd, I believe that was a Mystic Gush used. Yeah, Mystic Gush melted the gourd, and Purple Haze just took away the kill. Listen, Elgab has also used a flicker on the bottom side. Okay, Wow. Bandit forced the flicker away. I mean, the Benny is doing good on the 1v1, but anytime she's coming into a team fight, she's just getting taken away. That's gonna be the power. Oh wait, jump? No ult. Okay. Okay. Oh. Quite safe, I would say. But if Purple Haze has that ult, it could have been so much better for them to go for the picker, but it was fine. And Jojo, though, on the other hand, trying to give out a bit of a vision here and there. It's a Matilda after all. She has the wings, she can fly away when given the situation. But on the other hand, I would like to say that if the Thora, right, Lisan Al-Gaeb, is... he should be refraining from going for the 1v1 situations, man. He could just clear out the lanes and try to go with the combination with together with Purple Haze and Invoker. That could eventually help them to try to go for those team fights, which they will be able to win it up because they have a Balearic after all onto the hands of Yusa. But other than that, it's still going to be definitely fun because the turtle is going to be onto the bottom lane side. Sky Piercer for Jui, which will be definitely sticking it out if we have the chance to get the kills. Agree with you on that, Debbie. Right now we're heading towards the turtle once more. Let's see if they are able to capture it one last time. But oh, there's going to be the clouds coming in, roaring into the map. 5 men right there. But this time Terrible T actually gets the turtle like we predicted. And oh, with that, Purple Haze pretty close by. 1 HP, has to retreat. Mystic Gush going to be popping in. But hey, no damage? What happened? Suddenly their power spike is gone. Benny coming in, she wants to kill, but a little bit too deep. Roadblock getting triggered away as well. Does a Matilda save her? I think so. Purple Haze actually gets taken down, but shut it down. Double kill secured by the Zushin.
At the same time, might be a triple. Yes, it is. Zoe gets it. And right now, suddenly 75% attendance. They suddenly look 100% equal to the side of Eyes Wide Shut. What happened? Is Fam AFK? Oh man, I don't understand what is happening to the Harriets here. Maybe his current is gone, living in an isolated area. I understand. But yeah, they need to have a good comeback because now 30 stacks already for the hands of Jui, which is definitely going to be a good sign for Jushin here. No Purifier though. If Purple Haze is able to get a kill, a jump onto him, he's definitely going to be getting taken down. But Invoker though? Oh, that is a good stun committed. They see the Benedetta was a little bit of an out of position. Immediately get it taken out. Hey, look at the scoreboard, 6-7. Oh my god. Okay, 7-6, but I will still accept it. But hey, Lemonade are trying to. Oh no, Miriel. That is not definite. Oh, did I just rhymed it? Oh my god, I'm pro, man. I'm just dropping bars here and there. But hey, Absolutely, you are, Debbie. You are the pro. You are the pro at the rhymes. And rhyming. Analyze does not rhyme with rhymes. Unfortunate. Yeah. I'll have to find a synonym for that. Oh yeah. No, that doesn't rhyme either. But anyways, almost 9 minutes into the game. Eyes Wide Shut, of course. They face up a little bit of a backdrop. They right now are looking to bounce back. And they might just be able to do it in this Lord fight. And of course, I believe maybe they were too cluttered up together. Or what was it, Debbie? Because at the same time, God was not dishing out enough damage, I believe. Do they have the magic defenses? I mean, to be fair, Benedetta does have the rose gold right now. There we go. We take a look. Okay, Baxia. Okay, full magic defense. Makes sense. He was not getting shredded at all anymore. Matilda, of course, she doesn't really care about the damage. She can dash away. Mid-side, Rat committed into 2. There's the damage we talked about. Lemonaire captures the kill. And right now, they're going to be going back since the Benny is no longer here and posing a threat. But at the same time, there's 4 members still alive. Baxia can commit with Matilda. Matilda going very aggressive. Wow. Might be able to get something. Okay, Baxia's tire is gone right now. He has to watch out Zui into a very peculiar angle. Does she want to go in? Okay, Matilda going very deep with the Kaka and might find the angle at the same time. Purple Haze, you're getting taken away. Double kill. Not a good sign. They lose 2 of their frontliners. And right now, all they have is Vicinal Gabe, and at the same time, Fam is there. But Fam cannot dish out the damage right now. He doesn't have enough to do anything. And Baxia, he's going to be fine as well. The Radiant Armor coming in clutch at this point. Even without the Turtle's Poisons, it's not enough to shred him away. And this Lord, unfortunately, Eyes Wide Shut, they'll be losing it away. Yeah, they could have been so much better. Oh, wait. Ah! Terrible T! That's a terrible positioning to be in 50 stacks already for Jui. It's definitely going to be fine because they are already ahead onto the goal and onto the stacks as well. 75% attendance have a 4k goal lead onto the draft. But onto the other side, no stacks just yet for Mr. Invoker there, onto the crowd, onto the gourd. But yeah, they have to find something to make their way back here. Because this time around, Terrible T have basically 3 magic defense items, right? Even the Oracle can be counted. He's not going to be dying anytime soon here because he also sure know that the main threat for him is definitely going to be Fam and Invoker, and they are both magic damage dealer. And we can see, right, how important it is that he got the magic defenses. But Lemonade, 2 of the resources missing out on QI again. What? Invoker, even though he hasn't died once, I feel like right now he's been kind of missing the point, right? He's been missing a lot of the Mystic Gushes that could have been really useful. And Purple Haze, he's also having a hard time with the Guinevere. Oh, Benny almost catches the guard, but retreats at the same time, doesn't get caught up. Oh, here comes the Sinclair Gab, gonna be able to maybe catch up anyone, but Bam going in very deep, but the Matilda gonna be coming in clutch. But right now, the one that will get caught, oh, Belric with the very heavy flicker, gonna be able to survive it. Score is 8-8. They pull up a really good defense, but 75% attendance. Wow, they're doing really good with one of the teams that are right now, of course, in the big leagues. They don't, they are not the big leagues if they are struggling like this. But 12 minutes of the game, that's gonna be the Holy Crystal. Yeah, I can take a jab, man. Come on. You can. You ain't gotta be a Paquito to land a jab.
They banned the Paquito, so we have to become one. But other than that, Terrible T, he's like, I'm gonna commit all on to the Massive Defense. I don't need the Dominant Zeiss anymore. But I think he might be getting engaged upon because he's actually low solo. Okay, right after Drive popping in, but the rest of the members immediately popping in as well. It's another gap connects into two. That might be one. Mia Kumar gonna be kicking away, but Bender onto the back end, looking for to take down the Gord. Might be able to do it. Yes, she does. Shut down, secured. And with this 9-for-9 scoreboard is okay. Zushin wanting to go in, does have the stacks into everyone, but oh, it's gone. But suddenly it is here. Does she get a kill? Skypiercer, it's not triggering. What? He survives it, and with this Fam actually the one getting the kill. And right now Zoe no longer has the mana to respond. The skill is in cooldown, but going back as well. On the other side, Benny. What was she looking for? Who was she diving? I don't get it. She was diving. She was diving onto Lisan Al Gaib because of his name on it. He was diving. He was 1 HP. Man, come on, that was a very good dive. And Why did Zushin's Skyburst stack work on Listen El Gab? Like because he's because he's Lisan Al Gaib. Oh man. I like this justification from Debbie. Sometimes you don't need the answer. Just say like, oh yeah, it's because it's Cory Cutie. Oh, it's because it's Listen Al Gab. Oh, it's because it's yeah, that's the explanation. Great analyst. Right? Goated one. But towards the top side, right over the right, connecting to two. Hey! Okay. That is a very rookie move. Hey, I do not like that purple haze. Why would you get knocked up from the Lord? That could have been fatal if Terrible T was nearby. That would have been very bad. I don't like Terrible that. T. I love saying this name, Terrible T. But onto the other side is Neil Kumar as well, right? You gotta know the names of these players, man. It's so catchy to say it as well. But I think I've seen these guys play into another tournament as well, and they have been playing so good. And now the lineup that they have is very rate baited, right? Because they are having all the seals here. Fam trying to wait. He's taking a lot of damage from Terrible T onto the Basha, but ult not used just yet onto the Retribution here. So they have one more lot to defend here this time around. So Lisan Al Gaib has to be careful because he should know that he's been the prime target from the side of 75% for some reason, and that will eventually be not working well for the side of EYG there. But look at the jump. Okay, we are getting the core coming up. Hey, Petrify! Legendary secure Invoker falling down. Finds himself in a compromising position. With this, they get the proper kill. Of course, they are able to shut down Invoker twice in a row. That's something we actually don't see that often. Invoker has good positioning, but I feel like in this match he is being fouled in positions he doesn't want to be in. But to be fair, Benedita is just that slippery. She can get into the back end without much obstruction due to her immunity and her constant dashes. And right now, since the god is away, they are in a passive defensive side. Oh, wait. What? Eyes wide shut. They don't have a single turret? What? Hey, what happened to your macro? Do you remember what I said when I went to the draft where they are struggling? For some reason, they always struggle against Ebene. There you go. No turret takes. That's what they do. No turret takes whatsoever. So this time around, 75%. Yeah. They're kryptonite. So there's a chance we'll see Benedetta bans coming in future. I hope so. You know, because this is a game after all. You don't have the ego draft. Just pick off the heroes that you don't want to play against, and you cannot play against unless you learn how to play against it, right? And that takes a lot of time for teams as well. You know, trying to wait. Oh, they commit completely. Baksha sustained a lot, but still, regardless of that, there's gonna be the ultimate popping in. Wrath of the Dryad use. And decided 75% attendance. They are not going to be attending this fight. They're going to be going back. And right now, EYZ, they also, obviously, after picking up the kill, they are just in a position to go back because 5 ultimates used, man. Fam has a low cooldown, so he can get it back. But rest of the members, that was like 4 ultimates completely used just for one guy. That is how tanky right now Terrible T is. It took efforts of everyone combined to just burst him away. And I guess that's the thing. They don't have any physical damage. Yeah, that's one. Only on Lisan Al Gaib, and he hasn't been building out the damage items, right? It's only the War Eggs.
Yeah, he can do that, but he has to be playing with the team as well. But you know, very cunning of the Rebel T to go for the Winter Crown again. I think I like that because he have a way to survive, right? When you have the Winter Crown and he gets the Winter Crown on, there's always gonna be a Matilda that can help him out from the iffy positions here. Kawhi, on the other hand, will be going for the BOD as well. He wants to go one shot into the backlines, and he still have ways to survive because he have the Rose Gold Dog, and that will always be the second hand savior that he needed. Conceal play. Ball knowledge. Ball knowledge. Ball knowledge. Yeah, then we got the ball knowledge. Anyways, right now we're gonna be getting a fight pretty soon. And sorry. Oh, Baxia gonna be getting the god almost. No, sorry, Fam almost. But on the other side, QI gets the god again. This Bennett is purely the kryptonite. Zui over here as well, getting a kill. Might be going for a double. Might make it a double. Belleric getting caught up. Skype. Why is there a Skype trigger like it? He's 80 stacks. Jui. Oh wait, it's gonna be a bit around 70. Godlike, he got godlike, he got to already. Oh, 80. Okay, there we go. He's got 80 stacks. Definitely beautifully well done by Jui. But yeah, this is definitely gonna be a free lore yet again. 80 minutes already. Evolve coming through here. It's gonna be a little bit tough for the side of EYZ to eventually defend this one. Even though Fam is onto the Harris, I think he's struggling with something of a current issue here. So other than that, they need to play it safe here because the engages that they have been doing is a really not the engages. The formation that they have been having has been broken a lot by Kuyai onto this Benet. So they have to be very careful here. Look at the ult. Yeah, I agree with you on that one. And I'm gonna be honest, if they lose this one, it's definitely because of the Zushin, man. Not because of the Vendetta. Not because of the Vendetta for sure. But yeah, Vendetta has massive amount of bounty right now. She is... Wow, that's some good immune right there. Yep. Purple Haze, Winter Crown. Yeah, okay, yeah, he's dead. Hey, there's no way. Oh, good set. Zushin gets caught. Fam gets the kill, makes the clutch play they needed. And right now with the double kill, this is gonna be a good defense right here, and they will go back. I'm gonna be honest. What happened to Bruno? Like, buddy, it's 20 minutes. When are you going to do something? I'm gonna be honest. I've not seen him do anything. But let's see the builds here, though. Then we will be able to know. He got the berserkers very early on, but for some reason he haven't been able to stay long to the team fights that he will be able to hit the bubbles on time, right? More onto the other hand, Fam has been active onto the map, right? He's the one who gave out most of the damages from the side of Ice White Set. And that's definitely going to be doing so much better for the side of 75 of YZ here. So Kwai onto the bot side, trying to defend it, will not be able to defend it anymore because this time around Ice White Set are trying to lock him down. They're sending Purple Haze to play the long lanes because he's going to be the only person that can be faster in the rotation. And the other four will be playing together. Nice recuperation, I would say, because this is usually coming in handy into the earlier part, but they are a little bit late. They took too long to understand how to put the heroes on point. But wait, what happened? I thought QI stopped. Right, let's see. 14-14. Nothing like that. I would love to see a bit of an engage again from the side of 75% attendance because they have a hero that can literally get them out of iffy positionings, and that's gonna be the Matilda, right? And if they have the Matilda with the immortality and the guiding wind, they will always be able to get in a very good position here. But listen, El Gaib is gonna be spotted out. Will he die though? Almost. That Queen's Wings is gonna be able to save him out. Lord spawned in. I don't think she's in a position to make a steal. Terrible T though, man. He's taking a lot of damage from the Lord himself, but at the same time, there's gonna be the Zushin popping in. Benedict are going and taking away Fam, the main core damage dealer, and this might be over for the side of Ice White Shut. They lose their main DPS. And right now, Purple Haze, he also gets knocked. And finally, Bruno gets a kill with the footballs bouncing in. And here comes the Zushin. God is taken away. Invoker falls in. And right now, one by one, the members are getting shredded to pieces. Listen, El Gap finally gets a kill on Zui. But at the same time, could have been a close one. There's only two people standing left. Can they make the defense? Going for the Thunder Form. A lot of damage into the minions. Gonna be able to defend. Minions are rushing in. Belleric gets a kill on the QI.
And this might be a successful defense, or is it? Or is it not? No. I don't Bruno, know. he has enough damage. I think he can end it. Hey, it's over. Eyes wide shut. They have been knocked out of Hook Gaming Showdown at 75% attendance. They are going to be attending the top 16 in this tournament. I thought it was a best of 3 series, honestly speaking. This EYZ then, they're gotta be trolling at this one, but I've gotta say that they have been able to play so well into the early few minutes of the game, but then they are losing out on everything because what are they doing with the team fights? They have been playing into the team again and again, not giving out anything at all. And you have to be careful, man. When you are going against a Benedetta, you should know that the Benedetta become a kryptonite for them, and it's kind of true. Look at the highlights here. The engages were perfectly on point, but there is a Matilda, right? And Matilda is always gonna be out there trying to save you from those positionings here and there. Kyoya onto the other side, he's been the main guy, I would say, because he's been playing the long lanes, he's been playing the setups, and he was able to get a good setup against the side of EYZ again and again when they were together, clumped together, because that is the way that the electro final blow will come to, with the petrify together. And we could see the result, right? The backlines is always gonna be taken down. I think I was not expecting, of course. For sure, I think we can all agree, right? For you as well, EYZ was definitely the favorites, right? For me? No. Yeah. Yeah. Let's see. Yeah. Oh, look at the MVP there. That's gonna be the Matilda right there. It's like, yeah, she was the saving grace for everyone. He was the saving grace for everyone there. That's by far, and I think the way that Kawhi is able to dive was making it so much easier and so much faster, because Jojo was always there with the Matilda that can take her away, and always gonna be focusing onto the backlines again and again, trying to heal away. And we could see, right, all onto the team fights, even the Matilda was able to heal them away. And even when Fam was trying to go in with the demand force again and again, trying to get out the damages, they are always gonna be taken down. Because they are always gonna be alive, because there's always gonna be Matilda that helped them survive. And those were all perfectly well done, because yeah, it was amazingly well done by the side of 75% attendance. And I am gonna say that EYZ got wrecked, man. Yeah. GG's. Mic Was drop. not expecting, honestly, at this outcome from my end, but 75% attendance, they actually showed that they could be one of the rising stars in this tournament, knocking out one of the teams in the big leagues. But hey, jokes aside, ladies and gentlemen, of course, this wasn't definitely a very thrilling match, but we still have a few more. Make sure you stay tuned on Hook Gaming Showdown. We're going to be having another giveaway as well at the end of the stream. So if you do not want to miss out, you got to stick to the end. And you never know when it will end, okay? So don't just go disappear and suddenly, because matches can happen for 30 minutes, they can happen for 10 minutes, okay? Don't be smart and be coming at the end for the giveaway, okay? Make sure you support, of course, Hook Gaming Showdown into the YouTube channel. Make sure you subscribe so you can participate. Drop your IDs when you do win. So yeah, like the stream, share the stream so you can share it with your friends, and we'll be right back with the next match. Cracky.
Cracking. 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 Cracking.
Cracking. Cracking. Cracking. Cracking.
cracking. Cracking. Good evening, everyone, and welcome back to Hook Gaming Showdown Season 1, brought to you by none other than Hook Gaming. And once again, we are back onto the round of 32. This is the day number 2, and this is going to be another BO1 between two of the teams. And this time, once again, it is going to be a single elimination side for both of the side of the team. So, myself on the casting decks is going to be Tami, and joining me is going to be none other than Asuya today. So, Asuya as well as me have been casting for quite a long time, and once again we are sharing the deck, so it is an honor for me. So Asuya, how are you doing, and how was the day by far? My day was good. I hope your day was also good, Itami, and everyone who is watching us. And for today, we have Team 313 Killer on the left side going up against Team Espadas on the other side. Let's see, like both these teams are new for me. Let's see how they perform, what they pick. But without delaying any further, we will be moving on to the band phase, and I believe the bands will be same which we see everywhere. You know, Paquito, Zushin, Phobius, Marcel, might even be an Akai. You know, since Akai's pick rate has been just blowing up recently because he works really well in Glory and Immortal ranks right now, just simply because he can disrupt everything so well. So, Itami, what do you think about the Claude band so early though? Hmm. Claude has received the mana adjustment recently, so the mana is back. So, and the mana consumption thing is going to be something that is going to be quite questionable because managing it onto the early game phase is not that easy. So early phase Claude ban is kind of questionable, but maybe 313 killers have done their homework, and maybe one of the side from the one of the members from the side of Team Espada might master out the hero, and it could be one of their comfort picks. So that could be one of the decisions they decided to ban out the Cloud. But still, I believe he has been quite of an S tier pick, regardless of the fact he has received the adjustments, and he, alongside with the Harith, has been quite of a hot pick still. So Jushin as well as the studio will be following up. You know, compared to the previous patch, we are seeing some heroes that has been rising up, like you said, the Akai, and at the same time, 313 Killer as well will be proceeding with the Kaja pick quite early. So if they decided to go out with the Assassin, going out an Assassin is not going to be quite easy enough, to be honest. Well, definitely, you know, Kaja is one of those heroes who has been there, stable. He was not meta. He's not underwhelming either. He's just a great pick into the room, especially before the retribution adjustment. He could, you know, he could just steal away your red buff because the damage from the first kill was even more than the retribution. They're pretty good, even the ultimate with the suppression. So let's just see.
even if it's an assassin or even a tanky hyper. Like, look at that. We already have an Akai. Even Akai cannot escape a suppression, right? And God being the other pick. I think both of these picks are already pretty OP from the side of Team Espadas into the meta because God is way too good. Right now, the true damage just shreds everything, whether it is a squishy, whether it is anything tanky either. But the only downside is lack of escape. So he really needs a good front line, a good tank with whom he can stick around. Yeah, I agree. And a Selena pick was something I actually didn't expect to see out, at least onto the BO1 series. Selena, if the Abyssal arrows actually connect out, then it could be quite beneficial onto the early game, especially if you are trying to take down the kills onto the god as well as onto the other members. The Akai is going to be way much tanky to that, so take him out is not going to be quite easy. But they will be responding out with an Arlert pick as well, going up against a Yuzhong. So I believe Espadas too are responding quite strongly, but the Selena looks more like a comfort pick to me instead of the meta. She has been quite off onto the meta, so she's a conditional or let's say a situational kind of a pick, but it could be more relying onto the comfort side. Definitely, I myself right now I'm just spamming Selena nowadays because she is just that fun to play. But again, when against the god, when he is in his ultimate, he can't really move around, right? She can just stun him, lock him, just delete him. And just like you said, the early game aggression is from their side, and we can already see from the drop pick that Hyojong has been picked up, Gaja has been picked up. Both of them are really good, really strong in the early. Same goes for the Selena. So I think just to complement, maybe they're planning for a really aggressive, maybe invasion kind of gameplay that we will see. But for now, we have Arlott. I think once again, Itami Arlott being picked up so early because he is 50-50. If he dashes in, it depends, right? If the team can follow up. And I think for right now, God does have the range. Akai is also there. Let's just see what's the rest of the team comp because either he will die or either he'll give such beautiful sets that can change the entire view of the team fight. Right now we have Baksha as well spread getting banned away along with Moscow. Two marksman bans coming from the side of Team Killer. Mhm. And the jungler is going to be the priority bans from the side of Team Espada. So good response to be honest, but the goal as well as the roam position is still open for the side of Team Espadas. The Arlet roam is not something that you actually go on to with, especially onto this patch because you need a sustainable kind of a jungler. And if you combine the Akai with the Matilda, it does wonders, especially if you are trying to steal out the objectives of the enemy side, of course, by invasion of onto the buffs, as well as you can maybe combine it with a heavy spin as well with the guiding wind. So that is going to be one of the combinations that we would be looking up forward to. And 313 killers will be responding with a jungler as well as a gold lane pick, which is still open. I believe the Claude as well as the Moscow has been banned. So other options like the Harith or maybe something that melt up the tank. The carry could still be an okay-ish pick. Her positioning is going to be one thing that is going to be quite important for the side. And the other pick is most probably going to be a utility kind of a jungler, but okay, interesting. A Paquito onto the jungle maybe, or maybe a Oasis onto the jungle. Both are flex picks. So what is it going to be? Maybe a Oasis jungle most probably, but there you go, the Harith comes up. I believe it is Elias's gold lane. Gold lane That, because they that. already have the XP Zhang, so where will Oh, Paquito go, right? wait. Yeah, and another thing. I think I'm familiar with the name Leia. She was in MWCC, if I'm not mistaken. And she was on one of the teams, Noblesse Oblige or something. Yeah, it was Noblesse Oblige. And on to the Espada side, I see a Bistisi as well. So it is going to be quite of an interesting kind of a matchup. Leia is one thing I did notice onto the MWCC is she was a very versatile jungler. Like her hero pool was not limited. So we will be waiting it out for that. And Vice is of course onto the golden as well as valid, but the jungler could also be one of the things. So
course, the Vices onto the gold against the Harith is going to be quite struggling, but it all depends upon your positioning as well as the lane clearance. Yep, definitely. And like, I think a Nakai with a Matilda or any sort of healer for that sense is really strong. Really, really strong. I would say very, very hard to melt down. And like since Team Killer, they didn't really go in for anything, something like a carry who could melt her down, melt the Akai down. Nor did they even have anything like a Leslie, but they did opt for, I don't know, it's the Paquito or the Vices. It is the Vices onto the jungle. So I don't know. I mean, if the game goes really late, they might even start struggling because even the mid lane, the Selena, kind of falls short towards the late game unless she builds that Stallion site, which will give a bit of a true damage. But towards the late game, you really wouldn't want to go near an Akai, right? Because one heavy spin and you're doomed. Yeah, that's the thing. And if the Akai actually catches you onto that, then it is going to be, unless and until you don't have a Purify, it is not going to be quite easy to escape. And the fact is, 313 Killer has a Selena onto the Flame Shot, so that is quite interesting if you ask me. But there is the Abyssal Arrow actually connecting onto Snape, but still the damage is actually not going to be enough to take him down. But the early game pokings is already going down from the side of Team 313 Killer. This Selena needs to pop up right from the start actually. Well, definitely, if you have a Selena, that means you need an early game, really aggressive kind of gameplay. Meanwhile, in the top lane, we will of course see Arlott struggling. He really needs level 4. But then again, even when he gets to level 4, Yuzhong can just use the dragon form. Which is kind of surprising. Not surprising, okay, it's Paquito on the gold lane. Of course, Harith will be struggling. He really needs some help out there. But look at that. We already have some struggle near the orange buff. And Akai just gets taken down. And this is what I was talking about, right? The early game aggression is way too insane. Look at Twice is already level 4 with the ultimate. But then once again, it is the god who takes down the Kaja. I think a bit of an overextension coming up. Yeah, 1 for 2 actually, and Espadas were the one who won out onto that trade at least, but Snape is getting invaded quite earlier on. The Akai doesn't have the purple buff at least for now, because it was like, it went down onto that, and the turtle will be contested from the side of Team 313 Killer first. Should be an uncontested one. Oh my god, Skoy Cash with the combo. The goal lane Paquito is actually winning out against the Harith, and that is going to be the turtle taken down from the side of Team 313 Killer as well. Quite of a win trade if you ask me right from the start. Well, yep, definitely. And that is, of course, Harith needs help. He will be scaling towards the lane, and Paquito is way too insane right now. Look at And it. I don't know, because the shield is too much, the damage is way too much. Selena is out there, maybe trying for some help, but look at the Yuzhong going in after the Arlord. Arlord just dashes away. Meanwhile, off camp, once again, it is the Kaja who falls short. Meanwhile, the Harith with the Salmon Force just trying to dish out some damage onto the Selena. A bit of a poke coming up just here and there. The rest of the team is also there for the help. But I think the most plausible action for the Harith right now would be playing safe, just using the range of his first skill to last hit the minions. Meanwhile, just look at here. Once again, near the orange bar, we have some contention. Yuzhong, all the way. The stun from the god just did not connect. He's still just, waiting for some opportunity to take down someone. And Abyss TZ as well is trying to get at least one correct guiding wind to actually take one of the members down. But the god also needs the scaling, and the first item priority could be the Sky Piercer. And Franklin Olsen already has the kill. There's the heavy spin once again onto the Yuzhong, and that is going to be a trade for the side of Team Espartas this time. So able to take down the Black Dragon is quite crucial. Yep, the guiding wind coming up once again. The Abyssal Arrow does not really connect to anyone. And one another sad thing is that the Yuzhong's Petrify was kind of wasted out there. He tried to save himself, but then again the heavy spin, you can't really do anything about it unless it's the Kaja helping you out. And with this, the next turtle will be coming up pretty soon. But the trades are going on pretty even, I would say. And the map, the rotations are also kind of even. Gold lead is also not much, just 1 or 2 trades away. Let's just see what happens as the next turtle comes up. And
Looking at the goal lead as well, it is kind of skeptical at least for now. But the turtle is getting contested from both of the sides. There is the divine judgment onto flanking her ocean, just goes back, and that is going to be Snape actually able to get the kill, as well as the turtle for the side of Team Esparta's. Black Dragon form comes up. The dragon tries to go in, but still it doesn't have actually enough backup to take one of the members down, and it is going to be Team Esparta's with the better trade. The turtle as well as the jungler getting off. Abyss TZ goes in with the guiding wind, uses the circling eagle, and that is going to be a kill for the hands of Franking her Ocean, able to take down the Selena finally. And looking at the itemizations, yeah, before the Sky Piercer, it is the glowing one apparently. So Sky Piercer could be taken down, like taken later on, but it is the glowing one getting prioritized first. Heavy spin comes up once again onto Kuni. That is going to be complete combinations, and the Yuzhong will just be taken down. The Akai as well as the Arlet combination is working really well. Best TZ gets caught down. Mountain Shocker was used, but still the stun is not going to be enough. Divine Judgment was traded out. Mountain Shaker once again comes up, and that is going to be the Mystic Gush. Okay, damage is still not enough, but okay, straight both of the teams using the resources, but still Esparta's having the lead. Of course they will, because I think that the Kai card is earning them really, really good. And if you do see, I just want that Kaja to use that ultimate the suppression onto the Akai so that someone can just melt him down. Meanwhile, he's using it on the Matilda, and I don't think so. Matilda is a priority kill out there, even though she was available. Then again, does not matter. But once again, the heavy spin comes up. It will be another death, the third death for the Kaja. Unfortunately, I think today is not working well for the Kaja. But then let's just see how it goes towards the late game, though, because they do have, I would say, they do have the Vices who will be scaling, and haven't seen Paquito in much of those team fights, because when he joins, he can just flicker one shot down the cord, who is actually dealing a lot of damage for now, and that's how just he is. But once again, Yuzhong getting stunned once again, and with this, I think it's an easy kill as Arlord uses up the final slash. Mystic Crush also comes in, but instead it is the Isis who falls off in that exchange. The Black Dragon form coming up just to escape, and look at the suppression coming in once again, and Abyss will be falling in the hands of Selena, but somehow that beautiful kill coming in from the god, even though the Black Dragon was using new stuff. Kaja just trying to zone everyone away, but once again the Selena, and look at the Arlord just playing with the final slash once again, and God just falls up and takes that kill, grabs that kill. Once again the heavy spin comes up, such an extended team fight that we are able to see two heavy spins from the side of Team Killer. But then, unfortunately, Team Esparta's do have the upper hand because they did manage to get the first tier from the mid lane. Yeah, and the other thing is, like, even if 313 Killer are trying to go in with the contention, I believe the miscommunication as well as the team synergy is not matching up compared to the side of Team Esparta's, who whenever they try to engage out, at least they are getting 2 or 3 trades onto there. The Yuzhong is trying to clear out the lanes, tries to go in, but Abyss TZ comes in with a circling eagle, able to get the kill for the hands of Franking her Ocean. That is going to be a monster for the god. Already my Mountain Shaker comes up onto relapse. Arlott uses the final slash, tries to escape, and he might just be able to do so. He has the mastery. The flame retribution being used out. Selena gets taken down off camp kill, but relapse will be able to escape it out somehow with the dashes, and 313 AB as well goes down. And looking at the itemizations and everything, Paquito is the only one who has the Sky Piercer compared to all of the members, but still I believe the stacks are still not enough. So the farm is the one thing he needs to be keeping up, because compared to the Harriet, look at the goal difference. Well, of course it will be. And you know what's really surprising is no one from the side of Team Killer has gone in for the anti-heal. Surprisingly enough, because Espartas have a Harriet, they have literally a Matala and an Akai. They are in an urgent need for that anti-heal. Selena should have gone for that first, but once again, we have an onslaught onto the second tier into the bot lane, as they will be losing out on it once again. Meanwhile, they will just be retreating. And this is what I was saying, how priority Big God is nowadays, because right from the early, he can just shred. He can literally shred anyone down. Just one passive mark from, the support emblem, and he was shredding everyone left and right. Now there's the complete map control in the hands of Team Espadas. I think it's an easy lord without any contention for them. And I think
I think somehow that Kaja pick did not perform well for the side of Team Killer, right? Yeah, the thing is, look, concealed play comes up, Dragon Form being used out by the Yuzhong once again. They try to go in, and there might be a trade before the Azaman Force comes up as well. But Abyss 3Z once again comes in with the Circling Eagle, able to get the kill onto Cooney. They tries to dive in, Nora Jones just able to take down Mr. Lonely, 2 for none, as well as the Lord going down. Mr. Gus comes up, there's the flicker combination from the Kaja, but there is sadly no follow up. The Abyssal arrow did connect, but it was not onto the guard, it was onto Snape. And just like that, once again, Espartas will be the one winning out onto the trades. The Lord marching from the bot side, and it does look like it could be the end for the side of Team 313 Killers if they are not able to defend this out. The shield goes out from the mid, and just like that, the lead as well is extending for the side of Team Espartas as well. The Lord could be marching in to at least get 1 or 2 inhibitors, or maybe they might just be able to clear it out. But looking at the itemizations and everything, the goal difference is massive, as well as the scaling is the one thing which Team Espartas has more advantage onto it. Well, this is what I was talking about, right? They kind of lack a marksman. All their hopes were onto the YSS, but then again, they have nothing who can shut down the Akai, but we have announced that once again the Abyssal Arrow actually connects the Black Dragon form into the line of dawn, and with this, a lot of shields coming up with the Circling Eagle, and Kuni will be getting shredded down just by the Matilda. The Zaman Force also being popped up, and the damage is way too massive. I don't think so. Team Killer, they have more of a early game kind of draft, so as the game goes late, I don't think so they'll be able to trade off much unless and until it is Team Espadas who do some major mistake. But we do see the Harith being caught off guard right out there by the Paquito with the flicker play with a heavy spin. A beautiful kill as YSS gets shot down right there. Selena is next to follow. And just look at the amount of shield the Harith is getting at this point. He's kind of unkillable. And it's really sad to see, but it is what it is. I think Team Killer have way too many solo targets. That's what they are making them suffer. But once again, the Yuzhong just trying to move away as the first inhibitor of the game falls away. The second, the top lane inhibitor will also be an easy target as 2 members are still down from the side of Team Killer. And just like that, it is going to be a 2 for none, as well as most of the inhibitor towers going down. So Team Espartas, maybe they just have to wait out for one more Lord that could actually seal the deal for their side. But what could 3133 Killer could actually capitalize onto this, because the lead as well as the trades are getting better and better for the side of Team Espartas. Once again, the Circling Eagle comes up, heavy spin comes up as well. They will be able to secure the inhibitor, but maybe the user might be trying to go in with a dive, but that is not actually going to be quite of a good decision, considering the fact they are already way too behind compared on to the gold, and the Lord is going to be most of the priority, of course, and it only remains on to the crystal for the side of Team 313 Killers as of far. I think, like you said, the early game scaling would have been a crucial thing for their side, and sadly enough, they were not able to capitalize onto it, which is the reason why once the game actually proceeded onto the mid phase, it was Team Espartas who had more of the advantage, and the Lord will be easily uncontested. And this could be the end for the side of Team 313 Keller as well, unless and until there is a potential wipeout if Team Espartas come up with a brutal kind of a mistake, which is the probability is really less, but all they gotta do is have some hope at least. Yep, definitely. And even if the Lord marches down, Team Killer, they don't really have enough shredders. They do not have a proper marksman. They only have YSS, who does not really specialize on melting down the Lord. Selena for the mage, way too much single target. Her minion clearing isn't efficient as ever. But with this, the Matilda also goes in. The Circling Eagle comes up, uses it up just to move behind. With this, the Arlord also trying to defend. A lot of damage onto the base, but look at that. Finally, Abyss gets caught off guard, gets taken down. A double kill, a triple kill for Kuni. 3 members by him, but then look at the damage coming in by the Mystic Gosh, as well as the Zaman Force. They were trying really hard, but then really hard defend for them, I would say. Yeah, the defense as well as the minions killing was onto the point from the side of Team Espartas, and they will be able to seal the deal this time and get the victory for their side. So they will be proceeding forward on to the round of 16. Meanwhile, Team 313 Killer will be waving their goodbyes. They did try it out quite much onto this game as well, but
The thing was, I guess, the Paquito, when it came out onto the goal lane, scaling was not able to keep up with the Harith, and the goal lead was completely extending out. And the fact that they had the early game kind of a composition, they were not able to make most of it. So if the scenario was like that, then maybe the consequences would have been different as well. But looking at the highlights and everything, I believe that was that was quite of a dominant victory. Except for the first turtle, they were able to secure most of the neutral objectives for their side. Even if the Yuzhong tried to go in with the Black Dragon form, I believe like even if the Kaja was doing the divine judgment as well as the plays were there, and look at the outplay from relapse onto here, 2v1, able to outplay them and able to escape it out as well as get the trades for their side. So it is going to be quite of a dominating victory from the side of Team Espadas. Who will they be facing on to the round of 16 is going to be quite of a question, because starting from the round of 16, stronger teams will be arriving onto that. So yeah, anything else you gotta add up? Nothing much. The only thing I would say is that they should have picked up maybe a carry or something like a late game marksman, so at least they could have some hope. But I don't really think that they had that kind of draft which could even give them a hope towards the late game. But for now, we will be going in for a short break. Do stay tuned because we have more matches to come. Cracky. Cracky. Cracky.
cracking. Cracking. Cracking.
Cracky. 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 Good evening and welcome back everyone to the Hooks Gaming Tournament. And this is the second last match, I believe, for today. And on the caster's desk, it is me, Asuya, joined in by one of the best casters in India, Ash. So, hi Ash, how are you?
Lol. When I became the best caster, I don't know. I'm It's still the okay. It's same okay. little. It's okay No, no, to be I'm still. humble. No, no, I'm still the same little kid who watches you when you are casting, and I still learn from you every time. Don't worry about it. But right now, the game number 7, if I'm not wrong, the second last game of the night, as you mentioned, is going to happen at Hook Gaming Showdown here. Game is going to start soon, and it's ASH, not AHS. And why everywhere? Everybody is like fumbling my name, man. It's fine. So right now, I'll ask Asuya, what do you think? Like the meta going on, is it the same thing every team going to, you know, apply? Or I heard from Baldu and Shinra that here people are going for comfort more than the meta. Well, it is India, right? And we do see them playing comfort picks more often. But then again, it also depends on the entire draft. If you want a really aggressive early game comp, you want to end it early, just ban away the late game heroes and pick everything which can help you just survive and dominate the early game. Something like a Hilda, Selena, Lucian, Zetian, God, Paquito, Yuzhong, of course. And if you want to be a more mid to late centric, so like if you have the confidence that you can survive till the late game, then just pick up something like a carry, pick up Harriet, those kind of heroes. But then again, the meta though is kind of, I think, slowly and steadily everyone just adapts to it in India. Definitely. Let's see how it goes for both these sides here. I mean, I have seen the last game is of Megatron, but right now both the teams are new for me, so I'm not so familiar with the drops and the picks. But I believe the Kai will be the one getting prioritized here for sure, as we see every time. I mean, Daka is getting first picked right now. Even the Paquito is getting banned. The Paquito is so good nowadays. As well as we always see the Jushin as well. But here we go for the draft, guys. One side legacy, one soul legacy going against Astralis. Let's see how this two teams going to make things in this second last game. And if I'm not wrong, this is a knockout game. They lose it out, they will be out from the tournament. And if they win, they will proceed forward to the round of 16. Already, first day of round of 32 has been done. It's the second and the last day of round of 32. So let's see who will be the 8 more teams joining for the round of 16 round. Van coming in. Your okay, Marcel. Do you think Jushin will be taken out from the red side? Well, I think she is most of the time she is there into the list. So Marcel, Paquito, Phoebus, um, and I think Zushin might also be making their way there. Let's just see too. I mean, I think even Akai can make a way into the band phase, considering that he's way too good right now. Especially if you pair him up with a healer, something like Estes or something like a Martella, which we saw in the previous game, who can provide a lot of mobility. I think he's kind of broken. And yes, there we go. Akai being just taken off. Yeah, that guy, as I mentioned, but this time into the ban list, not into the picking one. But right now, from One Soul Legacy, they're going for the second ban here. It might be falling into the hand on Fedrin or maybe the Bakshia, because from the blue side, we always see this kind of bans, this kind of peculiar bans. But from the red side as well, we do see the Jushin, we do see the Paquito being taken out. But if One Soul Legacy wants to use the Paquito into their way, then they might gonna ban the Phobius here. So there might be a chance we might gonna see a Phobius ban. No, it's a respect towards the meta. The Paquito will be taken out here. So do I believe Astralis might gonna go for that Jushin. I hope so. And I think even a Belric, I think he's just steadily just climbed up quietly into the meta list, I would say. Simply because he heals way too much, being buffed with the taunts, and also pretty tanky, pretty good in the early. We might even see a guard being banned away, although I don't really see a guard in the ban list. Of course, it is a Freya, how can I forget? No matter how many nerfs she receives, she will always be there. She's just way too crazy in the early game. She can literally 1v5 in the early, and if you just pair him up with a
marksman who can, just accompany, or maybe something like a mage with a lot of mobility. You can just shred and grab the entire early into your name. Of course, it is an Atlas and a Kadeta being banned away. I think Hmm. uh, Kadita ban wasn't necessary. Maybe because they were picking God and they think Kadita can one shot him down. But then if you have a God, you would definitely need a tank who can be in front because he lacks the escape device. Just one flicker, right? Hmm. So he Hmm. really in need of something in the front line. I don't think so Kadita would work with a good tank who can literally scan and scale a Kadita, not letting her into any bush around. Definitely. And now, as the Jushin is open, Asuya, there is a huge chance that Jushin might get into the hand of Astralis because they already went for that Hylos. And even the Sora gonna work there because the Sora and the Hylos combination, it works so well. You have the Glorious Pathway, you have the Shifting Clouds. It's kind of slow down first, and then you're gonna go for the Shifting Clouds as a crowd control. And with that, if you add that Jushin's crowd control and taunts, Lantern Player, and the Crimson Beacon, it will be like a cherry on the top of cake. But from the side of Team One Soul Legacy, as they went for the God, and as you mentioned about the frontliner, a sustainable frontliner, they might gonna go for who knows, like maybe the Atlas is banned, Halis is picked, so there's a huge chance we might gonna see a Katotkacha or um, maybe a Bakshia jungle as well. But now it's a Yuzong into the EXP with the Queenie coming in. They're gonna go for the utility, but a little bit not towards the Bakshia or Fedrin, but towards the Queenie. So now, as the Queen is here, do you feel like there is a chance that we might gonna see something into the jungle as Assassin, Suyu, Fanny, but the Claw trade is actually good from Astralis, and they will prefer banning Moscow and Carry in the next banning phase as well. I think since there is a Guni, if they are going for an assassin, a Link can be a viable option because they even have a Hylos. I think a Hylos works well with a Link, but then again, the Guni can even be, you never know, she can be onto the roam, she can even be the jungler. So the other option is to pick something sustainable, whom even if Guni jumps on you, you won't be getting taken down so easily. And of course, Baksha is one of the perfect options out there. And when you pick up a Baksha, it even saves you some ban slot because Leomord, as well as the Fredrin, they kind of get a way to, I would say, deflated in front of a Baksha just because of the massive anti-heal from the ultimate. So, yep, they can maybe ban a marksman, they can ban a carry because they have a lot of tankiness. They can even ban out the Moscow, another DHS user. Let's just see what they opt for though. Even the mage pick is open. So, what do you think, Ash? What will they go for? I'm definitely sure about the Moscow and the Carry here because you have a Hylos and a Bakshia, so you should ban the Carry because they are really keen to that pick. And I'm still skeptical about the pick coming on to that Gwynny and Yuzong. Like, okay, Gwynny, I accept it, but why the Yuzong? You could have gone for the carry. And look at it. That's onto the ban list now. Now, what you have onto the true damage, the Hadith, you're going to use the Hadith here. But at the same time, the Claude scaling into the late phase will really be a remarkable thing. Look at that. Carry Moscow being taken out, Glue here into the ban list as well as into the EXP. I think they might gonna ban that Arlot as well because Arlot nowadays is better into the EXP, and in a lane to lane matchup against the Yuzong, you'll have the winning lane as well. So Final Slash gonna give some setups to the team fights. So everything is kind of you know setting forward for this all-out pick for Astralis. But I'm not sure if Bonso Legacy is thinking the same thing as right now because they're banning out the glue. And nowadays, even me and Debbie always talk about this. Like, uh, glue is good in the roam, not into the EXP because the economy and the taunts are not so good, and you're kind of like into the EXP, I believe we should go for something damage in this economy, like Paquito, Freya, Benedetta, this kind of thing. So glue doesn't work so well. And they want to give some comfort towards that Yuzong, so they ban the Alice here. Now the picks coming in. Any guess? Well, I think Zushan, because she even has the ultimate, right? For the survivability, she can go on a purify, and she still have escape routes. I think Zushin can be a pretty viable option. Or Lava Lapu being picked up in the XP, of course, a very good matchup.
the god really needs to be careful because, just like I said before, only a flicker and a Lapu with a flicker can completely decimate the backlines, and he has the immunity. So even when, like, if he times it right, the Guinevere, as well as the Petrify from the Yuzhong, can't really do anything about it. And like you said, the Arlord though, I think Arlord is a good option, but the only issue is if your team can dive in with you. Because it's just like a Phobius, right? If you dive in too deep, you will Yep, definitely die. But right definitely. now we really forgot about our evergreen the Beatrix. She's really crazy. But the Fredrin being picked up, I don't think so. Fred is a good option here, Ash, because simply because there's a Baksha, there's a Claude who can literally escape. Lapu Lapu doesn't care, and you wouldn't even want to tank, taunt a high loss. So maybe they're just picking that up to provide some Oh space wow. to the marksman, but nah, they could have gone in for the Suyo. I think could have been better, but then Lilia being the final pick, I would say a very very good draft coming from the side of Team Astralis. Definitely. I mean, this is the thing. Today, me and Baldu was talking in the game of Shadow Esports versus uh, Noctura Esports. So the draft was like same like this. And the second banning phase, we saw Shadow Esports banning the Lilia because they have a tanky draft. They have some sustain. And then you see here the Fedrin coming in for the setup team One Soul Legacy, and they baited that Gwynny into the flex. And this Lilia is right now going to give the burst. So yeah, everything I was about to ask, like you have a Claude though, but it's not going to give the true damage. It's not going to burst out a tank. But now, as they preferred a Lilia into the mid lane, not a Lunox, because in this economy, Lunox is not working so well, but the Lilia is still on the mark. They are into the better cause. Hook Gaming Showdown is going on. It's the second last game of the night. We're going to watch it out at the round of 32. And you can see that One Soul Legacy are going straight away against Astralis. Draft wise, survivability wise, it is Astralis who are in a better position. But execution wise, it will be known into the game only. There is a technical pause coming in. Yeah, we can see the red run into the base, maybe facing some internet issues. But I was really excited to see how this match goes because, as they say, more of it is of the draft, but then again, also hands down to the execution, right? So, if I solely talk about the draft, I would say the red Team Astralis, they have a better draft, simply considering that they have well thought of every pick, the Lilia, the Claude, the Baksha. I think really, really synergistic because even if one dives in, the other can follow up pretty well, and they even have escape routes. And but then hands down to the execution, I really wanted to see how the other team was planning to execute that draft with the Fredrin because I think Fredrin will be suffering a way too much in this game. But then again, the only hopes are like Guinevere. I think the entire match depends on the Guinevere. She's able to give some good stance onto priority locks, and the god can follow up. They can literally change the game to the name. Definitely. And having Lapu Lapu into the EXP, I'm really going to see that in which way he is going to initiate the team fight. Because if you're not initiating the team fight, then you don't have an initiator into your way. Lilia, she can't provide the initiation. Same goes for the Claude as well, because the Claude needs to get farm. So he will play safe in the early phase of the game and will try to make the builds, the Trinity. Then he might gonna come in for the team fights. But at the same time, the Beatrix you mentioned is obviously the evergreen MM, but into this economy, she's kind of not viable for me because Claude is actually have a greater effect here. When they did go for that first pick onto God, they literally traded out that Claude into the side of Astralis. And at the same time, they did not opt the carry into the third pick as well. They went for the Greeny there for the flex. Then you had the carry and Moscow ban. So yeah, all this regularized ban, the peculiar things happened there in the draft phase, literally favoring right now Astralis. But let's see if One Soul Legacy can do something into the execution part. There you go. Lapu Lapu is right now playing the winning lane into the EXP against that Yuzong. Baksha with the roller coaster comes in there. I thought it will be the silent rotation and it happened there, and Baksha is actually having more jungle grips than the Fedrin before the turtle.
Well, yeah, he was kind of AFK, so yeah, I think Baksha does have the upper hand right now. Will be upper hand when it comes to the retribution. And just like you said, Claude is a better. I wouldn't say Claude is a better MM, just because he's way too versatile, has a lot of escape routes into his hands. That's all. But then again, he needs to position himself well, because if he gets caught up in the taunt from the Fredrin when he ults, or there's even the God with the stun, there's even the Goonie if he's trying to lock the backlines. So really depends on how the Claude player is, because he can work, he cannot really work. And with that, the other thing is like Beatrix, her late game damage is insane, especially with the bomb art, the bombs I would say. I really don't know the name of the gun, but yep, the damage is insane. She even has long range. She has a lot of versatility, but for now, pretty easy, uncontested turtle in the hands of Team Astralis. And we did see Kuniver trying to, just get some vision or maybe do some invasion into the hands of the enemy. But just look at that as. Spatial migration connected here, but the follow-up coming out with the Prayer Swaja. We're going to see the Mystic Gust being used as well, but now that will be the Tormentation coming in. Gwynny at a slither of HP. We're going to see the Black Dragon coming in. Happy falls down immediately. There will be a slain happening onto the Hylos as well. It's a 1-for-1, but look at the burst. The follow from the Lilia. Baksha falls down 2-for-2, and that will be the Blazing Duet from the top to the jungle area by the Claude. It's an equalizer though, but they got the turtle into their hand, but the fight extended towards the retreat holder falling down. So I'll say team One Soul Legacy, they kind of won the trade. This is what I was talking about, Beatrix right from the early. Did you see the damage coming in from that ultimate? That was really, really crazy. And really love the map awareness, because she knew that there is, usually we see marksmen don't actually following up, but we have another trade happening out there. Mikoto with the Mystic Gush, and we're gonna see the glorious pathway coming in, but the escape route is not so privileged for that Hylos. He'll be taken down easily from the setup team One Soul Legacy. I'll say the execution part is so good, but look at the invasion happening onto the red buff. Secured it down there, and now he'll be taking out the Grammar as well, and then he might gonna go for his own red. But look at it. That is the bush shaking going on by Happy and Mikoto. BMI. And if I was saying that the map awareness of the Beatrix is really good, I would say, because usually you don't see, MM, usually they just try to farm up in the early games, not leaving the lanes, but she came there with the help. She came to provide support, and even though they were on the back line, I think, Team Astralis, they do have a really good early game form. They can really go aggressive, but that does not mean you would go over aggressive. They did have the upper hand, but I think those over aggressiveness, those times where Hylos just goes in solo or Baksha just rushes in, they need to prevent that, because even Team One Soul is, farming up steadily. They do have a Beatrix. We really do not want to underestimate the damage coming in from a god in the early. Linkin Park right now onto the turtle. Retribution comes with the way. Mystic Gust from Mikoto, and that will be a burst onto that. Lapu Lapu flicker comes in. Black Dragon formation happening there. Zone coming out as well. We're gonna see the Hylos with the taunt. Turtle's positions being used. Linkin Park going in there, but the follow-up is not so good from the setup team Astralis here. They need to retaliate back at this moment, and the decoy of the Gwynny will be used here as well. Well, I would say one turtle and one kill. And even though it just seems that Team One Soul Legacy is on the back end, look at the gold. Literally equal. Literally equal. It's just point difference out there. But I really love how this Baksha, he's always into the enemy jungle. Just look at him once again taking away the orange. Happy goes in with the radiant armor first. Well, it of course makes sense because Lilia kind of shreds in the early. Same should happen from the side of Team Astralis, because God will be shutting down way too much. He hasn't even gone in for the anti-heal first. He's gone in with the Sky Piercer. I look at the Beatrix already with the corrosion side, but we do see, this is what I love about the Beatrix, she has a dash kill, can easily escape the ultimate wasted from the Hylos. KD with the 0-0 piece doing so well, but now the Mystic Gust once again coming in with a special migration combo connecting, as well as the bazooka coming in there. That's the blazing duet from the Claude. Lyria massive burst out Happy there. It will be a 4-man execution to take down the roamer from the startup team One Soul Legacy, and that will be the retribution battle again towards the blue buff.
vision is so good from Linkin Park, but now Burst comes in. Beatrix in a very bad position, might be taken out. He's getting tormented. Trap down mechanism on, and that will be a killing spree for the Lilia. But what is happening? So I think Sri is happening. Sri is having some issues into the net, and that's why he was walking down to the bot, but from the side of Team Raid. But now the glorious pathway used. They're gonna go for the charge here, but Mikoto does have the flicker, so it's a good decision to retaliate back. But on the top side, this will be the secureness on the structure. I think the Hylos is kind of wasting a lot of ultimates. Happened near the blue buff earlier. Right now, he just thought that Lapu will dive in for the mage for the god, and I think that was a good calling, but somehow it didn't work. I think the communication kind of gapped up because the ultimate is wasted, but it really doesn't even matter because Fred is out. Fred is facing some issues. He's just aura walking around the map at this point, and Baksha is kind of completely farmed up. Just look at the Claude already with the golden staff, and once again we might see some skirmish. Is coming in for another invasion. Now Bedroon is getting chunked down. Sri falls down there. Hylos goes in for the final blow. Black Dragon emerges, but is getting a lot of damage from the air, but Happy goes down. Blazing Grid comes in. Look at the Claude. Oh my goodness. A little bit of overextension will be punishing. And now we're going to see Mikoto double onto Bojack, but Lincoln falls down as well. Doesn't matter. He got a hefty amount of trade. Black Dragon going for the dash here, but that's a BMI for the defense. Structure is getting secured, so yeah, so do the kills. It's more like Astralis are winning in each and every aspect. Will it be goal? Will it be structure? Will it be macro? Will it be micro? Yep, and once again we do see some knockups coming up. Lapu Lapu will be going away, but look at the true damage. Manages to escape. Well, that damage wasn't enough. The gold isn't in the hands of Team Mansoul. The entire map control in the hands of Team Astralis. The goal lead, the kill lead, the map domination. I'm surprised how the mid lane first tier is still standing though. But I think that's the next aim from the side of Team Astralis because they are gathering up pretty solo. But look at that. Okay, the special migration Valoricam combo. That's a nice escape coming in. Mystic Guns. Bojack goes down. Double O to Mikoto. This is how Kyra firing up here. He might gonna go for a triple. Black Dragon emerges, but look at the damage coming in. Abrasions rate. The bomb comes in, but it doesn't have that much damage. BMI used. And a 2v3 falling down there. 2v1 situation. Black Dragon goes in, but look at the damage from Crow. Oh my goodness. A 4-man swipe from the side of Team Astralis, and now mid-tier 1 falling down there. That's the expansion of the lane happening. Told you, every trade are kind of going into the hand of Astralis, and due to the level gap, items gap, it's getting a lot of hindrance towards the way of One Soul Legacy. Do you think the comeback is possible? Well, definitely possible, but they really need to play it really, really safe because they do have a Beatrix. They even have a Fred, and when the Claude, especially the God, I would say he is a very good card into the hands. And the only issue is that when Guni jumps on the Claude, just like previously, or when anyone is giving any set, they expect the God with the Mystic Gush. But the only issue is the Baksha. Baksha jumping up, zoning away our poor little God. And once again, the Fredrin just caught up out there. Will be able to dash away, but the flicker jump. Flicker jumps. That will be the special migration. Just a fluke, but Lincoln falls down. Mega onto Happy. Instantly attempted that kill there. PMI for the defense, and now you doesn't have your Roma. But Fedin wanna go for a little bit of skirmish there. We're gonna see the Black Dragon emerging as well. A lot of damage being ditched out, and it will be Mikoto slaying down. Crank roams there. I mean, little amount of kills though, but it's not so much good because they're still having a 5k goal deficit. So, yep. Bounties are coming in, but you need a proper wipeout kind of strategy onto Astralis if you really want to recuperate that goal deficit. Definitely, and the only thing I would say is the Black Dragon is doing pretty good, I would say, the way he's zoning away as he should. I think a very, very good EXP laner. The only issue is that the damage dealers, the Beatrix as well as the God, they're just getting zoned away way too hard by the Baksha, by the Hylos, by the Lapu Lapu. So I think when the Black Dragon initiates or even the Guni initiates, they need to make sure that it is in such a condition where the damage dealers can follow up, because or else it will be just one-sided massacre. They'll be the ones dying instead. And once again, just look at them.
Gonna go for a little bit of setup there. Bravest Fighter. Once again, we're gonna see the zone coming out from the Dragon. Happy goes down. Krolo finds the kill there. Now the Dragon is getting a lot of damage into the airborne position, but it will be the Sun coming in, blazing to it. Goes in there. Kyra with the unstoppable onto 3. Double onto Wave. I'm gonna go for a triple. Inch of health from Mikoto, but somehow managed to go back there. Holy shield pop off. Now, look at it. The raising of Astralis is really, I mean, a pain in where, you know, for One Soul Legacy, because somehow they cannot tackle any fights which has been taken down by Astralis here. And losing out those fights are giving more and more goal lead to the side of Astralis. Definitely, and like I was saying, the zone is way too hard. Especially the Claude, I would say, he's giving a very hard time to the backliners. Like, once again. Mikoto, Mystic Gush once again. Winter Crown play comes into the way. Happy goes down. Godlike onto Bojack. It will be Kyra once again firing up there. Unbelievable stuff. Airborne Dragon is getting slammed up. Double onto Mikoto. Am I gonna go for a triple up? He will get that triple. Will it be a maniac? Kyra onto the way, but no. How can you steal that maniac from him? Shutdown happened at last, but it will be a 5-man wipeout to claim the throne at the Hook Gaming Showdown. Inhibitor into the mid, falling down there. Window is open to the base, but the resurrection time is up to the mark. So this will be the defense. But how much longer you going to defend it up? I think, like I said, Claude is the issue at this point because way too farmed up, and he has the tools to go behind, like literally torture the core, torture the Beatrix. But I think the team One Soul, they do have the solution for it. They have a Fredrin. Fredrin needs to stick to the marksman and the mage, and when Claude dives in, he needs to taunt and cancel his ultimate. But somehow Fredrin is the one initiating. He's the one in the front. So I don't know why. I think there's some lack of communication or maybe some execution gap coming up, because that should be a priority, right? Because it is already 13 minutes into the game. The Claude is way too farmed up. I mean, just look at him, 9 kills already. So you need to stop his ultimate. And God really needs that Winter Crown because he's getting interrupted way too much by the Baksha, as well as the Lord who just dives in, and Beatrix really needs the win. But then again, the Lord is coming up. I think they will be able to defend, but then the same thing should be happening. The Fred should target lock down the Claude when he dives in the backlines. All in sync is not so good from the side of Astralis. It's just the mid and the bot. But right now the deflection onto the Lord is happening. Mystic Gust used Winter Crown into the play as well. We're going to see the Bravest Fighter coming in, blazing to it. Oh my goodness, look at the damage onto that. 3 goes down immediately. Disparted into the air, but Kyra falls down. Happy goes down as well. Krolo takes it, killing spree. But somehow the defense has been done due to the poor management of lane sync. That's the reason, like, when you're not syncing up your lane, you're kind of not going to trade it out with the base. But now there's something happening going into the backline. Baksha got busted down there, minions into the base. We're gonna see Bojack falling down as well, but it will be the turret damage which will punish out the overextension and the overcommitment from Krolo. There will be the retaliation from Astralis. A successful defense from One Soul Legacy, but losing out 3 of their inhibitors. Not 3, but 2 of their inhibitors, with a little bit damage onto the base. Well, yep, now they will be facing a lot of lane pressure, so if, like, I don't know, if the side of Team Astralis is waiting for the next Lord, I think very hard defense. Next Lord will be really, really hard for them to defend, but I would say the key player here is the Yuzhong. As you did see the amount of time he bought, even the Guinevere can't do that much. But how much the Yuzhong is doing, he even got the shutdown onto Kyra, so yep. Really good gameplay coming in from the re-XP laner, I would say. And at this point, you know, all of them have most of their equipment. Just look at the Lord already, even has the wind. He sold the winter, got the win, but we do have another engagement coming up as Baksha runs up once again. Taurus Potion slowing it down there. Fedrin doesn't have enough sustain. He's gonna get a lot of damage. He's running away, but the burst will chase him up towards the death. Will send him into the fountain. 3 falls down now. They're gonna chase more and more, but that will be the spatial migration. Missed it out. Decoy coming in there, but Bravest Fighter used, blazing to it into the action as well. Dragon is getting tormented right now, but look at the Mystic Gust. The position is so well.
but that will be the retaliation coming in which Linkin Park falls down. Black Dragon going for that double petrify combo. We're gonna see the immortality popping over there as well. Stun from the gods. Shutdown happen onto the Lilia. This will be another retaliation. I believe like this was an overcommitment because I swear you have a lot to take. Then you could have performed the all-in fight for the final push, but no, you want to go for some gamble, and now there is a huge chance that we might gonna see One Soul Legacy gonna take this Lord away from Astralis. I don't know what is wrong with the Baksha because he's getting, I think, way too much over excited. He wants to end the game pretty soon because of that now they can't even contest the Lord. Definitely, he's over aggressive for sure, and told you the retribution was not so there, but now the trade's coming in. Happy goes down, Trollo as well, 1 for 1. Baksha coming in, the slowdown will be there onto the dragon, but look at the backline damage. The Claude trading it out there, and it will be a double for Kyra. Even though the Lord went into the hand of One Soul Legacy, Australis will be the one into the favorable trade here because they will be taking out the both of their frontliners. Now it's just 3 being there, and I think the Lord will get easily defended, but the game will extend a little bit more longer. I think this is a win trade for the side of Team One Soul Legacy simply because if this Lord went in the hands of Team Astralis, this would be the end. I would say clearly this would be a really hard defend, but somehow I think that over assertiveness, over aggressiveness coming in from the Baksha just extended this game, and now they have more time to farm up because some of those builds are still not complete from the side of Team One Soul Legacy. So they will be, just look at the Guniva, she will be getting the final equipment and even the Fredrin, and with that they just bought some more time to themselves. So I would say pretty safe for now. And once again the Baksha is just roaming around. At this point he needs to respect the damage from the god. If you did see the way he's shredding with that lantern, and of course the Beatrix with the bombs, she's literally shredding. If you cannot mark them both down, you should not engage at all. And I think at this point it's the job of Lapu to zone them away. Like how much can a Baksha even jump onto the backlines? And the Claude, Kyra is also doing an amazing job, but then I think the Fredrin, I think he has finally realized that, and even the Dragon, he has realized that they need to shut him down first. Especially when he just sold away his winter, he does have the win right now, so he can be easily, his ult can be cancelled. And with this, the game extends for 60 more seconds as the next Lord will be coming up. Team Astralis just, sinking the lanes. The only one side, the upside they have right now is that all 3 inhibitors, they have taken it away, and for the next Lord, I don't think so Team One Soul Legacy can compete because the minions are getting heftier and heftier. 20 minutes of the game and still the winner is not decided yet. Astralis, they do have the lane advantage because they have already taken out each and every structures from One Soul Legacy, and that's what giving them the proper lane pressure. But again, I'll say, if you're going for the Lord and if you're trying to take it out, please do the sync of the lane properly, because if you not do it, there is a huge chance we're going to see a deflection to the Lord, and that will be giving them more and more time to defend it up. And if the time is getting granted for One Soul Legacy and somehow your 2-3 members getting down, there will be the shift onto the win, and the shift will be taking away this victory from your hand. So you're in a better position. You need to take the Lord with the retribution. I believe this time Team One Soul Legacy will contest this Lord. It will actually be a gamble, but they're gonna do it, because other than that they have no chance to win this game. So yeah, let's see. Yep, the only chance they have is to contest for this Lord, but then again, Beatrix, they do not have the marksman. She has just decided to go in for the split push. I think that is a viable option, but an easy Lord, but the team side might as well just start once again. But do you see Team Astralis being really careful now? The Baksha isn't going in for over engagement, or perhaps he is as he locks down onto the user once again. Yeah. And the special migration was get connected, but all the resources is getting baited onto Baksha here. Blazing to it comes with the way. Kyra falls down, double onto the Lincoln, and now the Black Dragon is chasing in there, but getting a lot of burst with the Black Suits being inherited there. We're going to see the bravest fighter comes in as well, killing 3 onto the 3. I don't know, both the junglers, they are like some South Indian kind of hero, Allu Arjun.
They're overcommitting every Gotcha. time, bro. Why, Bhaksha? Why would you do that? Just when I was, really okay. The flicker jumps from the mini, and once again, look at the damage coming up. See, happy right now with the set special migration Valoricum combo. They're chasing it up, and this will hit. The Mystic Gush will hit. Unstoppable. The Sky Piercer will work once again. After the Lord, you are wasting it out, and the game will proceed towards the very late phase. I mean, it's not a good thing to do because you have a, they got a Beatrix there, and if the Beatrix will somehow get the damage here, which is already have, then you might get perished away. I'm not sure about it though. I was just appreciating the Bhaksha that this time he did not throw, but unfortunately he did. And you know what's the worst part about it? The one who got caught up was the marksman instead. We really do not want the marksman to fall this late in the game because he's the one with the DHS, he's the one who will be shutting them down, he's the one with the damage. And without him you can't even really push because somehow the God as well as the Beatrix, these two picks are so strong that they can literally melt anything together. So yeah, the next Lord, I don't know whoever gets it, but please don't do this kind of mistake. Just look at the comeback they are getting, and Hylos goes and chases after the Beatrix. Might as well get Nobody's melted there. down because Nobody is there to follow up. I don't know what is going on in their mind. I don't know why they're overcommitting every time. Even you have a chance to put some lane pressure, but no. well, I mean, even if someone was there, did you see the God? The way he's not even revealing his position. He's coming in as a surprise element. The Purify being baited away just before the Lord. And now Kyra really needs to be careful with that Mystic Gush, and once done from the God, he'll be deleted in an instant because God is literally on 80 stars on the side here. The goal lead doesn't matter here, but somehow they recuperate it and make it a lead from their side. One Soul Legacy is giving away everything here to take on this game. They lose it out in the early phase because of the Fedrin's underfarm, but now they are kind of come back into the game. But look at the damage, killing spree, shotgun use. The Lydia falling down immediately. Punished it there. And now he got a chance to get this launch. I told you, like, rush? What is the rush with Team Astralis? of course, special migration, Valoricum used here. They're gonna go for the fight. All in all, Skirm is happening at Freezer's Wraith Fitted and getting all the damage there, but it will be Kyra with the Slain Immortality pop over there, and now it will be Dragon. Kyra goes down, Slain happened, Monster on the high loss, double on to the Chrono. And this will be the retaliation from Linkin Park. I told you, 2 or 3 at the Lord being taken on by them, it's over for you. Like, 60 seconds cooldown. I don't think so the Bhaksha can defend, but they have just decided to go in for the Lord for now. But did you see that beautiful 4-man Petrify and knockup coming in from the Yuzhong? And that's what I'm saying. Okay, I think someone else should clear the lane, not the Beatrix. They should go in for the Lord, but the Bhaksha is still alive and they do not have the Fredrin. But I think they can easily melt down the Bhaksha. He's the sole person remaining, and you have a God as well as the Beatrix. I don't know these misjudgments. As they're waiting and the Valilia comes back, Ash. not sure about it though, but now they're going for the Lord. They know the Fedrin is here, but at the same time, what if a 50-50 smite happens and the Bhaksha gets the Lord here? You need to zone him out at this moment. If the Fedrin is having some problem, he's gonna use the Cloud to transport here into the Lord pit. But at the same time, the spatial migration, it got connected. We're gonna see the Purify coming in as well. So there's poison being used here. So do the damage. He's getting away from the pit. Mystic Gush. This will be the Lord for the side of Team 1 Soul Legacy, but there will be the fight coming in. Bozark goes down. Shutdown happened there. And the Black Dragon is getting shredded up as well. The Bhaksha going all in there. Retribution popped up as well. Gonna slow it down, but he's getting the damage as well. Happy comes in with the spatial migration. Use the decoy to goes back. A Freezer's Wraith Fog happened. That will be the stun coming in, but the minions all the way in as well. The sync is perfect this time. Lord about to crash in as well. Mystic Gush to clear out the minion waves. That will be the heavy comments from both these sides. But this time the Lord will be coming in here and will getting all those damages. The end is not so here, but this will be Kyra's last nightmare. It will be none other than Mikoto with the Mystic Gush. The burst is so high at this moment, and somehow, once again, we're going for another Lord Asuya, because it will be
If I'm not wrong, it will be the 6th Lord. I even have lost count at this point. I was just appreciating that how good the Claude is positioning. And in the beginning of the game, I did say that there are a lot of stuns in the hands of Team One Soul Legacy. So the Claude player really needs to be way too good. And since all these 3 times, all I've seen happening to the Claude is getting out of position and getting taken down by the God pretty easily. I don't know what is wrong with Team Astralis just throwing away the lead they made for themselves. Sometimes it's the Lilia overextending, sometimes it's the Baksha, sometimes it's the Hylos wasting his ultimates. I don't know, they are in some kind of rush. I don't know which rush they are preferring here, but the way they had a lead there, they literally lose it out. And right now, there is a chance for One Soul Legacy to compete onto the base, because look at it. They already taken out the tiers on the top. Mid tier is about to get busted as well. The Lord still marching in, and this is not at all a Luminous Lord. Not at all an Infernal Lord. It's a Luminous Lord. It does have the sustain. Look at it. Lord is getting all those damages, but it will get defended for sure. But the spatial migration with the Moba goes in there. Look at the damage coming in from the behind. It's Kyra, but it will be a slain onto Linkin Park. Bazooka fire! Double kill Krolo! Kyra goes down as well. That will be the inhibitor securance. And now you just have 2 of the members remaining. Can you defend it all the way? But that will be another stun coming in. Baksha is getting busted down. Immortality popped up. Lilia comes in for the burst. And this will be the high loss falling down. But Lilia does have some sense here. Will be taking out, but the lockdown onto the base is happening. And One Soul Legacy with an epic comeback. From a deficit to a win. This team has conquered the throne at Hook Gaming Showdown here. What an incredible game it was. Pure cinematic for me and Asuya. Definitely absolute cinema, and I would say the MVP, the star of the show, definitely being the God. Like, imagine being a God, there's a Lapu Lapu, there's a Baksha, there's a Claude, and you're still safe. Your stacks haven't gone down. Your 80 stacks on the Sky Piercer haven't gone down even once. And somehow you're finding the positions to follow up so well. Just look at him. He's just waiting out for his ultimate after 1 or 2 or 3 misuses, because the Claude was absolutely a nightmare for them. But somehow it's just worked out for them. I think some really, really major mistakes. A game which could have ended around 13 minutes went up to 30 minutes. And that's how Team Regalia just lost, I would say. And Ash, I didn't even see much performance coming in from a Lapu Lapu, because he should be jumping onto the God at least, right? I didn't see even one flicker gameplay coming from the Lapu. Definitely, the Lapu did not have much effect here, but still, look at it. The score is looking so well from both the sides. I'll say it's because of those overcommitment from Team Astralis. They lose it out against Team One Soul Legacy. Well played, Team One Soul Legacy. You deserve the win. You fight till the end. And Linkin Park, in the end, it doesn't even matter for you tonight. It's okay. But fine. Let's go for the next game, guys. We'll be taking a short break. Me and Asuya will be coming back soon for the last game of the night. Don't go anywhere. Stay tuned at Hook Gaming Showdown. Cracky.
Cracky. Cracky. Cracky. Cracky. Well, hello, ladies and gentlemen. Welcome back to Hook Gaming Showdown. Your boy STZ with Asuya around me for the last game of the night. It's between Team Megatron versus Whole Potato. Megatron already know in our scenario because they are the elite leaderboard team.
already played a lot of tournaments and they are feared in Assam because they are kind of dominating in their state and against Whole Potato. I'm not sure about Whole Potato. Asuya, do you know this team? I'm coming back into the casting scene after quite a while, I would say. So for me, both the teams are new. I haven't even seen Team Megatron play, so let's see how it goes. Okay. But Megatron, Super M, and the code, Tamocha. Okay, some new name. Shiroyuki Willpower. Super M is not playing today. That's for the first time I'm seeing it's like Megatron's different lineup. Which will be the God Band coming in out for them. While we're gonna see the whole potato might gonna go for the Jushin or maybe the Freya. Because we do see this peculiar three bands on from red side. Might be Marcel, Jushin, or Freya. Yep, and last game I was just hoping to see a god as well as the Zushin ban, but that they did not ban out the god, and god kind of shredded everyone. So yep, this time the first ban will be the god. I think pretty good ban coming from the side. And again, Paquito is open, Fuyas is open, Akai is open, Freya is open, Marcel is open. Must be among these all. Of course, Zushin is also there. Two mages. This shows how dominant EXE as well as the mid lane is right now into the meta, Ash. Definitely. The God, Lilia, Zatian, Eve. A lot of mages are into the meta and they are really so well. Even in the last game, as you mentioned about the mid lane meta, we saw how Mikoto, if I'm not wrong, Mikoto was onto that god and he managed to change the whole aspect of the game in which we were thinking the Astral is going to win the game. The game got turned around and we saw the epic comeback from the setup team, One Soul Legacy. But now, Megatron Esports, they're gonna go for the ban onto the Bakshia and the whole potato. I'm gonna go for a Marcel here. Or maybe the Paquito. Mm. So yeah, among those, Paquito, Marcel, Makai. Let's just see what they go for. Baksha being banned away. Okay, there's the glue. The glue. I think glue can be countered pretty easily. Like he is annoying in the early. If he sticks around onto the mage, if he sticks glues himself up to the marksman, that kind of restricted towards the early game. Towards the late game, 1 minute the ground, and it's all sorted. Plus, you can even go in for something like a Faramis or even a Vexana. But and I think you can even go because two of the most, I would say, good mages have been banned away already. A kind of waste of a ban, or maybe just wait for the second phase of the ban. If there is nothing else left to ban, just use that slot on him. But it is gone for now. Let's just see what they prioritize next. Are they? I think if the Paquito is not banned, I don't even think that anyone is going to pick the Paquito because the Phobius is already open. So unless and until they ban Phobius, they're not picking the Paquito. Paquito. Yeah. Even the Freya says vice versa, like Freya as well. But now the last one about to burst in here, whole potato. What they will go for? Something into the Rome or maybe banning out that Paquito here. The Phobius is not banned. If you're not banning the Paquito, there is a huge chance Team Megatron going to No, prioritize the first pick. But no, it's a Khalid. It's a Rome. Okay, that's quite good, I'll say. But at the same time, you had opened the Preya, Paquito, Tobias, Akai. Akai. Yep, Panda. This reminds me of those old days when Khalid Rome was the meta. It's just so dominant, way too dominant. He's still really good, but he needs good people to follow him up because he's way too fast, right? I think a Baksha, a Baksha and a Khalid combo is kind of deadly, works out really, really well. Even a Gato works really well with him. I think, I don't know, maybe someone from the side of Team Megatron plays. Khalid, is that so? Definitely. Now the first pick about to come in here. It might be the Paquito or maybe the Freya. There you go. It's a Freya coming out from the side of Team Megatron. You left it out there, so they're going to go for it. Now, what do you gonna prioritize? Like the EXP damage or Phobius for the counter against this Freya? Because if you're going for the Phobius, you can go for a Phobius Harriet combo. If not the Phobius Harriet combo, you can actually try a
Claude Paquito thing for your side? You know what's another viable option? It is our king. It is the Minzagar. He can Hmm. literally deflate. He can just. Okay, of course, the Kufra. Why didn't I think of it? The king is back. And if you add a Minzatar, I think Freya will be, I would say, rest in peace. Isn't it an early Kufra? Do you think so? Like, you could have taken Yeah, it in the that second picking definitely. phase. Because nobody gonna ban a Kufra. Like, it's not into the ban list. So, yep, you could have tried it in the late game. But right now, you gave them a chance to go for the Claude event. Like, Claude, Freya, both in a same team. And they might gonna go for a Bakshi as well. Oh, sorry, Bakshi is banned, so Panda as well. Hmm. They have a lot of options, and Team Megatron might go in for that, but then the Valley can't. I think the Valley just counters out most of those because I think alongside a god, the Valley is one of those pigs who can literally torture you to death. Especially if he makes that lantern. He is really annoying. But for now, it will be the Eve. Mage being picked so early will make sense because Team Whole Potato, they might as well just go in for the Mage is banned. I think the Kufra pick was kind of unnecessary over here. Matilda with a Freya, really deadly. I think, I think Ash, an Esmeralda jungle can do wonders for the side of Team Whole Potato at this point. It works. It works. It might gonna work for them, but I'm not sure if Whole Potato gonna go for it or not because you do have the absorb with the Esmeralda. So yeah, but look at it. Claude, yet not picked, will get into the hand of Whole Potato here with the Valir versus Eve. I'm not so sure why Megatron did not go for the utility here, but now I'm definitely sure after seeing this Matilda, Whole Potato is going to ban the Fedrin. So do the Akai. They should definitely at least ban away the Akai because he can disrupt the Cobra. He can do a lot of stuff. He can just cancel away the ult from the claw too. So let's just see if they go in for that or if they are going in for some marksman ban. But the twist in the tail is you never know. Our our dear Freya might even go in into the gold lane. You never know, right? So let's just see what they go in for. Maybe some jungle bans, but then never know that too again because somehow Freya can even work in the jungle. Right now, carry being banned away. Keto. Um, I don't know if that Paquito this late should have been there. Definitely. Let's see. Right now, the Paquito is banned. There is a ban onto the Fanny as well. I'm not sure why they banned the Fanny. Maybe because the Kufra thing is giving out the vibe for Fanny to come in. But at the same time, whole potato. The first pick into the second picking phase, the EXP is yet to come here. And there is no ban onto any EXP other than the Alice. So there is a huge chance we might gonna see the Phobias or the Yuzong against this Freya. You need to go for something which can play a winning lane matchup against the Freya. And the Paquito ban is really, I'm not fond of it because you think the Freya is a flex. It might gonna go for the okay, that's a good trade, I'll say. There is a huge chance the Fedin would have been a pick for Megatron after having the Matilda, but this pick coming out from Whole Potato is really gonna work well here. Not well here, but at least they have traded it out from the Megatron side. So now what else is there which can go well with this Matilda? Leo mode, Guinevere, or are you going to try a Link? No, I'm not fun. I'm not so much fun of Ling in this matchup. Well, of course, Ling wouldn't really work because there's a Cobra. And of course, Vices can work out. The only downside is, like, once again, the questionable ban being the Paquito. You have a Cobra. Why are you scared of the Paquito and Ash? Like I mentioned before, an Esmeralda onto the jungle can work wonders for the Cyto team whole potato. Are they really going in? Because the Fred can even go EXP, right? Yep. The trade can go to the towards the EXP as well. So it can possible, as you mentioned about it, the Esmeralda jungle and the Fred EXP lane, it is possible. But not sure that if they're gonna try it out or not. But still now, I'm not sure about this Cupra pick. Is this Cupra pick is just for the Freya or what? Like
if you take the Kufra for the Freya, I'm not so happy with it because you could have taken a Gatotkacha with this Valid, or maybe you could have tried something else into the roam like Hylos, or maybe you can say uh, Kaja for the pick off. I mean, you'd have got that pick off thing against the Ruby and the Ishinshin, but here we are. Land of Dawn is awaited for these two teams to play the last round of 32 game at Hook Gaming Showdown. You're gonna see that it's a Ishin Shin going against the Fedrin Jungle, and that will be the Freya versus Esmeralda into the Yep. EXP. And like you asked about the Kufra, I would say in general too, Kufra is a good tank. A good Kufra player can literally, turn around the entire team fight. Moreover, there is our Matilda. She will give dashes. Ruby dashes after her passive is like that. Rhea will dash quite a lot. So I think he can disable a lot of utility, a lot of ultimates, a lot of skills from the enemy team. So I think Kufra is working really good at this point for them. And plus, if a Kufra gives it set, there is a Fredrin with the taunt, there is a Willy who will be just literally torturing you down. Oh, I just saw it's a Groovy on the gold lane, and we have the Freya on the EXP. I think Groovy should have gone into the EXP instead because Esma will literally decimate the Freya. She's just freezing the lane away. That's something you really do not want in this economy because EXP lane is really needed. And with the flicker, the first kill of the game has been confirmed. And with this, I think they will be kind of suffering because EXP is needed at level 4 when it comes to competing with the turtle. Definitely, and now the fight continues here. This might be another blood coming out from the side of Team Whole Potato here. They do have a great draft, but look at it. It's a Ruby. Willpower is getting the damage. The BMI is Dexter. Might gonna take it out? No. There is a chance, but Kufra comes in here. The bonks, as well as that will be the stun. Flicker baited. Is it a flicker? No, I think it's a guiding wind. No, it's a flicker. 2v1 situation. Mountain Shocker release. Freya managed to torment out here. 2v1. They won that fight there. And now, as you know, like the Esmeralda is out, there is a huge chance that Team Megatron will get the turtle there. Okay, the fight continues. Valkyrie decent use here. The turtle being secured by Ishinshin with a kill on to Hissy the Goat. That was really sad for them, and it's now just taking away the blue. Pretty easy contest for them. It's a 3 versus 1. Kufra can't really do anything, and why is this? I think one of those heroes you really do not want him to snowball. He's already with the turtle, he's already with a lot of gold already. So I would say the Esma was doing good in the EXP, but right before the turtle. You really do not want your EXP to die. But that's not even on Kufra because you really expect a matchup of Esma against a Freya. You can easily leave the EXP lane, right? What is the Freya doing? Way too inside. I don't know what happened there. But I would say losing your EXP right before the turtle kind of leaves you at the losing edge. And that's how Team Whole Potato kind of suffered. But what do you think, Ash? Isn't the Kufra working well? Kufra is really working not so well, I'll say, because look at it. The Ishinshin managed to pick it up there as easy as possible, and now if the Ishinshin is getting the snowball, so yeah, it's a bad thing for the setup Team Whole Potato. If this thing continues, I believe Team Whole Potato might not be the one winning this game so far, but 3-2 is a good score. They are equalizing the score here. The goal lead is not so much, it's just 1k. You can recuperate it as easy as possible, but at the same time, look at it, one more gank onto the Esmeralda, and she is kind of aware of it. Well, she definitely is, but she won't be getting taken down that easily. Kufra is there providing some vision, just charging up. And I think that even that, that game coming in, that jump from Kufra was pretty good. But then again, the Eve, even the Ruby was there. Even the gold laner was there to assist. So of course, the flicker being used up way too much. And once again, even the Esma uses up the flicker. The circling eagle comes up. Sucking Eagle, and you're gonna see that kill onto the Esmeralda. Monochakra. Kufra, that will be another double and a triple. Sky Piercer stack is getting higher as we're gonna see Shiroi Yuki totally tormenting down each and every member from Whole Potato and gonna get the turtle as well. What a banger this was from him. Really hard to come back from a fed Vices, I would say.
Lucy is playing really well. He's using his dash, his immunity on time. He is, I would say, even the team is being pretty good with the support. I would say the Eve utility works out really well with the Vices because she provides a lot of slow, a lot of tone, a lot of damage already. And I really love how the Ruby is rotating. I mean, just look at her. Even though she's the gold laner, and that's what Ruby Gold been creeping back into the meta, and that's what it gives you, right? The ability to freely roam around, and that even secured them that kill onto the Kufra. But Kufra is really, he needs some items. Don't engage like that. Of course. And now you can see that the red buff is getting away from the hand of team Whole Potato. Everything is going away from them. This is the thing, like you can say that the structure, the buffs, the kills, Megatron kind of again coming back to the game, and they're kind of totally taking away all those traits from the hand of team Whole Potato. But look at the item section. You're gonna see the Hunter Strike completing, monster kill secured. You kept that snowball to that Ishin Chin, and now you're getting totally tormented by him. The drop wasn't bad, Ash. It's the execution. It's just not working out for the side. The team Whole Potato, especially when the Vices was on. I think he on 30 or 40 stacks of his Sky Piercer already. Way to go ahead, 6 kills into his hands, and even the Freya, who was kind of gave away a lot of bloods already with the golden stuff, kind of shredding at this point. The Kufra, he is tanky, but really needs 1 or 2 equipments before he can go ahead. And Valir is there with the follow-ups, but then again, the Eve is zoning the Valir really hard. And it's kind of funny because it should have been the opposite, because Valir is really strong when it comes to hands down tormenting, but it's just that the extra shield, the survivability the Matilda just provides to the Eve just saves them. I think that had been crucial. But okay, Kufra misses the jump, uses for the flicker. Definitely, and there you go, another Mounted Shocker double for Yuki, gonna go for a triple, he's extending. He will be showing some discipline as well for that retaliation, and not gonna extend the team fight. Now you're gonna get the red buff again away from the Fedrin. Again, that same thing is happening, just like Sri couldn't farm up in the last game. This Fedrin as well, not getting that farm. Even though the early game start was so great, Asuya from Team Whole Potato, but now Megatron is securing everything from them. Away from them. Well, yeah. Freya needs to go back for now because there is also Valir. Let us just look at it. 7 minutes into the game, the mid lane is completely decimated. 2 turrets being taken away, and even from the top lane, the same issue. The map control, absolute dominance in the hands of Team Megatron right now. Core lead, the kill lead. Kufra, you are not tanky enough to tank even the damage coming in from the Eve at this point. And even considering the point that how they are playing stick together. Just look at them, 4 members always trying to sandwich someone down. Yep, 4 members always there to sandwich someone now under the top. Now that will be the securance onto the structure. Esmeralda and the Kill gonna recall back into the base, and at the same time the Lord is about to come into the Land of Dawn, and it will be Team Megatron, I believe, gonna get the Lord with those minion waves. Look at it, the recall. He will get a little bit of taunt, I believe. No, okay, the fight's going on there. We're gonna see the Starfall Moon coming in. Freya retaliating back into the base for a lot of damage, but onto the top side, we're gonna see the fight coming in as well. Okay, a little bit of poke. BMI use, goes back there, got taunt from the Fedrin. And now the Lord marching into the Land of Dawn. Just look at the flicker once again, and Zenny falls. This is the 3rd time she's falling like this with the flicker, but oh, barely 1 HP, but the enhanced basic attack from the Matilda grabs and secures that kill onto the Esmeralda. And this is what I was saying, the way the Esma is dominating, even in the EXP, I think they should have gone in for something else instead of Fredrin. Had picked up the Esma jungle, could have really worked really well for them. And maybe something like a Sora, or maybe a Minsitar, someone who can set up, because I think they're kind of lacking a second initiator, because Fredrin isn't able to dive in as far as a Kufra can. I think their vision was good. The only off pick here I think is the Fedrin, and of course the execution is not working well for them. I'll say the same thing as well. Guiding Wind is on. Sucking Eagle coming to retaliate back. Just the pop onto the Holy Shield. That's a good thing, because you got the Lord and you
make the Holy Shield pop as well, but the Lord marching on to the top side. Do you think, Asuya, this will be the final push? I mean, the lane is kind of synced though. I don't think so, but I think they'll be able to manage one inhibitor, but it is still the small lord after all, and they do have a Claude and the Valir. I think they'll be able to defend, but at least one or two inhibitors will be lost into the process, which is even they know. Even the Claude is having a hard time. Does not have enough gold to build down his Trinity to even melt down anyone at this point. Let's see what will be happening. This will be a double kill. Masha falls down, triple onto the coup prize. Will be a Mania coming in. Ishinshin gonna get the Maniac of the veteran, as well as it will be a Savage, but Esmeralda not gonna give that chance to Shiroya Yuki. But it will be Megatron finishing it up with the victory at Hook Gaming Showdown. From 1 down, 2 down to 3 down, and then a classy Maniac from Shiroi. Won a game with that Ishinshin. Yep. And did you see that ult? That ult from the Kufra, I think it was a 4-man ult. I think very good set, but somehow no one to follow up. The Valir is dead, the Claude is dead, and I think it is the Eve who just zoned everyone away. And at this point, the Eve's damage was so much that she could solo-handedly kill down the mage and the marksman herself. So really sad, even though the Kufra was trying, but not enough follow-ups, not enough gold into their hands, and a really short victory. Absolute decimation from the side of Team Megatron. Absolute domination from them, as you can see here. And Shiroyuki 2L02, untouchable, impeccable KDA from him as well. And with this, it's our. If I'm not wrong, we'll be going for the giveaway. Let me see. Yep, participating in giveaway. Let me read a little bit, guys. Okay, if you guys want to participate into the giveaway, you need to write giveaway in the stream. Like, you need to write, all of you, whoever wants to participate in the giveaway, they need to write giveaway. Then we'll add their names into the wheel, and the luckiest one will get the diamonds. Yep, that's what it is. I know Asuya is right now trying to type giveaway. Well, considering the economy and the amount of skins Mountain has been releasing, I think I should. Okay, but I know your luck. I know about it. Sad. Please, just don't make me sad, Ash. So I'm definitely sure. But if she wins, guys, then it's a good thing. Then she will give me Starlight. She'll gift me Starlight. I know she can do Yeah. it for her younger brother, at least a Starlight. So can we put our names, the casters? Yeah, I think we can put our name as a caster, even though we're not going to win. Okay, there will be 400 diamonds giveaway since it's a maniac, guys. So get ready for it. 400 diamonds. You can get a Starlight by it. You can get some, you know, you're gonna get some Starlight by it, and you can also get some painted We skin by it. Yeah, we're the getting paint. promo diamonds, right? The promo diamonds. So just use it Yeah. alongside. The promo diamond even is back. I don't know. Yeah, they're gonna come back. I think this month or the next month. I have so many things in my bench to, you know, buy. The Link skin. I think the Link skin got unavailable. Like, it got limited. Yeah, it's limited. Dal. You can't buy it now. Okay, I'm there also. As easy. Asuya, Berna. Berna is everywhere. Hello, Berna. You win every time, bro. Celestial Twilight, Priti, Nil ML YouTube, Will My Wongs, Shreya Shi, and names are here, guys. Look at it. I think Berna gonna win. This girl wins everywhere. Wherever I'm being a part of giveaway, I've seen her winning. Even in the Tide class series, if I'm not wrong, Berna, you won there 100 diamonds or something like that. Some Okay, people are the just lucky. is going to start. Minku. What happened?
Is the spin stopped on Ianor? So no, the spin is still going on. Sorry, guys. I'm having a network issue, I believe. It's kind of pausing for me too. Okay, then it's not my issue. It's not on my end. Let's see, guys. Who will be winning? STZ? Oh no. It just goes away pretty. Celestial Twilight, Shreya She. We got a lot of names here, guys. I think it stopped on pretty, if I'm not wrong. I'm not really sure. Okay, I need to watch out YouTube as well if I mean to see the result behind it. It's a little bit okay. Now it's working now. It's working again, guys. Let's see, guys. Are you all ready for Pew Pew, Ashwia, Berna, STZ, Illusion? Just one name? And oh, is it like no. I thought like is it they're gonna pick one and they're gonna remove it kind of thing, but no. If you guys want to join, then you can add with giveaway. Like you can text it a giveaway in the chat, and you will be able to get your name onto the Will's spin. Yep, spinning wheel. Yeah, sorry. Oh, what a name, Dashi Vicky. Sir Lugo, Dashi Vicky. भाई डैशी विकी भाई आप अगर जीतोगे ना मजा आ जाएगा और भी नेम्स ऐड हो रहे हैं मिंकू डैशी विकी Elanor. Put your name, guys. You just have to type giveaway. That's it. Nothing else. It's not the. I think it's a glitch again. Not Asuya winning. Oh, yeah. How are you so sure that it can't be me? I mean, I thought it's a glitch. Look. On your top is Berna, so I believe like she's the luckiest one I've ever seen. Like everywhere she wins. So, but I really wants to see Dashi Vicky to win here. Either Dashi Vicky or whom. There's no one else. No. Not Issei. Can you tell me who won because my stream is paused? Same here. Okay, last 3 to win. Last 4. Okay, last man standing. I got it. That's the thing, guys. Then we have the wheel. Blaze. Please. Let's take out Blaze. Illusion is gone. Sorry. Priti is gone. I'm really sorry, Priti. Gone? Are these getting... Pew. Yeah. So we have the elimination and the one who survives till the end is the winner. The 4. I mean, the last 4 will be the winner. So, fingers crossed, guys. Ashit Chetri. Whenever I'm seeing any green, I believe it's not a tree. Okay. You got eliminated. It's okay. It's within expectations. No, if I win, then it goes to Asuya, guys. Pasandida Gaming. I mean, sorry, Pasandyang Gaming. We got out, man. Eleanor. Look, Dashi Vicky is still on the rest, man. Sir Luyu. Bye-bye, bro. That will be Dalla. Oh, okay. The stars are getting out again. Minku.
Okay, he says still there. He says still there. No, 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 Sad. no, bro. No, you can't. Okay, I'm out. He say, yep. Okay, all the Yeah, we are stops are out happy now. finally. Now we're happy. All the stops are out, guys. That's oh, the viewers. Let's see, we'll be lucky tonight. Nil ML YouTube. Bye, bro. Sorry. Dashy Vicky, how can you do that? Dashy Vicky's out, man. I really wanted him to get the winner. But there you go, guys. These are the winners. Willie My Wonko, T Dash. Is it Bombay? No, Berna. Varna, I told you. Varna. Berna, yeah, it's Berna. I told you this girl wins every time. Humble Dog. Four of our winners are Berna, Humble Dog, Willie My Wonka, T Dash. Congratulations for winning 100 diamonds each. As we saw Maniac, and you should thank Shiroi Yuki as well because he got the Maniac. That's why you're getting 400 diamonds. So, yep. With this, please submit your ID and server. Our mods are right now watching it out in the chats. They will copy it down and you'll get your diamonds after the tournament gets end. Bana, you know the rules. After tournaments gets end, 2 weeks, 3 weeks kind of thing. And no, you always comes in the chat and slowly pacify those other viewers who ask why we are not getting our diamonds tonight. Yep. Thank you, Bana, for your work and service every time. But with this, guys, me and Asuya. Okay, it's time for us. Can we see our To faces sign again? off. Casting desk back. Or are we going to say bye bye from here? Let's I just say think bye bye from here. no, the casting desk, the panel is back. So, yep. Thank you so much for joining, guys. Thank you so much for watching. STZ with Asuya signing off from Hook Gaming Showdown. From today, of course, we'll back tomorrow in the round of 16. Till then, see you guys. Good night, everyone. Sabak here. Cracky. Cracky.
cracky.